believe. It's in your DNA. This is our legacy to you. Come on, you Blues. Come on, Jeffs. Come on, you Blues. Are you ready, bhai? It is Super Sunday, starting with Chelsea versus Newcastle. But obviously, हमारे rivals भी खेल रहे, तो we will keep an eye on that for sure. West Ham, Manchester United, of course. लेकिन Arsenal, Liverpool भी है. लेकिन guys, everyone in the house hopefully joins in because this is, in my opinion, a 6-pointer. Proper 6-pointer है. याद रखिए, Newcastle United after the investment that they made, और कहीं ना कहीं FFP, I don't know, they are kind of restricted. You can say that उसके बाद में I think बहुत ही pressure है उन पर कि kind of go to the next level, and this is it. Chelsea Newcastle game always brings drama. मैं सोच रहा था maybe Enzo Fernandez versus Bruno Guimaraes मिले हमें midfield में, Argentina versus Brazil मिले, लेकिन seems like it that Romeo Lavia has got himself into the starting lineup generally for Chelsea. भाई सब लोग बोलिए in the chat. First of all, let me know who all are there in the chat. It's a fan channel for Odyssey. Subscribe if you're new to the channel. You know the drill. Absolutely hit that like button so that we have each and everyone in, and the algorithm pushes us and not just Chelsea push themselves. लेकिन Robert Sanchez continues in goal. वो एक बड़ा कॉल है. Remember, रॉबर्ट सैंचेज ने जो किया था इन द लास्ट कपल ऑफ प्रीमियर लीग गेम्स, अच्छा बुरा दोनों किया था. देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि मे बी योर्गेनसन माइट कम इन कंसीडरिंग जो परफॉर्मेंस थी उसकी इन द कॉन्फ्रेंस लीग. यस, रिमेंबर, ग्रेट सेव इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स मारा था योर्गेनसन ने. लेकिन द बिग पॉइंट, आवर कैप्टन भाई रीस जेम्स इज बैक एज कैप्टन, प्रॉपर एज अ स्टार्टर बैक टू बैक गेम्स में. When was the last time? ये क्विज क्वेश्चन है गाइस. एवरीवन इन द चैट बोलिए, अटेंडेंस दीजिए भाई. कौन कौन इन द चैट? लेट मी नो. आई वुड लव टू नो हु आर देयर इन द चैट. कम ऑन गाइस. Chelsea, 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 Chelsea. What is your reaction on Reece James starting back-to-back Premier League games? मतलब it's good that he's starting back-to-back Premier League games, but does that mean कि कहीं ना कहीं we are clear कि Reece James शुरू करेगा Premier League में and not other competitions? Does that even say कि कहीं ना कहीं जो speculation आया था about Reece James not having leadership qualities enough, जो Enzo Maresca is not happy etc, might be speculation ही. I don't know. Let me know in the chat again, guys. Wesley Fofana comes in, of course, Premier League में he comes in. Colville as well. Malo Gusto is there. तो ये question mark है. Why is Malo Gusto starting? ये बड़ा question mark है, guys. I don't know. मतलब ये I am not very happy. I'm not very happy about it. लेकिन गाइस नोटिफिकेशंस आ रही है ना. अगेन हर एक स्ट्रीम में पूछना अच्छा नहीं लगता भाई. नोटिफिकेशंस आ रही है. कम ऑन मेरे ऑलमाइटी फैन, मेरे घंटा गैंग, कम ऑन आ जाइए भाई. सब लोग हिट दैट, स्मैश दैट लाइक बटन एंड लेट्स स्क्रू यूट्यूब मैन. यस, मैं खुद बोल रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन भाई दे डोंट पुश अस. यू गाइस पुश अस बाय शेयरिंग द स्ट्रीम, बाय लाइकिंग द स्ट्रीम. कम ऑन आ जाइए अपने चेल्सी फैन बट आल्सो प्रीमियर लीग फैन, बिकॉज़ देयर इज वेस्ट हैम, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल लिवरपूल टू डिस्कस. एक साथ में सब चीज नहीं डिस्कस कर सकते, एक के बाद एक करेंगे फॉर श्योर. ब्रिलियंट स्टफ. लेकिन मालो गुस्तो बीइंग ऑन लेफ्ट बैक, इज इट नेगेटिव? मुझे लग रहा है यस, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उसका परफॉर्मेंस था अगेंस्ट लिवरपूल, I don't think he deserves to kind of start again in that position. अच्छा प्लेयर है, love him to core. Malo Gusto, I know वो खेल सकता है left full back position, लेकिन surely that is a negative ploy. I understand कि Newcastle also have good wingers, I get it totally. लेकिन surely यहाँ पर आप खेल रहे हो at home. This is Chelsea versus Newcastle, a 6-pointer. You need 3 points from the get-go. Yes, Kukurea खेला था in midweek. Come on. Mark Kukurea probably should have started. This was issue 100%. But Caicedo and Lavia, obviously, सबसे बड़ा question तो यही है that Caicedo, Lavia are there in midfield. Madueke, Palmer, Neto. Again, Neto has come in. तो आज changes दिख रहे हैं guys. आप देखो लिवरपूल का अगर बैक फोर देखो, अगेंस्ट लिवरपूल जो था, तो वी आर कीपिंग द सेम बैक फोर. आई सी दैट एज वेल एज द बैक फाइव. लेकिन इनफैक्ट काइसेडो लाविया भी वहां शुरू किए थे, टू बी फेयर टू एंसो मरेस्का. लेकिन ऑन द अदर हैंड यू हैव पामर, नेटो एंड मडुएके. तो नेटो विल बी ऑन लेफ्ट विंग, तो नेटो कम्स इन, दैट्स अ चेंज. तो बेसिकली स्पीकिंग आपने सिर्फ एक ही चेंज किया इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियर लीग लेवल. मतलब that is what you would say. लेकिन again guys, I would love to know why are people not in the chat and where is the almighty fam. घंटा gang, आ जाइए almightyans.
सैंचो आउट, यस दिस मैंने एक्सपेक्ट किया था कहीं ना कहीं, लेकिन हम पूरा लाइनअप भी देखेंगे गाइस. कम ऑन, हिट दैट लाइक बटन, डेफिनेटली हेल्प, डजंट टेक अ बक. जैसे मैं बोलता हूं हमेशा, शेयर करिए. ऑन द कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया हूं, वहां पर लाइक करेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प गाइस द एल्गोरिथम. इट्स अ न्यू थंबनेल जो इट्स सिमिलर टू लास्ट सीजन्स थंबनेल. एनीवन इन द चैट और अदर दो तीन लोगों ने अगर करना है रेटिंग तो ग्रेट रहेगा. Let me know, because this is a fan channel for all to see. All to see, it's your channel as much as it is mine. तो भाई सब लोग प्लीज लेट मी नो हाउ डू यू रेट दिस थंबनेल. डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ थंबनेल, और जो हमने किया था चेल्सी लिवरपूल, या मे बी चेल्सी वर्सेस पनाथिनाइकोस अवे, दैट इज व्हाट वी डिड. लेट मी नो व्हाट यू रेट एंड हाउ मच यू रेट आउट ऑफ 10. लेकिन कमिंग बैक टू दिस अगेन, न्यूकासल में टोनाली, ऑफ कोर्स ही इज बैक, यू नो दैट. और वो along with ब्रूनो गिमारेश, आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड है, क्योंकि जोलिंटन भी लाता फिजिकलिटी. मे बी आई डोंट नो, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आज मुझे लगता है कि देयर वाज अ नीड फॉर एंजो फर्नांडिस, क्योंकि मुझे लगता है क्लियरली देयर विल बी वेरी टाइट स्पेसेस जहां पर आई थिंक पामर एंड एंजो फर्नांडिस बीइंग देयर इन दैट मिडफील्ड और अटैकिंग मिडफील्ड रोल कुड हैव हेल्प्ड, क्योंकि दे नो काइंड ऑफ टू गेट अ पास आउट ऑफ नथिंग. लेकिन अगेन लाविया काइसेडो इज डेफिनेटली वेरी गुड, और फिजिकलिटी में आई थिंक दे आर लिटिल बिट ज्यादा एंजो फर्नांडिस का कंपेयर टू, यू कैन ऑलमोस्ट से. लेकिन अगेन जैसे एल्मिरॉन, देखो एल्मिरॉन इज नॉट द सेम एल्मिरॉन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सीजन. मेरे ख्याल से काफी नेगेटिव है दैट मालो गुस्तो कंटिन्यू किया है. कहीं ना कहीं ही इज गोइंग बैक टू द लेस्टर मोड, जो लेस्टर के लिए करता था एंजो मरेस्का. वहां पर जेम्स जस्टिन शुरू करता था लेफ्ट फुल बैक, फॉर पीपल वुड नो, एंड ऑब्वियसली वो भी राइट फुटेड था, वो काइंड ऑफ इनवर्ड्स. लेकिन मार्क कुकरेया क्या हो गया भाई, बेंच पर है ना. मार्क कुकरेया है भाई बेंच पर, मार्क कुकरेया है. टोसिन इज ऑन द बेंच, सो यू हैव, and Renato Vega, who could also be counted as a defender. So you have three defensive options on the bench. Enzo Fernandez, obviously, as a midfielder, along with Renato Vega himself, two midfielders on the bench. Then you have Nkunku, Jadon Sancho, Felix, or Mikhailo Mudryk. I like that Mudryk has got himself into the bench at least. 100% वो और Felix अच्छा किए थे अवे टू पनाथिनाइकोस. लेकिन न्यूकासल के बेंच में भी है बंदे हैं भाई. विलॉक आ सकता है फॉर श्योर. Lewis Miley, for people remember last season, he actually did well against Chelsea. I remember that absolutely. And of course, Sean Longstaff, the local lad, is there. Jacob Murphy could come in, जो wide खेल सकता है, midfield भी खेल सकता है right side में, absolutely. तो I think उनके पास है, but surely हमारी bench far stronger है. 11 में उनके, लेकिन interesting that they have obviously two ex-Chelsea men at full-back positions, लुइस हॉल और टीनो लिवरमेंटो. अब देखते हैं हाउ वी टैकल दैट. इंटरेस्टिंग, वो लोग डील करेंगे विद मडवेके, नेटो और पॉसिबली जेम्स एंड गुस्तो. बहुत इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा वो. बट अगेन एलेक्जेंडर इजैक, मतलब कहीं ना कहीं पता ही है, गॉर्डन नॉट स्टार्टिंग इज ऑल्सो अ बिग थिंग. गॉर्डन क्या सस्पेंडेड है क्या? एक सेकेंड, वेयर इज गॉर्डन भाई? वेयर इज गॉर्डन? गॉर्डन इज सस्पेंडेड और इज ही I thought he is there. Suspend तो नहीं दिखा रहा था पहले. Let me know in the chat, guys. Again, guys, do help me out by hitting that like button. You are my team, guys. You are my team. कुकू कुकरेया खाया पहिया ज्यादा खा लिया होगा. क्या ही तो बोले यार, इस तरह मे बी. What's up cricket highlights? Wrong squad selection in my opinion. Enzo in place of Lavia, Cuckoo in place of Gusto, and Sancho in place of Noni. Maresca is overthinking. I don't think कि Sancho probably deserves to start this game. सच में बोले तो, क्योंकि मुझे लगता है अगेंस्ट लिवरपूल I thought वो बहुत ही ज्यादा सेफ था. नेटो थोड़ा बहुत चांसेस लेता है, काइंड ऑफ गेट्स इन बिहाइंड. Okay, guys, I had requested one question. If everyone can help me out. Okay, can I take a few seconds and can get a rating? Everyone in the chat, please rate करिए. How do you rate this thumbnail? जो आप देख रहे हो, thumbnail out of 10, या आप Almighty जैसा रेट कर सकते हो. Almighty, mighty, so वाला चीज. Please rate the thumbnail for me. आजकल क्या बात है भाई, चेल्सी वॉचलोंग में लोग नहीं आ रहे और बाकी जगह. बट लेट मी नो व्हाट्स द इश्यू. आई वुड लव टू नो. इट्स योर चैनल, सो आप लोग जो चाहते हो वो करेंगे भाई, एब्सोल्युटली. लेकिन आ जाइए साथ में. इट इज चेल्सी. कम ऑन चेल्सी वालों, जोश दिखाओ भाई, जोश दिखाओ. आई अंडरस्टैंड दैट इज द हाइप ऑलवेज इन इंडिया भाई, स्पेशली इन एशिया जहां से मैं देख रहा हूं. ऑलवेज मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो होता ही है, एंड दे डिजर्व इट, द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड. बट वी आर चेल्सी. Carefree, wherever we may be, we are the famous CFC.
We are the famous CFC. We are the famous CFC. Come on, get in भाई. आर्सेनल लिवरपूल भी है, लेकिन वो बाद में है. Definitely इसलिए मैं 1 घंटे पहले आता हूँ क्योंकि there's lots to discuss, guys. Chelsea tactics, चेल्सी भाई जो न्यूज चल रही है. देन विल टॉक अबाउट वेस्ट हैम मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसका भी लाइनअप देखेंगे, उसका भी टैक्टिकली एनालाइज करेंगे एंड विल कीप एन आई, प्लस वी विल डू अ कंबाइंड 11 ऑफ आर्सेनल लिवरपूल एंड लॉट्स मोर. लेकिन मिकाइल भी जुड़ेंगे फॉर श्योर विद अस. चलो आप लोग ने रेट तो ठीक ठाक ही किया है, तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ डिसेंट. लेकिन आजा भाई सब लोग. मिकाइल विल बी जॉइनिंग इन सम टाइम. आई बिलीव ही विल बी लिटिल लेट टुडे, बट कोई नहीं. बिग अप टू मिकाइल एंड एवरीवन इन द चैट. I think the squad changes are based on physicality. Neto is more physical than Sancho, and Lavia is more physical than Enzo. And I think Cuckoo is dropped as punishment for yellow cards. Wow, I think it's a bit harsh. आप जो physicality बोल रहे हो ना, मैंने देखो, I totally get your point in terms of the forward line. I get it. क्योंकि वहां पर डेफिनेटली उनके सेंटर बैक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. वी नो दैट शार एंड बर्न आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आप नहीं लाइटली ले सकते हो. प्लस डिफेंसिव मिडफील्डर गिमारेश ड्रॉपिंग बैक, वो भी स्ट्रॉन्ग है. तो 3 तगड़े बंदे हैं. लिवरमेंटो इज नॉट भले एकदम चुई मुई नहीं है भाई, वो भी स्ट्रॉन्ग है. तो आई गेट इट. लेकिन आई थिंक डिफेंसिवली अगर वही चीज आप कन्वर्ट करो ना, तो वी नीड स्ट्रेंथ इन आवर डिफेंस एज वेल. आप देखो, surprisingly away to Panathinaikos we had Todd went to France in his Lamborghini, bought us back a centre back Benoit Bardeshile, और वो अच्छा किया था, mind you, he did well. So I thought maybe there's a chance of him क्योंकि physicality, height factor will be needed against Newcastle. So Bardeshile could have come in. अच्छा, Kukurea is the same. Kukurea as much as Gusto होगा थोड़ा सा ज्यादा लंबा और हो जो लीन मीन दिखता है, लेकिन इन माय ओपिनियन कुकुरा इज क्वाइट फिजिकल भाई. ही इज क्वाइट फिजिकल. और आई थिंक न्यूकासल के अगेंस्ट वी नीड दैट. इनफैक्ट न्यूकासल की प्रेसिंग, दैट्स समथिंग वी नो हाउ इट इज. उनकी प्रेसिंग एंड बेसिक टारगेटिंग इज देयर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाविया काइसेडो दिखाए वो. हम बहुत ही वीक है इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी आज, सच में बोलूं तो. आई रियली बिलीव सो वी आर वीक एंड आई गेट दैट नेटो इज मे बी अ डिफरेंस मेकर वहां पर कंपेयर टू सैंचो. तो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है. आई डोंट नो, लेकिन लेट मी नो. Guys, again, सब लोग, I'm just wondering where are the Chelsea fam who always join in. आज कुछ और भी चल रहा है क्या? I would love to know, but Mikhail तो बोल रहे strong lineup and bench. Rian, what's up मेरे भाई? What's up again, guys? I have again requesting. Very surprising to have 15 people watching us out of so many, but it's another match day. फैन हो तो भाई साथ में देखेंगे फॉर श्योर. एंजॉय द मैच एंड विल टॉक अबाउट लॉर्ड्स. बट आई वाज होपिंग दैट लॉट ऑफ पीपल जॉइन अस भाई. क्या बात है, लाइव में नहीं आ रहे आजकल. व्हाट्स द पॉइंट? वुड लव टू नो भाई. इट विल बी अ 3.5 hour वॉच अलोंग फॉर श्योर. बैक टू बैक हम देखेंगे फॉर श्योर. लेकिन सब लोग आ जाइए. आई डोंट थिंक एवरीवन इज वाचिंग दैट क्रिकेट हाइलाइट्स. मैंने देखा था आपका. आई डोंट थिंक दैट्स अ फैक्ट. आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद दैट, बट कोई नहीं. अगेन यहाँ पर मैं अगर सबसे बोलूं तो मैं मेरा लाइनअप भी दिखा देता हूँ जो व्हाट आई वाज होपिंग. मे बी एंकुंकू डेफिनेटली विल कम ऑफ द बेंच. वहां वो तो नो टू वेज अबाउट इट. एंकुंकू प्रोबेबली शुड बी द डिफरेंस मेकर इन टर्म्स ऑफ टाइट स्पेसेस जो न्यूकासल हमें करती है मोर ऑफन देन नॉट. लेकिन एक सेकेंड, मैं यहाँ पर अपना लाइनअप दिखाने वाला हूँ. व्हाट आई आइडियली वांटेड इन दिस गेम. अगेन मुड्रिक एक आर्ग्यूमेंट था कि ही कुड हैव डेफिनेटली कम इन कंसीडरिंग जो परफॉर्मेंस किया था इन द मिड वीक. आई वाज एक्सपेक्टिंग मे बी आज एंजो टू एक्चुअली प्ले. आई जेन्युइनली वाज. आज मैं सोचा कि मे बी दिस इज अ गुड पॉइंट टू गेट इन एंजो, बट इट इज व्हाट इट इज. एक सेकंड में देख रहा हूँ. यहाँ पर हमारे पास है नेटो, पामर, मडवेके, जैक्सन, राइट? तो okay, man. 1 second, guys. I'm just making sure that I am okay, guys. कुकुरेया मैं सोच रहा था आएगा. Then I was expecting actually बेनवा बार्डेशिले. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि फिजिकलिटी का न्यूकासल इंपॉर्टेंट है सच में बोलूं तो. एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग योर्गेंसन. आज सैंचेज ही एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं. इतना तो चेंजेस मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हाँ, दैट्स व्हाट इट इज. मैं एक सेकंड मैं दिखाता हूँ अपना लाइनअप. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला लाइनअप. एवरीवन इन द हाउस, हसीब इन द हाउस, व्हाट्सअप, कोबरा व्हाट्सअप, कुकुरेया दैट कुकुरेया इज नॉट स्टार्टिंग, डिसअपॉइंटिंग 100% guys. Again,
मैं यहाँ पर लाइक टारगेट डाल देता हूँ स्क्रीन पर सो दैट यू नो व्हाट द ड्रिल इज. वंडरिंग वेयर द चेल्सी फैन इज, वेयर द प्रीमियर लीग फैन इज. क्या बात है, थंबनेल अच्छा नहीं लगा कि यू आर अज्यूमिंग दैट वी डोंट टॉक अबाउट अदर टीम्स डिस्पाइट डूइंग 1500 वीडियोस फॉर 3 इयर्स. थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई. मेरे फैम मेरी फैमिली है तो इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ. बट कम ऑन, get in guys, we can do better, we can do it as a fam. Come on, there should be at least 100 people watching. You guys can share it in your WhatsApp streams, you can retweet. मैंने share किया as well as like the stream and community post. बोलने के लिए बोल रहा हूँ, it definitely helps. Thank you. लेकिन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा था that you would have possibly कुकुरिया kind of helping the midfield out. तो ये क्यों मैं रीजन बोलता हूँ उसका. In my opinion, Kukurea is far more physical than Malo Gusto. एक तो वो रीजन है. सेकंड रीजन है कि कुकुरिया नेचुरली लेफ्ट फुटेड है, तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि कहीं ना कहीं वो नेचुरल विड देता है इफ नीड बी. अच्छा, थर्ड चीज ये है कि वो इन्वर्ट डेफिनेटली खुद भी कर सकता है, वेरी मच सो, डिस्पाइट बीइंग लेफ्ट फुटेड. और कुकुरिया अगर इन्वर्ट करता है देन ऑल ऑफ अ सडन यू हैव दिस 4-man मिडफील्ड. आप देख सकते हो एंजो, लाविया, काइसेडो, कुकुरिया. अगर ये होता तो आई थिंक ब्रूनो गुमारेश है वहां पर, एंड वो एकदम भाई डर्टी प्लेयर है. As much as a good player he is, he's a dirty bloody player. Tonali, brilliant player. And Joe Linden midfielder बन गया from the last year and a half, right? तो वहां पर आप देखो proper physicality. तो against those 3 proper physical guys who are more central midfielder types, आपको चाहिए था extra man in my opinion to break the play, and wings would have been wide with Neto and Palmer roaming possibly. ठीक है, but यहां पर अगर पामर रोम नहीं करता, जो इनसाइड आता है, वी नो दैट, देन मालो गुस्तो कुड गो वाइड. ये हो सकता था. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रीस जेम्स नहीं शुरू करेगा, बट आई लव द फैक्ट दैट रीस जेम्स इज स्टार्टिंग. बट मालो गुस्तो कुड हैव कम वाइड एंड देन ये विथ आपको देता. ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, एंड देन कुकुरिया कुड कम स्लॉट इन द बैक थ्री. बेनो बाडिशेली ऑब्वियसली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस में उसको लाता. नेटो ऑब्वियसली डिजर्व्स इट. तो दिस इज व्हाट वी कुड हैव प्लेड एज वेल. आप देख सकते हो it could become a 4-3-3 as well naturally. I think ये बहुत natural होता है in terms of without the ball and with the ball. लेकिन कोई नहीं टेंशन नहीं लेने का guys. हुआ क्या है, for people who are just joining in, this is not the lineup. ये था, मैंने दिखाया था जो I wanted. Madueke is there, so Madueke obviously will stay wide. On the other hand, यहाँ पर you have Cole Palmer. ठीक है, तो Cole Palmer obviously will play behind the striker, more or less roaming. Although then आपके पास है लाविया और काइसेडो, वो तो है ही. तो दे स्टे हियर. यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यू हैव गुस्तो, एज मच एज द प्लेयर विल लाइक. ये वाइड ही रहेगा मोर और लेस. आई कैन नॉट सी हिम बीइंग अ सेंटर बैक व्हेन नीड बी, और इन्वर्ट करेगा इनटू द मिडफील्ड एज अ डीएम. ठीक है, दैट्स व्हाट विल हैपन. और राइट साइड में लेकिन वी हैव रीस, द कैप्टन इज बैक, विच आई लव. ठीक है, और कॉलविल है यहाँ पर. दिस इज द स्टार्टिंग लाइनअप गाइस जो अभी जस्ट ज्वाइन किए. तो बेस्ड ऑन दिस आई थिंक विदाउट द बॉल आप बोल सकते हो डिफेंसिवली वी लुक वेरी सॉलिड, लेकिन विद द बॉल ऑफेंसिवली गुस्तो यहाँ आ जाएगा. गुस्तो, लाविया एंड काइसेडो का मिडफील्ड होगा विद मे बी कॉलविल, फोफाना एंड रीस जेम्स kind of in a back three. This is what could happen. Lavia would own the midfield like he did against Liverpool for about 25 minutes, I remember. Absolutely. तो ये 3-3-3-1 भी हो सकता है. इसमें issue only is that बहुत ही ज्यादा ओनर्स है on the wings to defend. नेटो और मडवेके को डिफेंड करना पड़ेगा, knowing न्यूकासल की पेस एंड their wing play as well, मैं बोलूंगा. लेकिन आई डोंट नो, आप लोग बोलिए. मूनलाइट्स क्या हाल है भाई? व्हाट्स अप? अ बिट शॉक्ड आफ्टर सीइंग द 11. शुभ्रांग बोल रहे हैं. Okay, thumbnail is OP. Thank you. Hall and Livramento, 2 former Blues playing against us today. Absolutely. Mudryk plays well against Newcastle. Again, I like the fact कि आज I know कि मैं भी थोड़ा surprised हूँ that he has actually gone with Malo Gusto yet again against Newcastle. As much as they are fighting for top 6, by we are still better than Newcastle, I feel. लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट बेंच पर अटैकिंग ऑप्शन है ज्यादा. इट्स नॉट सो डिफेंसिव ऑन द बेंच. वी हैव एंकुंकू, सैंचो, फेलिक्स और मुड्रिक. 4 अटैकिंग ऑप्शंस ऑन द बेंच. आई नो चारों तो नहीं आएंगे, 3 ही आएंगे, बट बेस्ड ऑन मुड्रिक एंड फेलिक्स का appearance against Panathinaikos away and even Nkunku, कहीं ना कहीं I see them 3 coming in and Sancho may not come in for all we know. ये भी हो सकता है with Palmer going wide और Nkunku और Felix, one of them two will come behind Jackson. और on the other hand Mark Cucurella might come in अगर हमें लग रहा है कि वो enough fit नहीं मिल रही, is what I would say with Malo Gusto. I don't know. Tiger Best in the house. What's up? Bye. Wake up to you and ABFC family. My prediction is 3-1 to Chelsea. Good man. Come on, Chelsea. Chelsea. वेलकम बैक एफ भाई, वेलकम बैक. क्या हाल है?
5-1 वाओ चेल्सी डूइंग अ बार्सिलोना। सब लोग भाई एल क्लासिको वालों भाई, कैफ आप बार्सा फैन भी हो ना शायद, लेकिन और एम आई रॉन्ग? पता चला कि रियल मैड्रिड फैन हो, नहीं बार्सा फैन है जहां तक मुझे याद है। लेकिन एनीवे भाई बार्सा फैंस कैसे सेलिब्रेट किया भाई, कैसे सेलिब्रेट किया? बायर्न म्यूनिख के गेम के बाद में पूछा था, बहुत सारे लोगों ने ना जवाब नहीं दिया था। लेकिन बार्सा फैंस, हाउ डिड यू सेलिब्रेट? आई वुड लव टू नो everyone again live पर लेकिन again we could have more people coming in. Again you guys can retweet, it doesn't take a buck even if you don't have any followers. It's Almighty Blues FC on Twitter guys, on Almighty Blues FC on Instagram. Please like kariye, share kariye. It's a fam, it's a community that we have been trying to build for the last 3.5 years and if not more. Lekin yes, I am a Chelsea fan with a soft corner for Milan in terms of clubs. Lekin definitely at the end of the day bhai, football fan, so we kind of follow everything and not just from now, from 30 years for newer watchers. 4-0 Chelsea, Ankit bhai, copy paste Barcelona, wow. क्या ही हुआ कल भाई? To be honest, second half man, and again second half of Enzo Maresca are inspiring, so hopefully we take some inspiration from that. लेकिन आज guys, for all the hype जो चेल्सी को मिल रहा है रिसेंटली, भाई चेल्सी का ऐसी टीम है ना जहां पर जब अच्छा करते जब इतना हाइप मिलता है, जब अच्छा नहीं करते तो बहुत ही गाली भी पड़ती है, तो एक्सट्रीम्स है। अभी हाइप का मामला चल रहा है डिस्पाइट अ लॉस माइंड यू इन द प्रीमियर लीग लास्ट अगेंस्ट लिवरपूल, यस लीडर्स लिवरपूल। लेकिन अगर बाय चांस आज खुदा ना खास्ता अगर हम यहाँ पर लूज कर देते हैं ना पॉइंट्स, वाओ, सडन से वापस से जज्बात बदल के वक्त बदल गया वाला चीज होगा। रियल मैड्रिड का अनफॉर्चुनेटली हुआ कल, लेकिन यस नेक्स्ट एस्पेनियोल के साथ है, दैट विल बी गुड डेफिनेटली। ओके By ETH is not a manager, he is the best counter manager, knows how to bring absolute best from the opponent's team. चलो ETH के बारे में बात ही हो रहा है थोड़ा बहुत, and we'll come back to Chelsea in a minute as well as Arsenal Liverpool की भी बातें करनी है for sure. It's a big game, it's a 6-pointer top of the league में for sure guys. क्या आज नंबर 10 कौन शुरू किया? माजरावी अगेन और व्हाट? लेट्स सी। वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड साथ साथ में गाइस? नहीं, ऑफ कोर्स ब्रूनो इज बैक, तो ब्रूनो इज बैक हु wasn't there, of course प्रीमियर लीग में था ही, लेकिन एरिक्सन, कैसेमीरो, गार्नाचो, राशफोर्ड, हॉयलैंड, माजरावी स्टार्टिंग एट राइट बैक। लेट्स हैव अ स्लो क्लैप फॉर एरिक टेन हाग। पता नहीं, हो भी सकता है डालो राइट बैक शुरू करे और माजरावी लेफ्ट बैक शुरू करे, लेकिन फाइनली माजरावी शुरू कर रहा है राइट बैक। एक्चुअली डालो को भी राइट बैक शुरू करना विल नॉट बी बैड। वेस्ट हैम बहुत ही गंदे, इट्स एल सैकी को गाइस, यहां पर हो सकता है जो हारे विल बी बल्ब तलवार यहां पर है भाई, प्रॉपर यहां पर है, लेकिन मे बी बिकॉज पकेटा है वो उस साइड, एमरसन पाल्मियारी एज मैच डिफेंसिवली थोड़ा इश्यू है, लेकिन बीइंग अ यूरोपियन कप विनर विद चेल्सी, 2 यूरोपियन कप्स बाय द वे एमरसन विद चेल्सी, हो सकता है दैट कहीं ना कहीं आप देखो ज्यादा डिफेंसिव वर्क फ्रॉम माजराई ऑन द राइट हैंड साइड, वेयरएज ऑन द अदर साइड मतलब फॉर ऑल वी नो बोवन इज देयर, लेकिन वैन बिसाका, वहां पर वैन बिसाका डाबी भी है, इंटरेस्टिंग। आई थिंक राशफोर्ड डालो ज्यादा धावा बोलेंगे लेफ्ट साइड में। आई थिंक जनरली मैनचेस्टर यूनाइटेड ही कंट्रोल करेगी डिस्पाइट इट बीइंग अवे, प्रीटी श्योर यहाँ पर। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस मतलब आर यू कन्विंस्ड विद दैट सेंटर बैक पार्टनरशिप फाइनली? मार्टिनेज एंड डिलिक्ट आयो सेंटर बैक पार्टनरशिप, इज इट फॉर रियल? लेकिन आई वुड लव टू नो इफ देयर आर मेनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इन द हाउस। लेकिन गार्नाचो एंड राशफोर्ड दोनों शुरू कर रहे हैं। अमाद डियालो को हमें पता ही है क्या हुआ था मिड वीक में ऑन दैट ड्रॉ अगेंस्ट फनरबाशे। अमाद डियालो इज अगेन द बेंच, इंटरेस्टिंग। देयर वर रूमर्स कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी शायद खेले एज अ नंबर 10, लेकिन और ब्रूनो शायद खेले राइट साइड, बट नो, आई थिंक प्रॉब्ली इज डन द राइट थिंग। ETH if I'm not wrong, मैनुअल उगाटे लेकिन अभी तक वीक इन वीक आउट नहीं शुरू कर रहा, लुक्स लाइक इट, अभी भी टाइम लग रहा है। आई थिंक वेस्ट हैम निकाल लेंगे, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बी एबल टू टेक इट अगेन। एरिक टेन हाग इन भाई, एरिक टेन हाग फॉर लाइफ गाइस, कम ऑन गेट इन, एरिक टेन हाग इन हो जाए भाई, स्पैम कर दे सब लोग इफ यू नो। हाँ, हो सकता है डालो राइट बैक खेले और माजराई लेफ्ट बैक खेले, लेकिन आई थिंक अटैकिंग वाइज में आई थिंक अदर वे अराउंड इज बेटर, दीप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Are you considering Chelsea in top 4? This new Champions League format is missing Chelsea. Oh, thank you, Hasib, but definitely I agree with your second part. चैंपियंस लीग भाई, मैंने पोल भी डाला था, मैंने इंटरनेशनल ब्रेक में बातें भी की थी। आई जेन्युइनली बिलीव इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वीक ही नहीं, जो ना थोड़ा सा बॉटल की इन द यूरोप। आई थिंक आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इवन स्पर्स कहीं ना कहीं यूरोप हैव नॉट डन द बेस्ट ओवर द इयर्स, दैट्स द रियलिटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब इन लंदन, आई अगेन रिपीट, लेकिन इस सेंचुरी में एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड हैव वन मोर ट्रॉफीज, इवन चेल्सी शुड हैव वन मोर ट्रॉफीज, लेकिन
फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, राइट? लेकिन चेल्सी जब रहती है चैंपियंस लीग में, वी ऑलवेज आर देयर और देयर अबाउट्स इन नॉकआउट्स मोर और लेस, आप देख सकते हो, दैट हैज बीन सो वी आई मिस इट मोर देन यू एब्सोल्युटली। लेकिन कोई नहीं, Lavia is crucial player. He will be our N'Golo Kante बोल रहे। I don't think Lavia will be our N'Golo Kante moonlights. I think it will be Caicedo. अगर आपको किसी को बनाना है, I don't N'Golo Kante भाई एक ही है भाई, N'Golo Kante, N'Golo Kante, टाना ना ना भाई, remember that song भाई। लेकिन honestly N'Golo Kante एक ही भाई, लेकिन मोजेस काइसेडो के लिए हो जाए, मोजेस काइसेडो, मोजेस काइसेडो, मोजेस काइसेडो। आई थिंक मोजेस काइसेडो ना, मुझे लगता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिश्रण है ऑफ एंगोलो कांटे एंड मे बी रमीरेस। आप देखो, चेंज ऑफ पेस, डिफेंसिव एबिलिटी उसके पास है, ब्रेकअप प्ले भी है, लेकिन आई थिंक he could also play widish in my opinion, absolutely, जो underrated in my opinion. He has a pass on him over the top. Remember that brilliant chip goal of Ramirez. लेकिन एसियन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि माइकल एसियन had a much more goals in him. काइसेडो का मुझे एक ही चीज लगता है, एंड इवन लाविया मूनलाइट्स, लाविया ने एक फैंटास्टिक स्ट्राइक मारा था अगेंस्ट चेल्सी, आई रिमेंबर 2 years ago, साउथहैम्पटन के लिए खेलता था। आई बिलीव सो दैट 100% आई वुड से कि गोल स्कोरिंग में वी आर लैकिंग। एंजो फर्नांडिस, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, आई थिंक वी नीड दैट। एंजो फर्नांडिस का भी एकदम बेस्ट नहीं है गोल स्कोरिंग, बट आई थिंक मोर देन काइसेडो और लाविया है। तो आई थिंक मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ गोल्स, अगर खुदा ना खास्ता अगर जैक्सन या पामर एक ड्रॉट पर चले जाए, तो वी विल हैव द सिमिलर ट्रबल लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड का हुआ इन द लास्ट फ्यू वीक्स। आई थिंक देयर इज एन इश्यू वहां पर, मिडफील्ड से गोल्स नहीं आ रहे चेल्सी के। वी नीड मोर गोल्स इन मिडफील्ड एंड दैट्स अ गुड पॉइंट, बट अगेन वी नीड डिफेंसिव वर्क अगेंस्ट न्यूकासल फॉर श्योर। भाई गॉर्डन का कोई न्यूज दे सकता है क्या? डिड आई मिस समथिंग? मैं थंबनेल में डाला गॉर्डन, लेकिन एंथनी गॉर्डन क्यों नहीं है? इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट हियर, हैव आई मिस समथिंग? मैं फॉर व्हाटएवर रीजन, इज ही सस्पेंडेड? बिकॉज footmob.com तो ये भी नहीं बोल रहे कि इंजर्ड है। इज ही सस्पेंडेड और व्हाट एंथनी गॉर्डन? आई डिडंट नो दैट ही सस्पेंडेड, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर गॉर्डन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज होगा। लेकिन हावी बार्न्स प्रॉपर विंग प्ले करता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ही हैज अ शॉट इन हिम, हमने बात किया था बस शॉट्स, एब्सोल्युटली इसके पास डेफिनेटली है शॉट्स, बट आई डोंट नो डिफरेंस मेकर चेल्सी न्यूकासल यूनाइटेड के लिए कौन होगा? इज दिस द फर्स्ट मैच फॉर हॉल वर्सेस चेल्सी? आई थिंक लास्ट सीजन खेला था शुभ्रांग, जहां तक मुझे याद है। ही वाज ऑन लोन टेक्निकली, करेक्ट? नो एक्चुअली यू माइट बी राइट, यू माइट बी राइट, शुभ्रांग माइट बी राइट हियर, क्योंकि टेक्निकली हॉल लास्ट सीजन लोन पर ही था। रिमेंबर, लोन टू ऑब्लिगेशन टू बाई था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट शुभ्रांग। तो इट माइट बी द फर्स्ट मैच ऑफ लुइस हॉल। लिवरमेंटो खेला अगेंस्ट चेल्सी 100%, दैट आई रिमेंबर। लेकिन हॉल, यस, दिस माइट बी द फर्स्ट थिंग। एंजो इज द नेक्स्ट फैब्रिगास इफ ही परफॉर्म्स। वही है डिफरेंस, फैब्रिगास decision making was far better, shot taking was far better, and I think Enzo और Fabregas दोनों के पास है एक वो dirty element भी है जो ब्रूनो गुमारेश के पास है, which is nice sometimes, लेकिन I think Fabregas का कुछ ज्यादा था sometimes, and which is even better in such a match। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बेंच पर देखो, हाँ भाई गॉर्डन नहीं दिख रहा भाई बेंच पर, गॉर्डन नहीं है बेंच पर। वाओ, इंटरेस्टिंग। आई वाज होपिंग कि गॉर्डन रहेगा तो भाई इट विल बी इंटरेस्टिंग। रिमेंबर ही वाज लिंक्ड विद चेल्सी एज वेल इन द पास्ट, बट लेट्स सी। एक सेकंड, देख रहे गाइज, अगेन जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। साथ में याद रखिए देयर इज अ ह्यूज 6 पॉइंटर आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। गाइज, कैन वी डू हाफ एन आवर इनटू द स्ट्रीम? हो गया। कैन वी डू, while we wait for Mikhail who will be joining just in a few minutes, can we do a combined 11? Let's do a combined 11 of this Arsenal versus Liverpool. Let's try and do that. It will be interesting. क्या है, क्या बोल रहा आज का आर्सेनल लिवरपूल में? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शंस हो जाएगा। वील कम बैक टू वेस्ट हैम, मैन यूनाइटेड एंड चेल्सी वर्सेस न्यूकासल, लेकिन आर्सेनल लिवरपूल ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है, कंटेंडर्स क्लैशिंग। What are you saying will happen in this game? Arsenal have a load of injuries, याद रखिए बहुत सारे injuries Arsenal के। That might be the issue, कहीं ना कहीं dark arts will be back. I'm pretty sure आज dark arts will be back. लेकिन Arsenal cannot play for a point. Arsenal का अगर आप टेबल देखो, I'll show you the table guys, तो मैन सिटी ने नैरो विक्ट्री ले लिया कल साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। हालैंड का गोल देखो भाई, कहां से स्कोर कर देता भाई हालैंड, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही स्कोर्स।
Tie in the house, man. But guys, recent streams will be. I saw Chelsea sessions in the chat, but I didn't get a chance to give him a shout out. People do check out Ty's channel. Big up to OG Ty, bro. Ty in the chat. Chelsea sessions is there. Great content if you want exclusive Chelsea content and more. Shania बोल रहे 3-1 to Chelsea. Arsenal versus Liverpool, hoping for a draw. That will be the best case scenario Chelsea के लिए. Shania absolutely. लेकिन यहाँ पर देखो, अगर बाई चांस आज आर्सेनल हारती है, जस्ट सिनारियो बोल रहा हूँ, अगर आज आर्सेनल हारती है, देन 24 पॉइंट्स हो जाएंगे लिवरपूल का. दे विल गो बैक टू द टॉप ऑफ द लीग. एंड आर्सेनल, आयरॉनिकली, अगर आप सोचो चेल्सी अगर जीतती है, व्हिच आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि न्यूकासल डजंट सरप्राइज अस, ऑल्दो दे आर अ ग्रेट टीम एज वेल. चेल्सी विल बी देयर इन द रेकनिंग, ब्रो. आप देखो, ऑल ऑफ अ सडन चेल्सी 19 पॉइंट्स पर हो जाएगी. और लेकिन हमारे फिक्सचर्स आर डिफिकल्ट. दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी नोटिंग. ठीक है, एस्टन विला ड्रॉप पॉइंट्स, ब्राइटन ड्रॉप पॉइंट्स कल. तो कहीं ना कहीं गोल्ड डस्ट हमें मिल गया है इस वीकेंड का. अब देखते हैं व्हाट हैपेंस. एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम 7th हो गए. मे बी वी कुड, फॉर ऑल वी नो, आज यू नो व्हाट, वी कुड एंड विद द पोजीशन वी आर इन अभी, जो अभी दिख रहा है आप लोग को टेबल पर. बट वी कुड ऑल्सो एंड अप बीइंग, आई थिंक गोल डिफरेंस अगर देखो तो आर्सेनल का 7 है, चेल्सी का 7 है. तो वी कुड, मतलब टच वुड अगेन, वी कुड एंड अप इन द 4th पोजीशन. I'll think about it. We could actually end up in 4th position, absolutely, which is what I think I would want. But क्या ही बोल सकते हैं. आर्सेनल लिवरपूल में आई बिलीव सो, कंसिडरिंग द इंजरीज दैट दे हैव, आई बी सरप्राइज अगर जेसूस और हैवर्ड दोनों को शुरू करे. आई डोंट अग्री विद दिस लाइनअप. आई विल बी सरप्राइज्ड. आई थिंक आज थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे वो, डिस्पाइट 3 पॉइंट्स जरूरत है. आई थिंक वो लूज नहीं कर सकते गोल अर्ली, क्योंकि लिवरपूल डू नॉट कंसीडर लॉट ऑफ गोल्स. मिकेल मेरिनो, राइस और पार्टे जो लास्ट वीकेंड खेले थे अगेंस्ट बोर्नमथ, जहां पर वो हारे थे सरप्राइजिंगली, आई थिंक प्रॉब्ली विल बी बैक इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड. बैकलाइन आई काइंड ऑफ गेट इट, बट पार्टे राइट बैक दिखा रहे. ओके, दे डोंट हैव राइट बैक्स अवेलेबल. ड्यूरेंट टिम्बर है नहीं है. करेक्ट. सो दे माइट हैव टू गो दिस वे. वाओ, इंटरेस्टिंग. काफी सारे इंजरीज आर्सेनल के. बट हाँ, आप लोग बोलिए व्हाट इज द 11 दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. लिवरपूल का आई डोंट एक्सपेक्ट मच चेंज. यार डियाज 2 मैच से शुरू नहीं करा, सो मे बी ही कम्स इन. दैट्स द ओनली चेंज आई एक्सपेक्ट. नहीं तो आई डोंट एक्सपेक्ट मेनी चेंजेस देयर. बट इट बी इंटरेस्टिंग कि वो लोग क्या शुरू करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग दैट. 3-0 इन फेवर ऑफ लिवरपूल बोल रहे हैं रोशन. Again, I am going with Liverpool as well. सच में बोलो तो I don't see them conceding a lot of goals, और I think एक गोल enough रहेगा, क्योंकि आर्सेनल आज क्योंकि कम है on the bench, I can't see them scoring many goals either. Zinchenko, Van Dijk, Ben White, Trent, Rice, Gravenberch, Saka, Diaz, Salah. अच्छा, ये आप combined 11 कर रहे हो शायद. मैं आता हूँ उस पर. भाई आशुतोष, बारसा फैंस, आई नो रियल मैड्रिड फैंस के लिए तो आज एकदम बहुत दुख दर्द पीड़ा वाला दिन है, लेकिन कोई नहीं. लेट्स डू अ combined 11. क्या बोलते हैं? लेट्स डू कंबाइंड आर्सेनल वर्सेस. एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक बैनर डाल देता हूँ सो दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, एंड गेस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम गाइस. वी आर डूइंग ऑन आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल कंबाइंड 11. ठीक है, लाइक एंड सब फैम, कम ऑन, लाइक एंड सब. ओके, मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ बैनर सो दैट पीपल नो व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, एंड देन लेट्स गो. मैं एक और चीज करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे. या तो क्या फॉर्मेशन जाए यार? 4-3-3 एवरीवन. इफ यू डू आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल कंबाइंड 11 while we come back to Chelsea and Manchester United games. लेकिन let's do okay guys, एक quick feedback ले सकता हूँ all the people watching. Do you like this format of the thumbnail in Chelsea watchalongs? Again, if anyone can answer me clearly in DMs or in comments, will be great. Yeah, you like the ones that we did 2 weeks say, let me know. I would love to know that. ठीक है, Ethan in the house, what's up? No problem, and Ethan, no problem, always welcome, you know that. लेकिन आर्सेनल लिवरपूल में गोलकीपर से शुरू करते गाइस. आर्सेनल लिवरपूल में राइट नाउ ये आर्ग्यूबल है. ये आर्ग्यूबल है गाइस. हु इज द बेटर गोलकीपर ऑन फॉर्म? ऑन फॉर्म पिक कर रहे बेस्ड ऑन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. ऑब्वियसली एक एक करके करते गाइस. पॉजिटिव. सो लेट्स डू वन बाय वन. विल बी मोर फन. देयर विल बी अ डिबेट एटसेट्रा. आई विल रीजन आउट एटसेट्रा. गोलकीपर, who should be the goalkeeper? Ethan, आप late join किया, but we are coming back to it. We discussed half an hour, but we are coming back to it in a few minutes. We are doing the Arsenal Liverpool combined 11 now, and coming back to Manchester United tactic as well against West Ham, which is important watch for us. Keller all day I can explain. ओमकार बोल रहे हैं
आप आर्ग्यू कर सकते हो एलिसन अगर फिट होता तो प्रॉब्ली गेट्स, लेकिन राया एंड केलर के बीच में वन कैन आर्ग्यू केलर हैज डन वेरी वेल इन माय ओपिनियन. राया पैनिक्ड इन बोर्नमथ गेम, यस, लेकिन एक ही गेम था ना. आई थिंक राया ने रखा है. इनफैक्ट उस गेम में भी टुवर्ड्स द एंड ही मेड एन इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट नॉट इस गेम, सॉरी, अगेंस्ट शाख्तार ही मेड इंपॉर्टेंट सेव्स, ऑल्दो वो प्रीमियर लीग 11 नहीं है, बट आई गेट इट. राया या केलर? इथन तो बोल रहे केलर, ओमकार भी बोल रहे केलर. वाओ, इंटरेस्टिंग भाई. चैट ओपी, बाकी चैट में पीपल, एवरीवन इन द चैट, कमेंट. You need to subscribe, which doesn't take a buck, free of cost. Why free? Comment. It's a fan channel for all to see. We listen to your opinion. That is why we are asking. Raya is so better than Keller. Positive soul बोल रहा है. I actually would go with Raya. तो we have positive soul and Ankit from Almighty Blues, घंटा जानता है वाला बंदा. हम दो बोल रहे हैं राया. Pudin Bopi man, Pudin in the chat बोल रहे हैं राया as well. तो 3 जन बोल रहे हैं राया. I can see that केलर के लिए 2 votes in the chat. पॉजिटिव सोल का आ गया कमेंट. मैं तो राया डाल रहा हूँ अभी के लिए. आई थिंक केलर बहुत अच्छा है, आई गेट इट, लेकिन आई थिंक राया हैज टू बी पिक ब्रो बेस्ड ऑन दिस सीजन. आई हैव टू सी. इनफैक्ट इवन एलिसन रहता फिर भी मैं बोलता राया पोटेंशियली just for this season again. Not that Alisson is bad, लेकिन has he been tested as much as Raya? Probably not. Is what I would like to say right now. But center back, Abin in the house. What's up? Center back अगर आप पिक करो तो किसके साथ जाना चाहोगे? Center back, I think it's arguable that दोनों के center back partnerships are the best in the Premier League. I think which is better, that is arguable. मेरा ओपिनियन है कि लिवरपूल probably are hardly conceding goals, whereas Arsenal are difficult to score against, but concede किए हैं goals. Plus, on the other hand, Gabriel ऐसा बंदा है who has a goal in him. Van Dijk is the same. I think Van Dijk, Konate gets in. Or would you be picking Gabriel or Van Dijk? That could be one. क्या आप ब्रेक करना चाहोगे पार्टनरशिप को? That's a big question. आशुतोष is saying, Real Madrid fans are saying Mbappe still offside. भाई क्रिकेट टीम में आवश्यकता है उसकी. Let him change his nationality to Indian and let's have one guy on the offside. Like Ganguly used to be a god on the offside, if you know, you know. लेकिन कोई नहीं. Coming back to this, Forest have a good defense. Forest have a very good defense, absolutely agreed. लेकिन Forest as a team, I think more defensive structure better है. लेकिन center back partnership में बोलूंगा Bipin, I would actually go with VVD and Konate, but Ethan बोल रहे Gabriel और VVD probably deserve it. चलो ठीक है. इस सीजन के बेस पर I think Gabriel not being this, Konate थोड़ा बहुत unlucky होता है in my opinion. But I think Virgil van Dijk at this age again doing this again, I have to say jealous of Liverpool. I have to agree वहां पर. Gabriel gets in, पुदिन भी बोल रहे, तो चलो चैट ओपी मैंने डाल दिया है. Full backs again, one can argue that when fit Timber is very important for Arsenal. Calafiori has been good, लेकिन अभी दोनों injured हैं. Injured people, I don't know if unless we are sure हम pick कर सकते हैं उनको, लेकिन Calafiori के चक्कर में तो we are sure that he's not available. First of all, Robertson hasn't been the best. रोबो नहीं, रोबो का लास्ट गेम अगेंस्ट चेल्सी वाज बैड. इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा जिनचेंको, वाओ, लेफ्ट बैक का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा. यू नो व्हाट, सरप्राइजिंगली आई थिंक देयर इज नॉट अ लेफ्ट बैक. ट्राइंग टू बी यूट्यूब, व्हाट्सअप मैन, थैंक यू. लेकिन जिनचेंको, नो, आई एम नॉट श्योर. लेफ्ट बैक कौन होगा गाइस? रोबो ही ऑप्शन है, क्योंकि Shimikas, Robo, you know what, arguably I think Shimikas is better than Robo, if I'm being very honest. लेकिन खेलेगा रोबो ही है, तो रोबो को दे सकते हैं. लेफ्ट बैक आर्सेनल का तो भाई कहीं ना कहीं फिट ही नहीं रहता, ठीक है, तो वहां पर मे बी रॉबर्टसन गेट्स इन इजीली. अनफॉर्चुनेटली रॉबर्टसन राइट बैक कर दिया मैंने, सॉरी. बेन वाइट हैज बीन हैविंग मिस्टेक्स. आई थिंक ट्रेंड के साथ जाएंगे हम. तो लिवरपूल हैव मोर इन द बैक लाइन गाइस. लिवरपूल बोल रहा हूं, रॉबर्टसन. व्हाट एम आई डूइंग? अंकित जाग जा. तो भाई ये हम दे रहे हैं अभी तक. टिम्बर, तो आई थिंक टिम्बर क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ही मे नॉट बी अवेलेबल फॉर श्योर, तो आई थिंक टिम्बर एक्चुअली कैन कम इन. यू नो व्हाट, आई विल चेंज इट टू टिम्बर. आशुतोष बोल रहे हैं टिम्बर probably gets in because I think on form when he plays is kind of better. I think टिम्बर को डालेंगे क्योंकि टिम्बर अभी भी there is a chance that he might play. ठीक है, तो we might actually include टिम्बर क्योंकि I think on form, I think is better than Robertson, despite the different fullback altogether, just on the defensive ability. Then midfield में who gets in right now? मतलब Gravenberch को पहले डाल देते हैं. Apart from one game, I think he's had sensational
सेंसेशनल प्रीमियर लीग मैन। हम तो बोलते हैं लेकिन कोई नहीं, हम तो घंटा जानते हैं लेकिन और मिडफील्ड में हु गेट्स इन? Has Declan Rice had that season? I think McAllister also has been brilliant. I know McAllister शुरू नहीं किया था, एक दो गेम इन बिटवीन because of international break, before and after वाला मामला. Szoboszlai, ओमकार बोल रहे हैं Szoboszlai gets in. I'm not sure about that. Szoboszlai के I think दो तीन गेम थोड़ा सा मिसिंग था, but I think compared to Arsenal, I don't know, मतलब और can we put, I don't know, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, let's see if you guys agree. Maybe we will change the formation थोड़ा बहुत, ठीक है, और यहाँ पर we will make a 4-2-3-1 4-2-3-1 कर लेंगे. We could do that. ओके, केयरफुली देखिए सब लोग. तो यहाँ पर एच हैवर्ट्स को डाल देते हैं कैम में. एच हैवर्ट्स को डाल देते हैं कैम में क्योंकि ही काइंड ऑफ ड्रॉप्स बैक एनीवे. और यहाँ पर यू हैव अ मैकएलिस्टर. तो यहाँ ग्रावेनबर्ग को डाल रहा हूँ, एक और दो ग्रावेनबर्ग चलेंगे एक के साथ एक फ्री. आजा आजा, एक सेकंड, मैं मैकएलिस्टर को डाल रहा हूँ. अब बोलिए मैकएलिस्टर का भाई, मैकएलिस्टर आता क्यों नहीं है यहाँ पर? एलिस्टर आ गया मैकएलिस्टर. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. हाउ डज दिस साउंड? I think this probably looks better now. Everyone in the chat, anyone who's disagreeing. I know Szoboszlai के calls आएंगे, but I thought Havertz रहना चाहिए, as much as you know my story with Havertz. Mac and Odegaard. Odegaard तो has been injured for a month, right? I don't think Odegaard consider करेंगे हम really. Left wing Martinelli in the last couple of games has been very good. I think Saka को consider नहीं करे because he's clearly out. देखो एलिसन साका हमें पता है क्लियरली आउट है, तो हम कंसिडर नहीं किए इसमें, जस्ट सो यू नो पीपल. इनफैक्ट ओडेगार्ड भी. तो लेफ्ट विंग पर हम किसको लेने वाले हैं? मतलब मार्टिनेली या ट्रोसार्ड? दैट कुड बी द क्वेश्चन मार्क. या लुइस डियाज और गैक्पो, हु हैज बीन बेटर इन द लास्ट 1.5 months फॉर एग्जांपल. पुदिन पर राइस होना चाहिए, राइस या मैकएलिस्टर. आई थिंक मैकएलिस्टर इज बेटर पुदिन, इफ आई एम ऑनेस्ट. वो लिवरपूल की मिडफील्ड एंड डिफेंस आई थिंक इज स्लाइटली बेटर राइट नाउ. स्ट्राइकर में आई हैव अ सर्टेन नेम, इसलिए मैंने हाइवर्ट्स को घुसेड़ दिया. चलो फेयर बोल रहे हैं अभिन. यहाँ पर डियाज, लेकिन डियाज लास्ट कपल ऑफ गेम्स में अच्छा नहीं खेला है, मतलब रादर ही इज नॉट स्टार्टेड. मार्टिनेली हैज बीन बेटर, लेकिन हाँ डियाज प्रॉब्ली गेट्स इन. आई थिंक नॉट ट्रोसार्ड, नॉट गैक्पो. आई थिंक डियाज प्रॉब्ली जस्ट गेट्स इन. मैं तो डियाज का फैन हूँ, 100% लुइस डियाज ही रहेगा. राइट विंग में आई डोंट थिंक एनीवन इज आर्ग्यूइंग, तो मो साला को डाल देते हैं जैसे हमने ग्रावेनबर्ग को पहले डाल दिया था. और स्ट्राइकर में मतलब ऑब्वियसली जेसूस तो नहीं आ रहा, तो मैं तो बोलना चाहूंगा जोटा, लेकिन वो भी इंजर्ड है. वाओ, एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट्स पुट इन हैवर्ट्स यहाँ पर स्ट्राइकर में. तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब आ रहे भाई सोबोसलाई का. आई डोंट नो सोबोसलाई, कैन यू पुट द एंटायर लिवरपूल मिडफील्ड? थोड़ा अनफेयर हो जाएगा. चलो पुदिन का सुन लेते हैं. आई नो हम फिट कर रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बैलेंस ऑफ द टीम इज इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक दिस इज व्हाट हमने चेंज कर दिया. नूनेज डजंट गेट इन माय ओपिनियन, डजंट गेट इन. ट्रोसार्ड इज बेटर. सब ट्रोसार्ड इज बेटर बोल रहे हैं. मतलब अगेन आप देखो केयरफुली तो आई थिंक एंटायर सीजन में लुइस डियाज इज बेटर, इफ आई एम ऑनेस्ट. कैम पे ट्रोसार्ड हो सकता है. चलो ट्रोसार्ड डाल देते हैं. आई थिंक दैट्स अ गुड कॉल एक्चुअली. ट्रोसार्ड कैम पे हो सकता है इन प्लेस ऑफ सोबोसलाई, ठीक है. और यहाँ पर वापस से हम ला देते हैं मैकएलिस्टर को, हु प्रॉब्ली एक्चुअली ऑन फॉर्म आई थिंक हैज बीन रियली गुड. आई थिंक ये ज्यादा फेयर है. एवरीवन अग्रीड? ये बोलिएगा आर्सेनल लिवरपूल का. आई थिंक मोर और लेस आई अग्री. यहाँ पर तो बेस्ड ऑन दिस, हाउ मेनी प्लेयर्स डू वी हैव फ्रॉम आर्सेनल? हैवर्ट्स, वी हैव ट्रोसार्ड, हमारे पास है टिम्बर, गैब्रियल एंड राया. भाई आर्सेनल से खाली 5 प्लेयर्स है. लिवरपूल से है डियाज, मोसाला, मैकएलिस्टर, ग्रावेनबर्ग, वैन डाइक एंड ट्रेंट. वाओ wow, interesting. This obviously Van Dijk is the captain. Coach, who's a better coach, guys? Arne Slot pretty sure gets it. Arne Slot has been definitely get it. चलो ये हो गया. I think we are done. Well done भाई. Chat OP यार, chat OP 100% भाई. Chat 100% thumbs up है आप लोग के लिए, लेकिन हमें भी thumbs up दे दीजिए on the stream as well as the community post so that we have everyone joining in. Again guys, it is match day. आ जाइए सब लोग जल्द से
Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Oh, when the Blues go steaming in. Oh, when the Blues go steaming in. I wanna be in that number. Oh, when the Blues go steaming in. Carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. Anyone watching us from Stamford Bridge, let me know. Big ups to all the people who joined. Again, it's a fan channel for all to see. It's an important Super Sunday क्योंकि साथ में चल रहा है वेस्ट हैम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लेटर जैसे हमने जस्ट अभी बात किया था बट आर्सेनल लिवरपूल एज वेल बट Real Madrid, Barca fans, I would love to know how is your mood? How is your different mood? Tahir Bhai is in the house, bhai. Tahir Bhai is in the house. Big up to Tahir Bhai. Again, goosebumps galore, man. Goosebumps galore. Tahir Bhai is definitely there. While I show you again the Chelsea and the Newcastle lineup and bench, guys. Tahir Bhai is at Stamford Bridge, of course, from Almighty Blues. Big up to Tahir Bhai. He is there no matter what. तो हो जाए भाई ताहिर भाई के लिए 100% ओपी इन द चैट. हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं. Whatever it is, he is there. The great seat that he has. Wow, what a seating Tahir bhai has got. Generally, normal scenario में बोलता हूँ jealous हूँ, but ताहिर भाई के केस में भाई he is one of us for sure, 100%. देम बोल रहे हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज भी जाएंगे कभी ना कभी फेयर फॉर श्योर. जॉर्डी इन द हाउस. व्हाट्स अप जॉर्डी. एंड बाय द वे चेल्सी न्यूकासल के कुछ बहुत अच्छे गेम्स हुए इन द रीसेंट पास्ट. आप लोग याद ही होगा. बाय द वे ऑन फॉर्म वन हैज टू से दैट इट्स गोट टू बी 100% Chelsea who are the favorites despite the loss last game में, but Newcastle भी हारी थी. तो can Newcastle go back to back losses या Chelsea go back to back losses? Let's see what it is. But again, big ups to Tahir Bhai. यहाँ पर Arne Slot my favorite mentality wise बोल रहे them in the house. Slot no debate बोल रहे better manager right now I believe. Mikhail जुड़ गया meanwhile. Mikhail has just joined. एक second मैं Mikhail को prediction will come in just a few minutes with them, always 10 minutes before we start that. Mikhail ढूंढ रहा हूँ. Here है Mikhail. Mikhail OP man in the chat. Mikhail क्या हाल है? संडे के लिए तैयार? बस Ankit bhai, I'm good, thank you. Big up to the chat, big up to the Blues. Big match day, back to the Premier League. Mikhail, क्या लग रहा है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मतलब मिडवीक में अपनी बी टीम ने जो किया ऑन पेपर इट लुक्स लाइक वाओ. मतलब बी टीम को डू दैट अवे टू Panathinaikos विद दैट एटमॉस्फेयर जो टीम सर्टेन इंग्लिश टीम के साथ अच्छा की है ऑल्दो एट होम. लेकिन आप देखें तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स में देयर वाज अगेन अ डिफेंसिव इशू एंड आई थिंक न्यूकासल की प्रेसिंग जो प्रेस रेजिलिएंट हमें चाहिए प्लेयर्स. मतलब यू थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई लाविया इज अगेन पिक्ड इन मिडफील्ड जस्ट टू काइंड ऑफ एक कामनेस जो लाता है इन मिडफील्ड एंड एंजो फर्नांडिस नॉट बीइंग देयर. हाँ, लास्ट मैच में मुझे लगा जिस तरह वी शुड हैव मे बी प्लेड लाविया मोर बट और प्लेड लाविया टू स्टार्ट. लेकिन एंजो को खिलाया हमने कप गेम में. अब हमें वी हैव टू काइंड ऑफ चेंज गियर्स. आई थिंक हो ये रहा है कि लाइक I'm without reading too much into it. Hopefully, there's no injuries to Enzo. I think Maresca is trying to bring multiple people up for the same position, right? So, आहिस्ता he's giving everybody game time. थोड़ी सी rotation है. थोड़ा सा उसमें obviously fans का भी वो फिर वो shock and horror and awe वो होता है कि ये किसको रख लिया, वो किसको रख लिया. भाई उसके बाद दो पूरी टीम्स हैं. वो जिसको मर्जी रखे एज लॉन्ग एज हमें परफॉर्मेंस मिल रही है एज द फैंस. मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है. आप हर मैच में बदलो, हर बंदे को बदलो, लेकिन परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए सबसे. बस ये है. और अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो यस उसको फिर कप गेम्स में हम डाल देते हैं कि भाई तू उधर जाके जरा इजियर ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे हैं हम या किसी थर्ड लीग सेकंड लीग में FA कप का या वो EFL कप Carabao कप का कोई टाई है तो आप उसमें जाके मिनट्स अपने इकट्ठे कर लो. अब मुड्रिक को देखो जरूरत थी फॉर गेम टाइम. So suddenly he's looking better now, right? Because we persisted, gave him a few games in the cups. Ab suddenly he's starting to make a push. कि भी अच्छा ठीक है, let's get this show on the road. So same way, I think कि Enzo is Enzo. उसको कोई I don't think his position is under threat. वो जो investment club ने की हुई है उसमें everybody understands कि भाई he is the man for the position. लेकिन we also have Lavia returning from long-term injury.
So अगर उसको हम आज चांस दे रहे हैं in an important game, I like it. अब it's a big test for Lavia. मेरे ख्याल में it's a test of his fitness more than it's a test of his skill. क्योंकि I don't think कि skill की कोई doubt है किसी को भी Lavia के skill में, but fitness में yes there is a big question mark and that's what remains to be seen. कि आज हमने इसको खिलाया, will Newcastle create problems for him, especially in the physicality department? That's going to be interesting. Good point. और भाई breaking news, ताहिर भाई in the house, तो breaking news तो मिलना ही था. He is at Stamford Bridge with a great seat. The Chelsea players, भाई सुनिए गौर से, are warming up, and in the warm up it has been reported by Tahir from Almighty Blues, big up to him, that Reece James has been warming up for the last 10 minutes at left back position, whereas Gusto जो drills कर रहा है right back पे कर रहा है. It'll be interesting that. तो अब वो पता नहीं, मतलब इट्स अ केस जहां पर आपने जो लाविया का पॉइंट बोला ना इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग द फिटनेस, ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि जब एंजो रहता है वी नो दैट एंजो ड्रिफ्ट करता है लेफ्ट साइड में एंड काइसेरो जनरली ड्रिफ्ट करता है राइट साइड में. वी नो दैट इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ दीज मिडफील्डर्स. लाविया इज मोर सेंट्रल एंड ही कुड गो एनीवेयर. लाविया का वो नहीं लगता मुझे, बट क्योंकि यहाँ पर वी हैव गुस्तो फ्रॉम राइट हैंड साइड, काइसेरो कैन गेट सक्ड इन ऑन द राइट हैंड साइड. लाविया अगेन लेफ्टिश रहेगा विद रीस जेम्स अगर रहता है. मतलब two injury prone players who have not started many games on that side, plus a Levi Colwill को डाल दो in the mix. This is left center back position. It is looking a little bit scary, but we trust in Reece James, don't we? Come on. ये थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए कि रीस जेम्स को आप लेफ्ट पे खिला रहे हो. व्हाई? बिकॉज जब आप आउट ऑफ पोजीशन खेलते हो तो आपके मसल्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिव ग्रुप मसल ग्रुप्स एक्टिवेट होते हैं, राइट? जब आप स्ट्रेच करते हो, गलत साइड पे स्ट्रेच करते हो, ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच करते हो, तो चांस ऑफ इंजरी ज्यादा बढ़ जाता है भाई. तो अब ये थोड़ा सा मुझे इस पे शॉक हुआ. लेकिन डू आई ट्रस्ट रीस जेम्स अगर वो फिट हैं to do any job the coach gives him? Yes, absolutely. उसको जहां भी खिलाएंगे he will give 100%. I understand that much. ठीक है, तो if that's the situation, that's great. ताहिर भाई से ये भी पूछेगा कुकरेला नजर आया कहीं वार्म अप में? भाई वो वार्म तो रहेगा लेकिन वो बेंच पर है if need be. ये पॉइंट पर लेकिन are you disappointed almost that Kukurea is not starting? Newcastle is a very physical team generally, right? हाँ, मैं थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ. आई थिंक या तो कोई इंजरी है या कोई कोल्ड फ्लू टाइप चल रहा है या फिर वाकई में आई डोंट अंडरस्टैंड इट. आई एम सरप्राइज. लेकिन मैं वही कहूंगा कुकरेला भाई को जैसे भी हैं यार ज्यादा दूर ना जाएं. करीब ही रहेंगे. और वो प्लान में भी यही है ना, क्योंकि रीस जेम्स का हमें पता है कि यार लाविया का भी पता है दैट बोथ ऑफ देम विल प्ले मैक्सिमम 1 आवर. हमें वो भी पता है, मतलब कहीं ना कहीं दैट्स अ गिवन, राइट? तो मे बी वी नो कि एट सम पॉइंट दैट लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर या लेफ्ट बैक पोजीशन पर वेगा/कुकुरेया, वन ऑफ देम टू विल प्रोबब्ली कम इन, इज व्हाट आई एम सेइंग. बट अगेन मतलब न्यूकासल आप देखो तो they are not coming off a great form at all. In fact, 1 draw and 1 loss के साथ आ रहे हैं, whereas we have at least, in fact अपना भी सेम इन द प्रीमियर लीग अगर देखें तो. बट न्यूकासल, मतलब where do you rate Newcastle right now? क्योंकि they have been hot and cold इस सीजन में. कहीं ना कहीं we can almost argue that we were expecting them to go next level. Obviously not us, लेकिन neutrals. I think generally disappointed. Generally, I think they are underperforming, and generally that makes them contenders with us for the top 6. So this is where we are, and this is why this is a very important game, because ये actually हमारे rivals are in the table right now in this moment in time. So it's quote unquote a 6-point game, right? Because we are going to directly be impacted अगर ये हमसे आगे निकल के. Now we will be chasing them as well. So ये वीकेंड में स्थिति में कायल, क्योंकि आई थिंक एस्टन विला एंड ब्राइटन हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स. मतलब कहीं ना कहीं ये 4 एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द 5 टीम्स वी आर टॉकिंग फाइटिंग फॉर दैट फिफ्थ स्पॉट, राइट? तो फॉर श्योर वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड साथ में खेल रही है अभी टू वेस्ट हैम. तो ऑल ऑफ अ सडन, मतलब खुदा ना खास्ता, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट द 3 points एंड न्यूकासल काइंड ऑफ गेट अ पॉइंट और मोर देन अस, देन Aston Villa all of a sudden become favorites at this point in time, because they are, you have to give it to them, even having Europe, they are still doing very well in my opinion despite losing points this weekend. Aston Villa, at this point in time, if you have to put which is the strongest competitor for the top 4 spot, Aston Villa, Newcastle, कौन सा pick करोगे आप? Probably Villa right now in this moment in time, probably Villa. But
Newcastle, I think, are, like I said, underperforming. So I expect them to also hit form at some point in this season. It remains to be seen, but let's see. The thing is, it's really tight in the top 10 right now. बहुत ज़्यादा points नहीं है to differentiate most of the clubs. यानी कि 2-game split है, I think, from the top of the table almost to the like top 4 से 10th position में ज़्यादा points का फर्क नहीं है. So every point matters, every game matters यार. तो ये आज का game हमारे लिए, मुझे vibes आ रही हैं थोड़ा सा banana peel की कि हम थोड़ा easy लेंगे, थोड़ा सा हम we're coming off a win from the European competition. तो मुझे लग रहा है कि intensity might be missing. तो मे बी वो थोड़ा सा फोकस हमें जब वो पड़ती है, एक आधी गेम हम ड्रॉ करते हैं, हारते हैं, देन वी गो बैक विद पर्पस. तो होपफुली दैट्स नॉट अ केस. होपफुली मोरेस्का हैज द पीपल इन द राइट माइंडसेट कि भाई ये दिस इज नो जोक. जो प्रीमियर लीग का स्क्वाड है, दैट हैज टू शो अप एवरी मैच डे फुली सीरियस, बिकॉज ये जितने पॉइंट्स हम शुरू के सीजन में ड्रॉप करते हैं, ये हमें आखिर में फिर दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस टू ट्राई टू कैच अप विद द टेबल. तो अभी टाइम है टू स्टे विद द पैक. ये मैराथन होती है सीजन की, ईपीएल जो है 38 गेम मैराथन है. सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू स्टे इन द पैक. यू डोंट हैव टू मेक अ रन टू लीड द पैक. यू जस्ट हैव टू स्टे इन द पैक so that towards the end you can then make a run कि अच्छा ठीक है, let's try to jump some spots. तो अभी ये today is one of those games कि we have to get a result and we have to get a good result today. So it's going to be interesting to see. थोड़ा सा हम अपने आप को, I think वो एक जनरल मरेस्का ने वैसे तो जनरली हमारी टीम को बहुत इम्प्रूव किया है. हम आई थिंक एवरीबॉडी कैन अग्री विद दैट. लेकिन थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ टू मच टिंकरिंग भी है कि वो मैच से पहले ही हम सारे अपने आप को टैक्टिकली स्नूकर लगा के बैठे होते हैं. ये किया क्या हमने, राइट? ये कैसे, हाउ विल इट प्ले आउट, व्हाट विल इट गिव टू अस, व्हाट विल इट टेक अवे फ्रॉम अस. तो वो थोड़ा सा एक एलिमेंट है कि मे बी स्लाइटली टू मच एक्सपेरिमेंटेशन. But we don't know behind the scenes क्या situation होती है. कई दफा there is an injury or niggle जो कि they don't want to announce. But वो maybe they are keeping that in mind and not starting somebody and giving somebody else a start, you know, etc. आपके जो training में भी जो coaches देख रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहा होता. So I don't want to read too much into it. लेकिन थोड़ा सा feeling होता है पिछले 3-4 मैचेस में कि वो starting lineup नहीं हमें confuse किया होता है कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ये क्यों खेल रहा है, वो क्यों नहीं खेल रहा. But I think that's part of the I think हर टीम का ये चल रहा होता है. वो चेल्सी is not unique. I think वो आप अगर मैन यूनाइटेड की टीम लाइनअप्स को देखें या किसी भी और आपके जितनी भी प्रीमियर लीग टीम्स, I think every club के fans will have some objections to every starting lineup. You know, बहुत कम होता है कि लाइनअप ऐसा हो कि फैंस कहें हाँ ये परफेक्ट था यार, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था. बहुत कम होता है. So because हम आइडियल पेपर ऑन पेपर ढूंढ रहे होते हैं लाइनअप्स, कोचेस को पता होता है एक्चुअल रियलिटी क्या चल रही है, किसको इंजरीज हैं, किसको नॉक हुआ हुआ है, किसको कोई यू नो हु इज नॉट फीलिंग वेल, हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ट्रेनिंग. तो ये चलता रहता है. बस वी शुड गेट बिहाइंड आवर बॉयज. जो भी स्टार्ट कर रहा है, लेट्स सपोर्ट, गिव देम 100% सपोर्ट. बाकी ये है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट गेम. आज पता चलेगा हमें कि वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ टफर ऑपोजिशन. थोड़ा सा ये आई थिंक दिस इज द लिंक दैट नीड्स टू बी मेड कि जब हम कॉन्फ्रेंस लीग जाके खेलते हैं, we are playing almost against a lower level, not with respect to the oppositions, लेकिन Premier League opposition के level से lower level oppositions होती हैं. तो one doesn't know what to make of those results. कि हम ठीक है, we get more space ना generally, मतलब एक that is where people like, for example, Felix, आप देखो कि क्या छा गया था midweek Mudryk. These tight games are very important. लेकिन again Mudryk का point मैं quickly लेना चाहूंगा because एक चीज होता है ना, आपने देखा है previously even against Liverpool, he's had some good games against Liverpool and Newcastle in particular, not so many otherwise. Good to see him on the bench. Mudryk is back on the bench. आज 4 forwards are on the bench. Nkunku, I can see him coming in for tight spaces. लेकिन Neto on the left side, with Madueke on the right side, with Palmer in behind. In that, was that your preference as well? आज के लिए considering Sancho थोड़ा बहुत predictable था against Liverpool. In fact, quite a lot. I guess so. Yeah, you can argue that there are different phases of play. May there can be some rotation up front, and you know, players can interchange. लेकिन there's only so many combinations, right? आप मुड्रिक को खिलाओगे या सांचो को खिलाओगे, उसके अलावा आउट एंड आउट राइट लेफ्ट विंगर आपके पास एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन नेटो ही है. लाइक ही इज द अदर ऑप्शन. आई डोंट थिंक मेडवेके को हमने ट्राई किया है लेफ्ट विंग पे ज्यादा.
So surprisingly, I am surprised that Enzo Maresca hasn't really tried him. Even last time हमने बात किया था ना, in the Liverpool game, for example, when Nkunku came on, I thought Palmer on the left side was, जब हम देखते थे, जब just when he came to Chelsea, first couple of games I remember he played there, as well as Man City के लिए, for people who remember towards the end of his Man City tenure, जहाँ पर people noticed him. I thought he actually started games on the left. In fact, बहुत सारे matches left में, more than half the match he used to be there. Just like Robin Duff ना, उन लोग ने भी change किया था बहुत बार उन matches में. I thought that was some surprise क्योंकि Palmer is the marked man this time. So I thought it's important to at least try him there if it's very tight. But this is actually a good point. The segue, I think we are very close to the match game, so I'll keep it short. Like in match start, sorry. कि Palmer is a marked man. इस पे जरा थोड़ा सा हमें अब एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन करने पड़ेगी कि व्हाट डज पामर्स रोल एज अ मार्क मैन इन दिस स्क्वाड मीन. आर वी गोइंग टू लेवरेज दैट और आर वी गोइंग टू स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दैट, राइट? कि ठीक है, अगर आपने दो बंदे पामर पे लगा दिए तो हु इज फ्री अराउंड हिम, राइट? मेरा तो ये क्वेश्चन मार्क है कि somebody else needs to make sure कि अच्छा भैया ठीक है, तुमने एक बंदा यहाँ लगा दिया, कैन वी स्विच प्ले टू द अदर फ्लैंक and push forward and take advantage of that. तो ये अब देखना पड़ेगा क्योंकि वो वाकई में उसको हर बंदा जाके एक फाउल मार देता है इन द फर्स्ट हाफ, और द ऑपोजिशन टीम वो 10 के 10 जाके ना उसको एक दफा गिरा देते हैं जाके. तो वो ना कार्ड मिलते हैं इनको, ना कुछ मिलते हैं. सो वी हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट व्हाट द वे फॉरवर्ड इज, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ बिकमिंग द हैजर्ड टाइप सिचुएशन जहां पे दे आर जस्ट ट्राइंग टू किक द प्लेयर आउट ऑफ द गेम. So definitely there is a question mark there, and maybe the answer can be to play him in, or play him in the left wing maybe where they're not as used to playing him. Right पे आपने पहले भी बोला कि मैडवेके थोड़ा सा डायरेक्ट है, तो वो इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन बनती है कि अगर आप इतना डायरेक्ट प्लेयर लेके आ रहे हो तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, राइट? सो दैट्स ऑलवेज something that Palmer can do if he's sneaking in from the left side while Madueke is attacking on the right. So that maybe that's a equation that can work. But similarly, Neto can do the job too, so I don't mind it. Or Palmer, you can argue, is more effective through the middle. However, he will be marked in the middle. So let's see how it plays out. Guys, of course, we don't want to see our ex-Blues perform well against us, with all due respect to Lewis Hall and Livramento. अब इंटरेस्टिंग रहेगा. मैं सोच रहा था भाई, considering that Livramento is very well known attackingly and Almiron as well, I think we could probably go with Kukre on the left hand side, but let's hope it's best. Again, Tahir Bhai ने reconfirm किया है that he's probably hoping Reece James will be left back going by the warm-ups और Gusto will be right back, but देखते हैं, it might be change for all we know. लेकिन एक बार हो जा भाई, Chelsea. You heard it here first. Thank you, Tahir. Thanks to Tahir Bhai breaking the news, and Almighty Blues breaking the news. You might see Reece James at left back. Who would have guessed it? So I think Hall will be fine. It's an age thing, yaar. Itna young hai banda abhi bhi, he'll be fine. After all, I think he's not used to playing week in, week out at this level, Harsha. But I think we know that Hall ka quality delivery on the ball is something we should be careful about, stopping those crosses. Yeah, literally har ek game mein bolte. Gaurav in the house, I'm pretty sure you would say that. Palmer and Jackson are 2 yellow cards away from suspension. हाँ, 2 है ना, अभी देखते हैं. एक पर बात करेंगे. लेकिन हाँ, important point क्योंकि Manchester United and Arsenal games are coming up very soon as well. और Newcastle से हम 2 बार खेल रहे हैं even in the cup. Mikhail, आप जुड़ रहे हो Watchalong में कि you'll join in later? I can try, but let's see. No problem. Depend करता है मेरी स्ट्रीम काम करती है कि नहीं. Last time my stream did not even work. So let's see. Predictions. So everyone in the chat, let's go with the prediction. सब लोग जुड़े हैं. Chelsea. Bye. Energy is good, bro. Energy is good. I see the energy in the team huddle going on. वहां पर again Gordon I was expecting, लेकिन Barnes is बहुत ही tricky है on the wing, pacey है as well. So it's important that Gusto doesn't show his inside if he's playing on the right. अब देखते हैं who plays on the right side. Manaj बोल रहे final तो Chelsea. Manaj OP, hi, I hope वो हो जाए. Chelsea doing a Barcelona. कल का क्या 4-0 भी ले लूंगा मैं, जस्ट सेइंग. मैं तो इनफैक्ट 1-0 भी ले लूंगा. सेट पीस पे डेंजरस है न्यूकासल, इसलिए मैं सरप्राइज था दैट बार्डेशियल भी आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. मिकाइल, आई डोंट नो if you heard me, but I was expecting Bardeshill to probably get a break today. I know एक team and against Panathinaikos is not the great judgment वाला benchmark, but I thought because of physicality ना थोड़ा सा मैं concerned हूँ. Let's see Newcastle के against Colville.
is he the answer? But I think we can only hope for the best. That's what 2-0, 3-1. Why surprisingly everyone is going for Chelsea. I think it'll be a tighter game, bro. इनफैक्ट दोनों का फॉर्म टेक्निकली देखा तो सिमिलर ही है रिसेंट कपल ऑफ गेम्स में बट देम टेकिंग द नी गाइस केयरफ्री वेयरएवर वी आर द फेमस सीएफसी दिखा दो भाई स्टैमफोर्ड में शुरू हो गया गाइस टाइम स्टैम्प आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर मेरा किक ऑफ अभी शुरू है रॉबर्ट सैंचेज अर्ली बॉल किक क्या हुआ भाई हाई किक फ्रॉम रॉबर्ट सैंचेज क्या चेंज ऑफ स्ट्रेटजी फ्रॉम द गेट गो दैट्स इंटरेस्टिंग बट गुस्तो राइट साइड में लग रहा है ना गुस्तो राइट साइड ही गाइस तो ताहिर भाई ओपी मैन ताहिर भाई ने बताया था हमें एक सेकेंड रीस जेम्स कहाँ खेल रहा है यार हाँ लेफ्ट है रीस जेम्स लेफ्ट है वाओ आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा मैं कैल बोलना नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज इट कैन बी अ बैड ओमन बट इट्स अ फैक्ट सो वी हैव टू काइंड ऑफ स्टेट दिस एज अ क्रिएटर wasn't Reece James injured for long term under Tuchel era? That injury which probably started the load of set of injuries. जहां पर लेफ्ट बैक खेला था तारिक लैम्टी उसके अगेंस्ट खेल रहा था करेक्ट Possibly yes. It's been a while. By the way, nice gameplay by the way. Inverting into midfield अभी के लिए Madueke taking on Hall. Madueke, come on Madueke. Cross करा भाई. Easy catch for Pope. Come on. Gusto is right back exactly Gaurav. लेकिन ऑन द अदर हैंड मिकाइल मैं खुश हूं आई प्रेफर गुस्तो एज राइट बैक और लेफ्ट बैक लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कुकरे एज लेफ्ट बैक ये भी है क्योंकि गुस्तो मुझे लगता है ही गिव्स अस फार मोर अटैकिंगली ऑन द राइट हैंड साइड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अब रीस जेम्स का जुरी इज आउट बिकॉज ही इज प्लेइंग लेफ्ट बैक आफ्टर अ व्हाइल I don't remember last when exactly he played left back but oh bhai through ball hai Isaac on the right hand side has opened us up Colville अरे nicely done यहाँ पर by Fofana heading it out लेकिन back to Isaac Almiron overlapping Liverpool को देगा नहीं Almiron को क्रॉस नहीं अलाउ करो यार थ्रू बॉल दिया है टोनाली इन द बॉक्स कॉर्नर जीता भाई न्यूकासल आर डेफिनेटली हैविंग दैट पास इन देम भाई एवोल्यूशन गेमिंग लक्स इन द हाउस बोल रहे हैं चेल्सी 2-1 मैन यूनाइटेड 2-0 लूज माय प्रेडिक्शन इंटरेस्टिंग लेफ्ट बैक कुकरे एंड राइट बैक जेम्स इज द परफेक्ट पेयरिंग ऑफ फुल बैक्स एब्सोल्युटली आई एग्री विद हर्षास कमेंट लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ही लाइक्स गुस्तो आई थिंक वन थिंग इज वेरी क्लियर आई थिंक मे बी वही है एक क्वेश्चन याद है बिगनिंग ऑफ द सीजन में हम लोग सब बात कर रहे थे कि अभी एवरीवन इज फिट बाय द वे कॉर्नर नहीं गोल किक था नाइस जेम्स एंड गुस्तो दोनों अगर फिट रहते तो कौन शुरू करेगा वाला एक्चुअली कॉन्वर्सेशन था क्योंकि गुस्तो हैज बीन अ टेरिबल terrific signing what a turn by Nicholas Jackson guys brilliant turn world class लेकिन ये puts in Madueke क्या करेगा यूज करना उस टर्न का Madueke shot boy should have taken a better shot could he have taken in on the right side and crossed it rather पता नहीं shot was on right Mikhail through traffic थी थोड़ा सा angle closed था he had to kind of get it through the avoid the first man तो उसमें angle सही नहीं बना he could have gone to far post maybe that would have been better ये देखो वो पामर को फाउल कर रहे हैं यार ये what the hell मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर फिजिकलिटी विल बी अ थिंग न्यूकासल भाई ब्रूनो गुमारिश है भला फॉर मी मिकाइल ही इज वन ऑफ द मोस्ट डर्टी प्लेयर्स इन फुटबॉल राइट नाउ ब्रूनो गुमारिश इन टर्म्स ऑफ इन अ गुड वे फॉर न्यूकासल बट इन अ बैड फॉर ऑपोजिशन यू नो व्हाट आई मीन राइट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बट यहाँ पर निकोलस जैक्सन विद द वर्ल्ड क्लास टर्न व्हाट अ थ्रू बॉल कोल पामर भाई शॉट लिया एंड स्कफ द शॉट बट इट इज कोल पामर Chelsea. Come on, you Blues. Come on, man. Come on, Chelsea. Bhai, it is Cole Palmer vibes yet again against Newcastle. भाई कोल्ड पामर दिखा देता है क्या करता है लेकिन निकोलस जैक्सन एक्शन जैक्सन सुपांडी ऑफसाइड दे देंगे ओह माय गुडनेस ऑफसाइड कर देंगे था नहीं लेकिन दे देंगे वो जो डिपेंड करता है ना कहाँ पे फ्रेम को रोको तो वो दे कैन गेट अ एंगल जहाँ पे ऑफसाइड था डिपेंड करता है जहाँ पे रोका है उन्होंने वहां पे ऑफसाइड है लेकिन थोड़ा सा पहले भी रोक सकते हैं अरे यार मेरा आपसे 5 सेकंड आगे आई एम गोना ट्राई टू करेक्ट दैट एक सेकंड में देख रहा हूँ No ways, bro. I think I should be better. Offside.
ऑफसाइड देंगे. द वे दे हैव स्टॉप्ड इट दे विल गिव ऑफसाइड. लेकिन वो दे ऑलमोस्ट फ्रोज फ्रेम लाइक हाफ अ स्टेप बिफोर अर्लियर, उसमें ऑफसाइड नहीं लग रहा था. तो ये इनकी चालाकियां होती हैं इन द VAR. डिपेंडिंग ऑन विच फ्रेम दे फ्रीज इट ऑन, इट विल लुक ऑफसाइड और ऑनसाइड. तो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता. अगर वो ओपन प्ले में उसका रिप्ले दिखाएंगे तो इट कैन बी ऑनसाइड एज वेल. नहीं वो ये Based on the नहीं, बेस्ड ऑन दिस इज ऑफसाइड. लेकिन एक फ्रेम पहले जो था वो ही वाज ऑनसाइड. No, this was like ये ऑफसाइड नहीं लगा था मुझे तो, मतलब बाय द नेकेड आई. It wasn't offside, लेकिन depending on how you freeze the frame, they can make it look offside. That's the problem. Shit man. I think थोड़ा सा हमारे साथ जाती हुई है, because if you watch the play in a running clip, तो I think he was onside. But वो आपने उसको पकड़ के एक जगह पे फ्रीज कर दिया जहाँ पे आपको सूट कर रहा है. तो right, you're right, maybe, as in for all we know. मतलब again speculation है, लेकिन I think it's worth a conversation. क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है ना टच एंड गो, ये मुझे नहीं लगा नॉर्मल गेम प्ले. अगेन watching football sometimes. The only point I'm trying to make is कि उसके पहले का एक फ्रेम दिखाना था, उसके बाद का एक फ्रेम दिखाना था. उन्होंने सिर्फ एक फ्रेम दिखाया. वो आपको पता है वहां पे चालाकी हो रही है. But anyway, Palmer ने स्कफ किया था शॉट. Maybe it was a warm up for more things to come in a better way. अजान वैसे बिग अप टू फफाना यार. ये जब भागता है ना तो थोड़ा सा लाइक वो टर्बो आफ्टर बर्नर जो है उसका काफी जबरदस्त है. That's true. That's true. It reminds me of almost Willian running actually. I don't know if you remember. Willian जब भागता था ना. ओए गोली. Oh my God. ये भाई Pope read it, boy. What was it from Reece James? I think the Reece James pass. Brilliant stuff. Like Reece James playing it out for a throw into Newcastle is bar, guys. Fofana gives Rudy vibes. Pudin बोल रहे, yeah, Rudy also runs like that. Yes, you have a point. लेकिन Rudy का 3/4 भी कर दे भाई, in terms of the defender he was in Chelsea, especially in the last couple of years. लेकिन यहाँ पर over the top pass खेलने की कोशिश and Fofana gives the ball away इस बार. पूरा मूड खराब कर दिया क्लाउन रेफरी. पता नहीं यार, मतलब मिकाइल हैज अ एक्चुअल वैलिड पॉइंट. आई थिंक दिस हैज टू बी ये चीज ना बहुत लोग बोलेंगे, दे वोंट इवन मेंशन दैट, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट. क्योंकि जनरली आप देखो तो यू जनरली इन अ मूवमेंट आप दिखाते हो ऑफसाइड, यहाँ पर दे जस्ट स्टिल एन इमेज एंड दे मेक अस बिलीव दैट. अब हो सकता है करेक्ट हो, बट एट द सेम टाइम आई एक्चुअली आई एम विद मिकाइल ऑन दिस. क्योंकि नेकेड आई से समटाइम्स यू लाइक क्लियरली इट्स नॉट ऑन ऑफसाइड वाला मामला था ये वाला. तो मतलब ये आइस तो सेलिब्रेटेड प्रॉपर, मतलब यहाँ तो डाउट भी नहीं लगा मुझे, तो ऐसा वाला सीन था. बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. बाय द वे, व्हाट अ थ्रू पास भाई निकोलस जैक्सन का. दिस गाय इज रियली अ गुड फुटबॉलर. ब्यूटीफुल थ्रू पास फॉर श्योर. वो हाईलाइन खेल रहे हैं. वी हैव टू जस्ट कीप ट्राइंग टू गेट इन बिहाइंड. कोई मसला नहीं है. वी शुड गेट I think they are stamping their own foot. I think I don't know why they are playing that. I'm surprised. But वो जब बारसा को देखा उन्होंने तो देर लाइक ओके बारसा could do it, maybe we can do it. Yeah. 4-0. एक अब मधुके ने बॉल कैसे लिया है मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ले लिया. He just bodied him off the ball. Yeah, Gusto is आप देखो इन्वर्टिंग में they are taking chances. अभी गुस्तो देखो इन्वर्ट कर रहा है, but there were moments जहां पर रीस जेम्स भी इन्वर्ट किया था. मतलब इट्स इंटरेस्टिंग दैट फिक्स नहीं है कि कौन इन्वर्ट करेगा. जनरली जो कुकुरिया रहता है तो गुस्तो इज प्रेफर्ड टू इन्वर्ट, रिमेंबर, ऑन द राइट हैंड साइड. मिकाइल आप एक सेकंड हैंडल करोगे क्या? there's someone at the door and there's no one at home. No worries guys, no worries. मैं वॉच कर रहा हूँ. I'm just coming. सही है. चैट वाले बोलो क्या चल रहा है. Let me open the chat. I was not looking at the chat. So far, Newcastle got a ball at top of the box, take a shot, and just about Robert Sanchez is able to keep the ball in. It almost wriggled away from him for a corner, लेकिन he's able to bring it back in play. तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्लोज डाउन करना चाहिए था early. We allow the shot from dangerous areas. तो ये थोड़ा let's try to. अरे भाई फफाना भाई लेट गए हैं. कुछ गड़बड़ चल रही है इसका मतलब है. हाँ भाई, इंजर्ड हो गया क्या? लग रहा है कि इंजर हो गया भाई. लेट गया, पता नहीं इंजर हुआ कि नहीं. इंजरी फफाना इज इट? हाँ, शक्ल से तो लग रहा है इंजर हो गया.
ऑफ द बॉल इंजरी है क्या? नहीं, वो शॉट ले रहा था टॉप ऑफ द बॉक्स से, तो एवरीबडी वाज स्क्रैम्बलिंग, तो उसमें कहीं इसने ही इज हर्ट हिमसेल्फ. अभी नजर नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन ऑफ द बॉल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि एज सच वी डिड नॉट सी अ चैलेंज, बट एवरीबडी वाज वाचिंग द बॉल, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन उसकी शक्ल से लग रहा है ही इज गॉन. Tosin will come in, or should we take a risk of getting Kukurea and get Reece James as centre back for all we know? Go with the back अरे three. भाई, 7 कार्ड भी मिल रहा है, रेफरी कार्ड लेके खड़ा हुआ है. I missed that moment actually. Exactly. I missed it too, to be honest, man. I was just focused on the shot. What exactly happened? Why is it a yellow card? अच्छा, वो येलो कार्ड बचाने के चक्कर में शायद एक्टिंग कर रहा था, को पता नहीं. ये भी हो सकता है. ये भी शिटाउसरी गेम प्ले, hopefully. गेम मैनेजमेंट. I'd rather take that situation than an injured and no card. नहीं, I'd rather लेकिन take लग तो not रहा है be कि injured. सही है. अब पता चला रेफरी यार टाइम वेस्टिंग के लिए येलो कार्ड दे रहा है, नोइंग रेफरीज इन चेल्सी मैन. नहीं, कुछ हुआ होगा जरूर, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि गाली वाली दे दिया होगा. अब देखो ये नहीं यार, he actually twisted his knee. Yeah, it was a rash attempt, but I don't think he even touched the guy, bro. नहीं, मगर उसका नी जो है ना, वो it was stretched, tendons वगैरह stretched. चलो बच गया. I think he's gonna. Yeah, it could be painful for sure, Abhishek. Abhishek, by the way, will be the best person to let us know what exactly happened. Ankle twist हुआ है, पता नहीं. It could be tendons for all we know. At least he's walking. He's there on the sidelines. He's looking to come in back. हाँ, so let's. Gaurav to बोले don't take risk. We have a busy period to come. नहीं, हमारे पास बंदे तो बहुत हैं. फुफाना अगर इंजर हो जाता है अभी, अब डिसासी, बाजेशिले, टोसिन, so we have lots of people. मगर ideally he needs a run of games. Fofana is probably the preferred center back for the. अरे भाई, good clearance. Colwell important interception. कॉर्नर जीता है यार, ये जो लिंटन जो है ना, बड़ा फिजिकल प्लेयर. या और आप देखो, and I don't like the fact that Kukurea is not there. Kukurea is being missed already. आप देख रहे हो उस साइड से they are having 3-4 थ्रू बॉल निकाले, वो रीड नहीं कर पा रहा रीच जेम्स. यस, सो वो फिजिकलिटी कुकुरेला की जरा डिफरेंट किस्म की हसल होती है. Sanchez is Sanchez, bro. Fofana has taken the most yellow card this season. Yeah, 6 हो गया ना अभी. Correct. He was already suspended, remember, against Liverpool. Fofana and Colwell discipline थोड़ा देखना पड़ेगा उन्हें. That's for sure. I agree with the Gaurav. They have to be थोड़ा बहुत mindful. जैसे निकोलस जैक्सन लास्ट सीजन याद है, पॉच ने एक्चुअली उसको पनिशमेंट दिया था एक बार, भाई तू येलो कार्ड कुछ ज्यादा ही दे रहा है, थोड़ा सा मतलब लाइन. You think it's for that reason? अच्छा, interesting. गलत टैक्टिक्स है मरेस्का की, बोल रहे गौरव. अब देखते हैं. अगेन इट्स जस्ट 13 मिनट्स इनटू द मैच. होपफुली रीच जेम्स काइंड ऑफ डज डिफेंसिवली बेटर. मुझे लगता है गुस्तो वाज वल्नरेबल अगेंस्ट लिवरपूल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो गुस्तो लॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आई एग्री. लेकिन व्हाई रीच जेम्स अब देखना पड़ेगा. ट्राइंग टू ब्रेक, उल्टी उनकी ब्रेक हो गई. हावी बार्न्स अगेंस्ट गुस्तो इनसाइड दिखा दिया. Come on, play out with the ball. Come out with the ball. Come out with the ball. Yes. Feed him. Oh, nice pass. Neto, come on. Don't waste time, Neto. अरे कॉर्नर. चलो कोई नहीं. Why is Kuku not playing? Abdullah मतलब मिडवीक में खेला है, that could be the only thing. या मे बी कुछ चीज देखा होगा ट्रेनिंग में रीच जेम्स के लिए, that he thinks that Reece James could probably give us more on the left hand side, Abdullah. But on the other hand, maybe it might be unpopular. Lekin when you have everyone fit now, that's a big question. Have we had everyone fit and available? Not many times. So maybe Maresca, maybe this was the original plan for all we know. You never know. मतलब ये भी एक चीज है भाई. रीच जेम्स का नाइस, लेकिन रिबाउंड goes against their player Hall, I believe, और थ्रो इन मिला है थैंक्स टू नेटो. लिवरमेंटो यार चलती वापस आ जाओ, पुदिन बोल रहे हैं. नहीं यार, हमारे पास जॉश भी है थर्ड चॉइस, अभी कहाँ फिट होगा यार. इट्स ओके मैन, होता है, दीस थिंग्स हैपन, यू नो. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती. क्या था वो? चक्कर चल रहा है, जॉश का तो चक्कर चल रहा है.
हो जाएगा वो. News आ रही है that it's more positive talks. उसको टैप अप किया हुआ है या फिर वो जेन्युइनली वो मांग रहा है कि मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दो, आई विल साइन. आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, बट आई Real होप Madrid are tapping him, I believe. टैप अप किया हुआ है उसको. अरे यार सैंचेज यार क्या करता है बेटा. दो जी पेनल्टी चलो नहीं दी. ब्रूनो गुमारेश उठ जा भाई, नौटंकी बाज उठ जा. ब्रूनो गुमारेश उठ जा. वो अलग बात है कि रिप्ले देखकर मे बी आई करेक्ट माई सेल्फ, बट अभी के लिए उठ जा भाई, उठ जा. सैंचेज यार, मतलब I don't know what is Maresca seen in Sanchez. I always wonder. सी तो कुछ नहीं किया. उसको ओनर्स ने उसको कह दिया भाई इसको खिलाना है. हमने बहुत स्पेंड कर दिया गोलकीपर पर. हाँ. हमें नहीं लेकिन वही है ना, आप योर्गेनसन को साइन किया तो कुछ ना कुछ तो हो गया. क्या हो रहा है, वीआर चल रहा है क्या कि चलेगा. ये कहेगा मार दिया मुझे. जो भी था इन द बॉक्स था, सो यस इट कुड बी. रोमेरो वो नहीं, आउटसाइड द बॉक्स था. आउटसाइड द बॉक्स. नाइस. और आई अग्री दैट देयर वाज अ फ्री किक, वी वर लकी. लास्ट मैन तो नहीं था. I think there was Reece James covering, so he wasn't a red card even. Covering, लेकिन it could be a free kick from outside the box. लेकिन वो VAR नहीं देगी ना अब, so we are good. Penalty नहीं है. Penalty तो definitely just outside the box. हाँ, रेड कार्ड चेक भी हो सकता है VAR से, लेकिन रेड कार्ड नहीं है क्योंकि Reece James was there. That's our logic, right? I think so, but ये हर साल इनका प्रोटोकॉल बदल जाता है, so I don't know कि क्या actual VAR का होता है. VAR should not overrule a call on the pitch, generally speaking, unless the referee asks for it. Again, mods, no spoilers, please. Check करिएगा बार-बार, लेकिन warning दीजिए for people to do it. It might be 5 seconds late because that's naturally YouTube, मेरे भाइयों. That's not me, but कोई नहीं. सेकंड हाफ में वापस से रिफ्रेश करके करेंगे. आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा. अच्छा, नहीं दिख रहा क्या टाइम स्टैम्प? मैं टाइम स्टैम्प, अच्छा ये वाले व्यू में नहीं दिख रहा क्या? कहाँ डालूं टाइम स्टैम्प? यहाँ डालूं? बीच में डाल दो बेशक स्क्रीन के. हाँ, अभी बेटर है. ओह अच्छा, आपने स्क्रीन स्प्लिट किया हुआ है. ओके. हाँ, ठीक है. ओ भाई निकाल लो. Jackson. Nice ball. Come on, Jackson, get in. Back pass उनका रिस्की था. Pope did well in my opinion. Pope by the way बढ़िया गोलकीपर है, मस्त है. हाँ यार, ये despite the meme status of Pope, he sweeper रोल में अच्छा कर रहा है. Yeah, he's actually all-rounder वाला कीपर है भाई, हर चीज. He is actually a good keeper, I feel. Pope and Isaac ना, these are people who will move eventually. हमें पता है, मतलब they will move to, with all due respect, Newcastle bigger clubs. Cross आया, no, भाई just about cleared by Colville. Gusto with a counter attempt, लेकिन Palmer. What a pass! Nice, come on, Neto भाई, Neto! Turbo Neto, भाई nice by Neto. Yes! Jackson! Nicholas Jackson! Jackson! Pedro Neto! Cole Palmer, pass before the goal. It is Chelsea 1 or definitely not offside. This guy is, come on, man. Come on, Chelsea. Whoa! Chelsea! What a pass, man! What a goal, bro! What a goal! What a pass by Cole Palmer, bhai Jan. That was Fabregas याद आ गया भाई. There was a lot of pressure on him, by the way he turned and the way he passed. पास किया और नेटो भाई अपने टर्बो जेट में गया. This is why you need Neto, because Neto can bring you this amazing cross by Neto. Firstly to get to the ball. Pedro Neto can play on the left hand side and how guys आप देख सकते हो. और भाई किसको लेटा दिया भाई, फेबियन शार लेट गया. मतलब भाई मुझे सोने का मन कर रहा है. Brilliant goal by Chelsea, man. Really. हो जाए Malo Gusto, आपको याद है तो took the ball and gave it to Palmer and even he was under pressure before Palmer. लेकिन again Nicholas action, Jackson cool finish by Jackson. Excellent cross by Neto. Excellent cross. First time cross. Yes, I love it, bro. Directness is something that we all know that is how initially Chelsea was. The prime Chelsea, the directness is needed, bro. मजा आ गया भाई, मजा आ गया. Come on, you Blues. Come on. Oh, when the Blues go steaming in. Oh, when the Blues go steaming in. I wanna be in. When the Blues go steaming in. Carefree.
wherever we be, we are the famous CFC. एक और गोल कर लो अब बस। और भाई थ्रू बॉल आ गया, उनका गोल आएगा। अरे भाई बच गए। Almiron's cuffing his shoulder. What a through ball over the top. और भाई रीस जेम्स नहीं काम कर रहा लेफ्ट हैंड साइड में। Sorry to say, I don't think it's working. Yeah, that we got lucky there. Almiron छोड़ता नहीं है। Positionally, Reece James is not there. He's not expecting that over the top pass. लेकिन Palmer आज ज्यादा दिखा नहीं है. I must say, with all due respect to अपने team, Palmer, to be honest, has not been on the ball as much. लेकिन nice to see Pedro Neto not messing it up. Avril बोल रहे Palmer भाई Juan Mata का याद दिला दिया. Absolutely Juan Mata. Actually, you're right. Juan Mata of 2011-12, bro. Wow. Madueke giving the ball away. Pass. Reece James is there, but Jackson, bro. Nice take from Jackson. Nice pass to him as well. लेकिन puts in. Lavia का pass था. He found okay, Jackson. Palmer को दे यार. Okay, we're cycling it back now. कोई नहीं. Lavia का क्या so far रोल लग रहा है? लाविया आई थिंक इज कहीं ना कहीं सेफ्टी वाल्व, क्योंकि हमें पता है रीस जेम्स एट लेफ्ट बैक इज नॉट समथिंग दैट हमने देखा है वीक इन वीक आउट। तो मुझे लगता है लाविया को, मतलब आई डोंट नो वेदर बोला गया है कि ही इज प्लेइंग विद इन द शेल, ऐसे फीलिंग आ रही है लाविया इज काइंड ऑफ प्लेइंग विद इन हिमसेल्फ थोड़ा सा, मे बी ऑन पर्पस, क्योंकि आपको पता है काइसेडो व्हेन लाविया काइसेडो देयर, काइसेडो इज अ पासर। अरे यार टू सिट थोड़ा बहुत सैंचेज की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी ऑफ है आज थोड़ी। मिकाइल बहुत गुड वुड एक भी अच्छा किया, एक भी पास दिया। मैंने कब सामने रख दिया भाई। ओ भाई कोल्ड पामर, ठंड लग रही है भाई, ठंड लग रही है। व्हाट अ what a first touch, getting a yellow card for what a first touch, drew the foul, amazing, brilliant stuff. Fabian Schär, by the way, बहुत ही बुरा गेम चल रहा है उसका लास्ट 5 मिनट से। That's the difference between Neto and Sancho. Sancho could have never delivered that assist. वही है, Sancho anyway coming back to his right foot वाला मामला भी है, लेकिन यहाँ पर थ्रू बॉल वापस आ सकता था, but only Neto है। Neto short catching practice for Pope. कोई नहीं, देखो Neto can hit off the right foot. why that was a strong shot वैसे, मगर straight to the keeper. I like what I'm seeing, bro. Mikhail Neto on the left is also very exciting, क्योंकि दोनों साइड, and I think यहाँ पर जो पॉइंट बोला है ना अपने भाई फिनिक्स गेमर ने in the chat, I think he has a brilliant point. क्या बोल रहे? One can argue that maybe Livramento positionally was at fault for Newcastle for the goal, or it was a too good pass for Palmer. It'll be harsh. No, pass was a pinpoint pass, and Neto had to really set the afterburner on to get to it first. And kudos to him, he did not fall when the tackle came in. He kept going, and then first time he got his head up, and first time he crossed it for Jackson. Amazing textbook breakaway and cross, but and finish. But I would say that the Palmer pass was what made it. And boy, what a nice cross from Madueke, man, for a change. Lekin Gusto, nice inverting from him. I think Gusto has done well in the last 5 minutes, guys. काफी अच्छा लगा है Gusto inverting. I think अभी clear है Mikhail. So Reece James is kind of sitting back, so it becomes like a back three with Reece James being there, जो kind of Reece James को सूट करता है, but again I would have preferred him as a right center back. कुकरेला को ज़्यादा सूट करता है Reece James से, so again वो it's a bit of an experiment. I don't know क्या rationale थे, but anyways we'll see how the game progresses. The point is कि we know कि they have threat too, so attacking threat उनकी भी है, so we cannot rest. West Ham Manchester United 0-0 abhi, guys, for people who are interested, but I don't know, maybe क्योंकि एक और मतलब overthinking है मेरे द्वारा, लेकिन Mikhail, the fact is we are playing Newcastle twice, remember, within what 1 week, right? Very nice pick up with yes, अब वो एक अलग conversation we will have after the game. What will be the learnings and what will be the takeaways and what will be the changes in lineup for a cup game with the same opposition. Gusto brilliant. लेकिन कोई नहीं, they cleared it just about Newcastle. Back to us though, Madueke on the wing. Madueke, nice cross. लेकिन भाई Jackson तो far post में क्यों आ रहा है? Be in the center or be the near post, right? अरे यार, good cross again into the danger area. उधर कोई है नहीं 6-yard box में. Come on guys.
होती है जैक्सन एंड हेडर्स नो आई वो डोंट फार थिंक पोस्ट में जा रहे हैं, दे शुड बी मीटिंग, एक बंदे को मिडिल में रहना चाहिए बॉक्स के। आई थिंक जैक्सन गॉट टू बी दैट गाय क्योंकि नेटो फार पोस्ट में एनीवे सपोज्ड टू बी देयर Both of them are crowding the far post instead of one person occupying the middle of the 6-yard box. नाइस स्टफ बाय काइसेडो एंड रीस जेम्स पुटिंग इन नेटो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वापस से मिलेगा शायद रीस जेम्स को प्रीटी श्योर नहीं नेटो बोल रहा है मुझे जाना है भाई रेस लगाना है मुझे नाइस डिफेंसिव वर्क लेकिन आई थिंक जस्ट अबाउट कीप्स द बॉल इन प्ले नाइस लेकिन यार शॉट है गुस्तो भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई मालो गुस्तो काइसेडोस ऑफ द वर्ल्ड गेट बेटर इन शॉट टेकिंग ब्रो वी कैन डू बेटर कम ऑन हसल बाय नेटो, वैसे नेटो काफी डायरेक्ट प्ले कर रहा है आज, ही इज मेकिंग अ पॉइंट, ही इज मेकिंग अ पॉइंट वर्सेस सैंचो कि भाई आई कैन डू इट टू, आई कैन डू इट बेटर quote unquote. But again, This is the main point. Sorry, Ankit bhai, lekin this is the point. When you have people trying to outperform each other in the squad, that's what you want to see, right? कि भाई एक से एक बढ़ के कह रहा है कि नहीं, you get a chance, you make the most of it. You make फुटबॉल खेलने का मन हो रहा है गाइस भाई पार्सल एक फुटबॉल पार्सल रेफरी के लिए क्या कर रहा है भाई अच्छा मूव हो रहा था साला बीच में टच कर लिया Gusto is very poor in shooting. I think generally it's a problem. आप देखो तो our defenders and midfielders don't score enough goals. That's an issue. Abhishek, to win leagues, no. मतलब eventually we are talking about not this season, but next season at least we should be a challenger for the league. Absolutely, I think that for winning leagues, and people are saying Arsenal का इसलिए they have a very strong chance क्योंकि they are very good at set pieces. They are very good with their defenders scoring as well, not just defending well. Even Liverpool the same. तो वहां पर I think with that Trent, Virgil van Dijks of the world are there. वो लोग स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर नाइस बॉल वन बाय लाविया अभी तक दिखा नहीं था गेम में बट पामर काइंड ऑफ डजंट कीप इट वो द टॉप पास आया है नो वे इजैक हाउ डज ही गेट दैट बॉल ब्रो व्हाट अ टेक बाय इजैक गोल आएगा उनका बढ़िया बाय फोफाना लेकिन वापस रिबाउंड मार दिया न्यूकासल ने जस्ट अबाउट फोफाना डबल सेव डबल ब्लॉक ऑलमोस्ट एंड एल्मिरॉन विल टेक अ शॉट सैंचेज ने पकड़ लिया चलो भाई चल से सैंचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लडी इडियट चलो कोई नहीं I take my words back because somehow Lavia has got it back to Palmer now. Palmer in midfield putting in Reece James puts it back to Lavia in midfield जो Caicedo देखता Caicedo puts a through pass to Gusto right hand side में shift होता है Madueke on the right hand side taking on Lewis Hall take him on cross किया है लेकिन corner जीता है भाई come on nice stuff भाई दोनों wingers direct है like it सैंचेज कभी नहीं सुधरेगा भाई क्यों नहीं ऐसा नहीं करते इट्स बीन लिटरली 2 months मैन सिंस वी हैव साइंड सैंचेज अच्छा सैंचेज के बारे में बोल रहा हूं मैं सोच रहा हूं सैंचेज में कंफ्यूज हो जाता हूं सैंचेज का क्या किया जाए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए अभिषेक इन द हाउस व्हाट्सएप लेकिन यहाँ पर कॉर्नर है भाई एक तो गोल मारो कॉर्नर से एक तो गोल मारो Come on, Palmer. Ooh, brilliant corner. Well saved by Pope. यहाँ पर फ्री किक दे देगा रेफरी साला अरे यार फोफाना ध्यान से येलो कार्ड पर है मेरे भाई सैंचेज को सैंडविच बना दो जोर्गेनसन अच्छा आपका कैमरा नहीं चल रहा मैं कहल आप हो ना यार मैं नाश्ता कर रहा हूँ साथ मैं take your time no problem again big ups to Mikhail भाई early morning में उठा देता हूँ बार Mikhail is more than happy to come and that's just almighty blues no the nashta is one of those nashtas that if you don't have it warm it's going to be wasted so I just have to make an executive decision बिल्कुल I am also नाश्ता person like नाश्ता दिन का अच्छा नहीं जाता ना तो भाई पूरा दिन मूड खराब रहता है मेरा there you go आई गेस मरेस्का ना डिफेंस में एक्सपीरियंस रखने के लिए रीस जेम्स को लेफ्ट बैक ये पॉइंट हमने बात डिस्कस नहीं किया है जो मरेस्का ने मैं आई थिंक मिकाइल वाजंट इन द स्ट्रीम तब हमने डिस्कस किया था लेकिन आई थिंक द फैक्ट इज ही हैज काइंड ऑफ हिंटेड मरेस्का इन दिस रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वी आर स्टिल लैकिंग दैट लीडरशिप एक्सपीरियंस इन द सेंटर डिफेंस स्पेशली तो डोंट बी सरप्राइज्ड गाइस वी आर गोइंग टू गो विद वन मोर साइनिंग इन द जनवरी विंडो लेट्स सी हु कैन कम इन सैंचेज को चप्पल ट्रीटमेंट दिलवाओ ओ बाप रे या यहाँ पर लुइस हॉल भाई व्हाट अ डिलीवरी मैन लुइस हॉल मैन द गाइज
गुड एट डिलीवरी मैन, लेकिन यहाँ पर ब्रूनो गिमारेश Set pieces से ना they will try to break us down, so very important for us to stay on alert. Oh, Palmer, big up Palmer. wow, I like it, bro. I really like it. That is what you say, man. This guy is motivated like anything, man. I like it, and he needs to do that against Newcastle. हुमल्स या हमने बात किया था हुमल्स. आई नो वरान तो इंजर्ड हो गया, रिटायर हो गया, बट आई थिंक देयर वर पीपल हु वर अवेलेबल. रामोस फॉर ऑल द यू नो speculation, but कोई नहीं, we'll probably not do that. यहाँ पर near post में they missed a header. It was a free header, mind you. It was a free header. Again, Enzo Fernandez. I still believe that Enzo Fernandez will be playing many games. I think Enzo Fernandez will probably play when you expect a little bit space in midfield. Then Enzo Fernandez plays. Naito, if it's like physicality, pressing, etc., then probably Lavia plays. Newcastle is physicality and pressing वाली team. Simple. बिल्कुल सही आपने बोला, ये मुझे भी यही लगता है. That's a good way to put it. मार्किंग तो भाई क्या ही बोले अभिषेक. मतलब आई रियली वंडर सेट पीसेस में व्हेन विल बी एट पॉइंट व्हेन वी बिकम. देख, चेल्सी वाज अ टीम फॉर सेट पीसेस ब्रो. पूरा चेंज हो गया अब मामला. क्या ही बोले यार. थोड़ा सा फिजिकलिटी वापस लाने पड़ेगी रिक्रूटमेंट में. देखो ना, लाइक जॉन टेरी, गैरी केहिल, मतलब पीपल, ब्रानिस्लाव इवानोविच. वाओ, दैट वाज लाइक सम giants in defense, man. Matic, Mikel, height. एक जमाने में आई थिंक भूत भी होता था हमारे पास, वो भी लंबा था. Easy goal, man. Man. Horrible, man. What an awesome goal for Newcastle. Pathetic goal conceded by Chelsea on the other hand. कोई भी challenge नहीं डाला from the left-hand side of Newcastle. Totally opened up. The ball was passed into the net by Isaac और सालो एक भी tackle नहीं किया भाई. Training ground. tackle करना था यार. Training ground goal. They just passed the ball around everybody. Even the goal was just a tap into the goal. He just walked into the goal with it. Wow. Such a bad one. 1, 2, 3, 4 chances to stop the game play. Is he offside, Lewis Hall? थोड़ा सा लग रहा है. है तो सही. यहाँ पे yes, he's played on. But वो पहला जो पास था to the winger, I think वो offside है. Yeah. This pass is offside. यार साला ऑनसाइड बोल रहे हैं यार ये लोग. नहीं उसका पैर is offside. They have already said that part is onside, and then the pass itself, that could be offside. यार come on, हम लोग के लिए भाई. अब वो सारे फ्रेम दिखा रहे हैं. हमारी बारी इन्होंने फ्रेम नहीं दिखाए आगे पीछे के. इनकी बारी अब आगे पीछे के सारे फ्रेम दिखा रहे हैं. नहीं देगा ऑफसेट, पता है यार. ऑन फील्ड गोल दिया गया, राइट. Fofana, I think is keeping him on. Surely, man, we need 3 points, man. Bring in Tosin, बोल रहे Phoenix gamer. I mean, there have been good moments of Fofana as well, to be honest. Geordies in the house and he's saying offside, but साला on दे दिया भाई. Frame is the key, man. You are right. Come on, man. यहाँ दोनों पॉइंट्स पर लग रहा था ऑफसाइड हो सकता है. हमारा एक पॉइंट पर 1 सेकंड में आप दे देते हो और इट्स अ गोल. जो पहला वाला था ना वो लुक मोर ऑफसाइड टू मी. वो उन्होंने ज्यादा दिखाया नहीं है, लेकिन एनीवेज ठीक है जो भी था. द पॉइंट इज वी कुड हैव डन बेटर. वी शुड नॉट इवन हैव अलाउड दैट. सो गेम ऑन हो गई है 1-1. बट आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग हार्श. आई थॉट लाविया का टैकल कुड हैव बीन अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर. हाँ, वो मिडफील्ड में 2-3-4 चांस थे to break up the play. We somehow did not break. I guess nobody wanted to cause a card or whatever. So, but that cost us in the end. क्या करें? Who was marking Isaac? I think वो भी एक question mark है कि who should have been marking him? Levi Colwill. Yeah, Colwill. I think Fofana keeping them onside and Colwill for not marking and Lavia for losing the ball. क्योंकि वो इतने ज्यादा स्पेस में था उस वक्त वो जब उसने टैप इन किया है कि वो it begs the question कि who was marking him.
Sanchez playing it long and giving it to Newcastle. चलो भाई, water is wet. लेकिन हमें मिला है वापस से ball on the rebound only for us to give it back to Lewis Hall, जो by the way is doing brilliantly, I must say. पता नहीं यार, अमन क्या ही बोले. Kind of pissed off. The fact is, it's a matter of millimeters. It's a game of centimeters at times, भाई. Or again, the frame actually is the intent also. लेकिन again, we should have defended better in midfield as well as maybe not allowed that cross in again. Neto trying to put a ball to Jackson. Pope clears it for a throw in. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. This is the time when we need to score, man. Half time के पहले. पता नहीं यार, मतलब I thought अभी भी मुझे I'm like almost pinching myself. Was it really a goal? वाला मामला हमने we allowed them to walk in, man. Walk in the ball. We are never going to be able to defend a one goal lead, right? So हमने तो goal करने हैं. We need to go find more goals in this game, right? So ठीक है, कोई नहीं, एक goal कर लिया उन्होंने. What are we doing? Neto this time he loses the run. कोई नहीं. Good pass though. Nice. Midfield में चलो Caicedo छक्का. See, that is where when will our midfielders and defenders shoot, man? Proper. हम क्या करते हैं practice में? इतनी गंदी shooting कैसे हो सकती है? Seriously, good question. ये training ground, इतना space था, कोई pressure नहीं था, not even on target. Yeah, and Even left on foot I target. understand, but I think this is the standard one. You expect that in training like every day. अच्छा, left-footed था. Okay, so okay, चलो, at least there is something. It wasn't his dominant foot. ठीक है. But कोई नहीं. वो two-footed player जो है ना, वो चेल्सी में कम ही आते हैं. आपको पता ही है, वो usually बार्सिलोना वगैरह ले जाते हैं two-footed players. I think Reece James probably for that reason alone maybe should be asked to invert now, because as it is वो positionally I think थोड़ा बहुत suspect लग रहा है. और Reece James at least is a shooter. Maybe we should try that for a few minutes. Just saying. मरिस्का खुश नहीं लग रहा भाई, बहुत इरिटेट लग रहा है. Obviously, मतलब again it was like we were dreaming, bro. वो इतने सारे passes आए. न्यूकासल के तरफ से बहुत अच्छा गोल था. I get it. It was a very picturesque goal. But there were many chances to break up that play. Somehow we just didn't want to break it up. Everybody shied away from the tackle. कोई नहीं यार. वो no nonsense midfield जो है ना, वो नहीं है आजकल के भाई. जो भी है, हमने we will not let you play. We will kick the ball out, but we will not let you play. वो उस टाइप का mentality कभी-कभी चाहिए होता है in dangerous areas. लेकिन ठीक है, चलो हो गया. Hopefully we learn from it. ओए Almiron. Oh, come on, that's a yellow. That's a yellow. Come on, man. Reece James को literally kick किया भाई पीछे से. That's a yellow, man. Hey, Almiron को yellow मिलना चाहिए भाई. Wow, no yellow. Wow. That tells you exactly what the referee is saying. Where was the ball and उसका पैर कहाँ था यार? Almiron should that blatant yellow नहीं मिला भाई. Wow. Tackle from behind, got the leg, got the ankle, and no card. I mean, it's a ball pass में था, right? Mikhail, it was only his foot. Reece James, he was clearly going for the foot. He should have got a yellow. नहीं, बाल्डे जेम्स कैसे कंपेयर करेंगे? रीस जेम्स बहुत मतलब सालों के बाद लेफ्ट बैक खेल रहा है. ही इज अ राइट बैक. तो बाल्डे फॉर कुकुरिया, नो, आई विल कीप कुकुरिया राइट नाउ. ऑब्वियसली कुकुरिया. अरे यार, कम ऑन. मडवेके स्लीपिंग. लुइस हॉल भाई, ही हैज ग्रोन इनटू द गेम लाइक एनीथिंग. एक तो असिस्ट मिल गया उसको. लुइस हॉल एक्स चेल्सी अगेन. ही हैज ग्रोन इनटू द गेम लाइक एनीथिंग. Disasi for Arao, yes भाई Pudin, absolutely, this is ideal जो Pudin ने बोला है. Newcastle changed from 4-4-2 to 4-5-1. We were expecting them to kind of go defensive approach. They kind of do that a lot of times. लेकिन that's the thing ना, क्योंकि wings पर we are having Reece James. Maybe I don't know, मतलब Neto unfortunately needs to help him out defensively. That's the only thing मैं बोल सकता हूँ. मडवेके को गेम में नहीं इनफ रखा है अमन. I think Madueke has not had much of the ball. Maybe he's just frustrated. Palmer, what a touch, brilliant touch by Palmer. यहाँ पर wow, what a through ball to Madueke. Madueke क्या हगना मत.
मडवे के पास किया है, नाइस टू नेटो, नेटो का करेगा, थ्रू बॉल डालेगा कि शॉट करेगा, शॉट मारा है और यहाँ पर कॉर्नर जीता है. नाइस प्ले बाय पामर मैन, कोल्ड पामर, ऑसम, वर्ल्ड क्लास 2 मोमेंट्स बाय कोल्ड पामर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मडवे के एक्चुअली डिड वेल टू पुट इन नेटो. अगेन नेटो फर्स्ट चांस नॉट ले सकता था मे बी मिकाइल, और वाज इट little bit It was difficult? on his outside foot, so वो थोड़ा stretch हो गया था just to try to stop the Being foot. left footed, मैं सोचा कि maybe he could have, but Yeah, I would take it. He could have faked a shot and let the dive come in and then shot again. थोड़ा time था उसके पास. You didn't have to rush the shot. Nice. Neto puts in Come on, Caicedo. keep the ball. Don't be offside. Don't be offside. ये लोग तो भाई, एक सेकंड, यहाँ पामर ने वापस से डाला है. Come on, Neto, low cross, well defended by Newcastle. Palmer with the header keeps the ball in play, and so does Caicedo. Caicedo over the top, right side pass दे रहा है to Neto on the right hand side. एक और क्रॉस आने वाला है, pretty sure. शॉट आएगा क्या इस बार? शॉट आया भाई, what a save from Pope, man, what a save. That was definitely a deflection, लेकिन what a shot from Neto and what a save from Pope भाई. Pope is Neto really, mood में लग रहा है. Neto is in the mood today. it was really looking good. Yes, absolutely agreed. Deflection tha, double deflection in fact. Wow, what a save, man, I must say. Neto, it was on target, bro. Absolutely on target tha. Nicely done by Neto. Again, Caicedo ka pass bhi, I like that. I think they should do more of it over the top wala. Reece James corner, well cleared, palmed by Pope. Come on Chelsea, come on. You need a goal, need a goal. बहुत सस्ता गोल हमने कंसीड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक तो मैं काउंटर होगा करके डर लगता है हमेशा, विद आवर फुल बैक्स काइंड ऑफ स्टेइंग बैक. Fofana is limping वैसे, पता है, आगे निकला हुआ है and he's limping. He might सबसे have मैं to देख come रहा off. हूँ, people are saying He might Tosin have should to come come in. off. Yeah, he'll probably have to come off. Maybe they're waiting for halftime. गुस्तो ट्राइंग टू गिव अ थ्रू पास, नहीं मिला. यहाँ पर काउंटर आ सकता है इन लोग का. भाई लाविया पैर डाल यार, लाविया पैर डाल. नाइस 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 नाइस, क्लियरली फ्री किक है भाई. लाविया हैज वन द फ्री किक. Yes, against Javi Barnes. Absolutely. Well done by Lavia. This he should have done for the goal. Yes. Lavia had that moment. 100% agreed. Yes. कि वो that was Ball है. had the opportunity. What a through ball by Pope, read it. Nicholas Jackson was there. भाई ये पोप की रीडिंग बड़ी तेज है भाई. लेकिन यहाँ पर शाउट आया कुछ तो, मडवेके के अगेंस्ट चैलेंज है, आई बिलीव सो. मडवेके था, सॉरी, नॉट निकोलस जैक्सन. वाज इट अ foul by, was it a pullback by Burn? Yeah, it was a pullback. It was a pullback. Nah. I think it was a very बहुत. It wasn't a pullback. Definitely there was just enough to throw him off the balance. It was enough, yes. अगर forward हो तो आप गिरोगे, लेकिन I thought it was too weak अगर हमें मिलता. हाँ. अरे भाई ये किधर हो? Sanchez भाई. Javi Barnes का अभिषेक बोल रहे हैं in the chat that he should have got a yellow card. Yes, it was cynical if you think about it. But shocking was ये एल्बियन को कैसे मिला येलो कार्ड भाई. रीस जेम्स वाला वो तो एकदम क्लियर मोमेंट था कि पैर पर लिटरली मारा. Cynical foul. Reece James over the top pass, Neto, nice from Neto again. I like it what Neto कर रहा है on the left hand side, putting so much pressure to Livramento. यहाँ पर nicely done by Bruno Guimaraes, just about keeping the ball. लेकिन यहाँ क्या दिया है, कुछ तो दिया है नेटो के अगेंस्ट. Umpire has brought the ball back कि जी नेटो ने उसको धक्का दिया. अरे यार रेफरी जाग जा यार, क्या बेवकूफी है यार. लेट चैलेंज बोल रहा है. कोई नहीं. Actually, Mudryk also might not be bad in this game, late in the game. मैं genuinely देखता हूँ that this could be going to the next level. Palace 1 Spurs 0, guys. Thanks for the update, Harsha. Palace 1 Spurs 0. That also helps us. लेकिन हमें जीतना है मैच first of all. Enzo Fernandez और Vega warm up कर रहे हैं along with Tosin meanwhile, just so you know, guys. So Reece James is coming off, Vega is coming on. Caicedo should have done better. Fofana था, Colwell था.
भाई हमें लंबे प्लेयर्स चाहिए। न्यूकासल भाई जायंट्स है भाई, एट टाइम्स हेडर तो आता है ना तो चांस ही नहीं मिलता चेल्सी का। देयर इज नॉट इवन अ चांस दैट चेल्सी विंस द हेडर्स। आई डोंट नो व्हाट इज इट अबाउट चेल्सी, राइट? नहीं, their players are taller generally, so नाइस नाइस, नेटो भाई, नेटो, पेड्रो नेटो भाई, प्यार आ गया भाई मुझे। लेकिन एट द एंड ऑफ द थ्रो ही नहीं है। द गाय इज रियली चार्ज्ड अप मैन, पेड्रो नेटो। नजर नहीं लगे बस, ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ विंगर whom we always want to see. good hustle by लेकिन Jackson. Good hustle by Jackson. नहीं, Jackson नहीं था, कौन था ये? Madueke, I guess. Madueke, yes. सेंटर बैक्स are massive. मैं बोल रहा हूँ न्यूकासल टीम इज वेरी फिजिकल, इसलिए मैं सरप्राइज जो आज वी नॉट गो विद द बार्डेशिल फॉर एग्जांपल, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज भाई। लेकिन देयर आर स्पेसेस, ऐसे नहीं कि स्पेसेस नहीं है। आई एम वेरी सरप्राइज विद व्हाई न्यूकासल गिविंग स्पेसेस। इस सीजन में थोड़ा बहुत दिए, यहाँ पर कैसेडो गिविंग अ फाउल, जोलिंटन विंस इट, डाइव था बोल रहे अभिषेक। रेफरी इज अ पीस ऑफ शिट। रेफरी खुद ही एक्सक्यूजेस बना रहा है, उसने शर्ट की, उसने कोई नहीं शर्ट मतलब की। आप हर वीक हो गया, टच होता है हम लोग के अगेंस्ट फ्री किक दिया जाता है, मतलब टच होता है बस। इट्स नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट फॉर तो अस बट रेफरी फॉर अदर्स। गंजा है, तो you know what the script is. बट भाई 7 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम है। 7 मिनट्स कैसे आ गए? मतलब देयर वाज स्टॉपेज फॉर फफाना, आई नो, एंड द गोल्स एंड ऑफसाइड गोल भी हुआ था चेल्सी का, डिसअलाउड फिर भी, बट ठीक है। जैक्सन नाइस लिंक अप एंड होल्ड अप, लेकिन यहाँ पर मडवेके ने दिया है अरे गुस्तो को, वाज ही यार, पास एक्सपेक्टिंग ऑन पामर का नेटो बता फारपोस्ट था। में, और भाई नाइस। कॉर्नर। Jolinton looks a lost brother of James. Good one, Shubrank, actually. Good one, good one. स्पेस बहुत दे रहे हैं एक्चुअली, दोनों टीम्स दे रहे हैं, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ न्यूकासल चेल्सी गेम। लेकिन लिवरमेंटो भाई, एक्स चेल्सी मैन, लिवरमेंटो और हॉल हैव ग्रोन टू द गेम, आई मस्ट से, स्पेशली लुइस हॉल। लुइस हॉल हैज लुक्ड ब्रिलियंट। शॉर्ट कॉर्नर लेंगे। हाँ, न्यूकासल का अगेंस्ट आई बी वेरी सरप्राइज इफ यू टेक अ डायरेक्ट कॉर्नर। नहीं यार, रीस जेम्स ले रहा है डायरेक्ट वापस से, फार पोस्ट में वापस से कॉर्नर होना चाहिए। चलो एक और कॉर्नर मिला है गाइस, कम ऑन, चल से एक तो स्कोर करो डायरेक्ट कॉर्नर के, प्लीज प्लीज, इतनी सी ख्वाहिश है बस। और एज इट इज वी नीड टू टेक अ लीड बिफोर हाफ टाइम, प्लीज। मडवेके इज नेवर डायरेक्ट, इट ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल दैट ही विल कट बैक। मैं वही बोल रहा हूँ ना, विंगर्स को बोला गया इस मैच में, आप देखो कि आप एक साइड से वाइड करोगे, एक साइड से बेसिकली कट इन करोगे। आई थिंक वही स्ट्रेटजी है, क्योंकि गुस्तो इज प्लेइंग एज वेल एज रीस जेम्स इज प्लेइंग, मेरा ये असम्पशन है अभिषेक। लेकिन यहाँ पर नाइस वन अगेन कॉर्नर है पोप का, नाइस हैंडवर्क, बहुत ही क्लोज टू द गोलकीपर, वन कैन आर्ग्यू। कॉर्नर्स आ रहे हैं थोड़ा बहुत, वी कुड बी अ लिटिल बिट बेटर पोजिशनली। मडवेके, कॉलवेल, रीस जेम्स, come on Jackson, we need to score a header man, दिखा दो भाई, size doesn't matter. come on far post, पोप बहुत बढ़िया कीपर है भाई, आई स्वेयर भाई। मतलब with all due respect to Newcastle, I wonder how are we having Sanchez and how is Newcastle having Pope, bro. This is the keeper that I actually would love, man. मैं तो अभी केलर को लेने को तैयार हूँ। लेकिन ठीक है, मतलब बॉल आई हमारे पास, जैक्सन ने पास दिया मडवेके। मडवेके क्या हुआ? फाइनली सैंचेज जागा। That could have been dangerous अगर सैंचेज नहीं आता। Well done by Yep, Sanchez yep, yep. मडवेके चोमू बोल रहा है अभिषेक इन द चैट। अरे यार, लुइस हॉल जो है ना, नाइस पास टू, नहीं अगेन हॉल मैन, हॉल हैज रियली डन वेल इन द लास्ट 30 मिनट्स। बहुत अच्छा किया हॉल इन फैक्ट, मैं बोलना चाहूंगा। मैं अपना वॉच पे पॉज डाला हूँ, लेकिन इट्स गोइंग ऑन गाइस अभी भी। आई बिलीव सो, कितने 3.5 मिनट अभी बाकी है। पामर हैज नॉट बीन इन द गेम इन द लास्ट 5-7 मिनट्स, वन कैन आर्ग्यू। Maybe he needs to try and drop back a little bit. Well done, but I see. ओ भाईजान, नहीं यार, we lost the ball. No, come on. Javi Barnes on the left wing against Malo Gusto. Malo Gusto, don't show him in the inside. Malo Gusto, OP man. Malo Gusto doing brilliantly in this moment, must say. Absolutely. लेकिन
अरे यार वापस पीछे को दे दिया यार. We should continue the attack, no? Come on, come on. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. कॉलवेल प्रेशर है इजैक का. शाउट आउट दो भाई कैप्टन रीस जेम्स. सामने से आपको इशारा करना चाहिए था. इजैक गिर गया भाई. इजैक खुद ही को इंजर्ड कर दिया. आई थिंक ही बैंग्ड इनटू कॉलवेल रादर, राइट? प्रीटी श्योर. पता नहीं, रेफरी येलो कार्ड हमें दे देगा. फजूल रेफरी. आई थिंक दिस इज द फाइनल प्लॉय जो एंजो पेरेस का करने वाला है. सैंचेज प्लेइंग एज स्ट्राइकर. Defense has been terrible. You think so? No, I don't think so, Gaurav. I don't think it's a matter of terrible. By Newcastle are a good side, bhai. I can't really expect all of us to dominate all the time. Nice. Gusto Madweke cross headed out by Newcastle. यार ऑफसाइड कौन हो गया इसमें? Tosin is a must starter again. He wasn't great against Liverpool, if I'm being honest. Again, मैंने बोला था कि कामनेस लाता है एक, but I think एक चीज बोल सकते हैं, maybe because of the height factor, Tosin / Badiashile, one of them was important आज. They are so tall. What's the point of crossing every time? अमन पूछ रहे हैं. I think Nicholas Jackson, I don't know, Mikhail, if you agree, but I think last few games there have been a few headers that he's taken. I think ability has just that positional awareness of when to kind of go for that header is not having it, I guess. Pata nahi, confidence come in heading the ball. He doesn't go for a fight. अगर होता है ना 50-50 वाला. हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि could do more. Position भी थोड़ी गलत है, but the idea is कि hopefully the coaches are sitting down with video footage of the game afterwards and saying, okay, this is where you can do something different now. Oh, that's a Gusto with quite a hard challenge here. प्रॉपर चैलेंज था भाई, प्रीमियर लीग टाइप ऑफ चैलेंज. अरे 0-0 है भाई पैलेस और टॉटनम. दिसला हो गया शायद. घर्षा ने तो बोला था, बट कोई नहीं. मे बी वेस्ट हैम मैन यूनाइटेड अभी भी 0-0 है गाइस, फॉर जस्ट फॉर कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी. डेंजरस एरिया है. यहाँ से danger can be created. They will put it into the box. tonali दोनों बढ़िया बॉल डाल सकते हैं यहाँ से. Exactly. Sanchez has to be alert. ये क्या हो रहा है? दो लोग बोल रहे हैं 0-0 है पहले स्पर्स गेम में, दो लोग बोल रहे हैं 1-0 है. ये क्या हो रहा है भाई? रिफ्रेश करो. गोल आएगा. बच गया. इतना टाइम था सालों को अपने डिफेंडर्स को, फिर भी डायरेक्ट हेडर हम अलाउ करते हैं. हाफ टाइम हो गया गाइस. It is 1-1. Of course, Nicholas Jackson. One can argue that we had already scored with Palmer, but it is Nicholas Jackson getting that important goal. जो equalize cancel out किया है Isaac ने, and Isaac, I have to say, wow, how did you allow? मैं अभी तक बिलीव नहीं कर रहा हूँ मिकाइल, वो गोल हमने अलाउ कैसे किया. I have no idea. this is Premier League, this is a 6-pointer. जब हम दो मैचेस में लगातार ड्रॉप किए पॉइंट्स अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड एट होम, एंड व्हाई आर वी हेजिटेंट लग रहे हैं इन मिडफील्ड इन सर्टेन चैलेंजेस. न्यूकासल अपना फिजिकलिटी दिखा रही है, वन कैन आर्ग्यू, बट ओवरऑल इफ यू हैव टू सम अप द हाफ, आई डोंट थिंक वी कैन बी अनहैप्पी एज सच. Defensively, question mark. I think more because of James Cup selection than anything else. Would that be fair to say? हाँ यार. So thoughts ये हैं, like after the first half, we are never going to be a team that will never allow a goal. In the current setup, we allow goals. We know that. So वो बात वहीं पे है कि did we keep the focus and did we learn from the mistake? I think there was some opportunities to make up for the mistake in midfield with the first उनका जो equalizer था. We had 3-4 chances to break up the play. We did not. We just let we resisted going in for the tackle. तो वो फिर बाद में we have
we have since then corrected that, and Lavia has been more active. Gusto has been more active in killing the danger early in the midfield. So that was a mistake. वो थोड़ा सा हमारे favor में जा रही थी game, so we just took it easy, and they made us pay for it. They just passed the ball around the whole defense, and Isaac had I think वो water is wet. Isaac will score against Chelsea. वो वाली situation होती जा रही है कि he had a simple tap in, and it was business as usual for him. तो ठीक है, आई थिंक अभी भी ओपन प्ले आप जिस तरह कह रहे थे दोनों टीमें ओपन खेल रही हैं, देयर विल बी चांसेस टू प्ले टू स्कोर मोर फ्रॉम आवर साइड. आई थिंक फुफाना हैज टू कम ऑफ क्योंकि ही इज ऑन अ कार्ड, थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा हमारे पे, एंड मे बी जेम्स शुड बी थिंक थॉट अबाउट. वैसे तो मुझे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी लग रही है, पीछे से ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल, तो वो दैट आई एम नेटो के वो जो रन्स है ना बहुत क्रूशियल है, आई थिंक विद जेम्स बीइंग देयर. फेयर पॉइंट. So I don't know if we want to necessarily do it at halftime. लेकिन I wouldn't be surprised अगर फुफाना को उतार लें halftime पे, just because वो थोड़ा सा निगल भी है उसमें, he's limping and he is on a card. But second half, I see us having a chance to get a result here, so I hope we can come back strong early. Positives. If we have to break the positives in the first half, obviously, I think Neto is probably the biggest positive by far. I think correct, Pedro Neto. 100%. और अभी I think I know it's just game by game हमें लेना चाहिए. Important for us to get 3 points. But even in this game, for example, Livramento and Hall have both grew into the game. But you might actually think about क्योंकि at the end of the day 6-pointer है, and there might be a case जहाँ पर you might get more space even for all we know, जो surprisingly Newcastle दी है. और वहीं पर I think I won't be surprised if Mudryk is called upon, and Madueke on the other hand is not a positive, and maybe Neto coming on the right hand side at some point in the game. But can he have that 80-90 minutes for a game? We know fitness wise we don't know. Lavia again hot and cold. Palmer, yes, he has been cold at times, लेकिन वो वाला goal भाई disallowed goal. Mikhail, just to repeat what you said, मतलब the goal जो न्यूकासल को मिला फ्रेमिंग वाला चीज versus the goal जो हमें डिसअलाउ किया गया पामर वाला goal, one can argue that definitely it's a matter of them not showing multiple replays. लेकिन अगर आप फुटबॉल देखे हो by the naked eye, that looked a goal bro, that looked a goal पामर वाला. मतलब I'll be very honest. I know people से भाई हमेशा बोलते थे चेल्सी being robbed, लेकिन रेफरीज अगेंस्ट चेल्सी आप देखो ना, मतलब फोफाना को येलो कार्ड मिला, क्या का येलो कार्ड मिला भाई, क्या येलो कार्ड था. यहाँ पर एल्मिरॉन किक कर रहा है उनको. आप ये देखो कि उन्होंने अभी हाइलाइट्स दिखाई हैं, सारी हाइलाइट्स दिखा दी, वो पामर वाली सिचुएशन हाइलाइट भी नहीं दिखाई. देखो तो you know कि काने हैं. I swear pisses me off at times, but क्या ही कर सकते हैं उसका. अब वही है, हमारे पास बेंच बहुत स्ट्रांग है, we need to definitely make a difference. But I don't know, Lavia, Enzo, Supreme Shesha जो बोल रहे हैं in the chat, Gusto, Kukurea, probably Gusto attacking wise actually काफी अच्छा रहा है, but Reece James has a goal in him. तो would you be लेकिन हमें पता है Reece James ही आएगा क्योंकि his fitness is not there yet, correct? He'll come off. यार अगर कुकरेला है तो आई थिंक रीस जेम्स शुड बी प्रोटेक्टेड समवॉट, बट देखते हैं हाउ द गेम प्रोग्रेसेस. आई डोंट नो इफ इट्स अ डिसीजन यू नीड टू मेक एट हाफ टाइम, but eventually yes he should come off. But Lavia to Enzo I would make it half time. Would you move James to some other position instead of taking him off? No, let it be. मतलब we have to be on the front foot. We are at Stamford Bridge. It's a 6-pointer, and I think हमें चाहिए क्योंकि Palmer has been clearly marked. Although for our goal, भाई what a brilliant turn by मतलब first ही Gusto resisted the press after Palmer. What a brilliant turn and through pass for Neto. लेकिन अब वो clearly Palmer थोड़ा बहुत hot and cold भी रहा है क्योंकि physically I think वो थोड़ा धावा बोल रहे हैं, और let them take on Palmer and Lavia and Caicedo while they are having the ability. I don't think enough passes आए into the final third from either of them. तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मे बी पामर पर पूरा दामोदार नहीं हो. एंजो फर्नांडिस kind of has that thing who is able to do. थोड़ा रिस्क है defensively, I get that, but I think 45 minutes, come on, Enzo Fernandez should be good enough against Newcastle, isn't it? सही है भाई, let's do it, let's go ahead. We need to keep searching for that go ahead goal.
So और वो एक one will not be enough. अगर हम 2-1 करेंगे वो वापस 2-all they have that in them as well. So we need to go find multiple goals. We need to keep the pressure up. I think अच्छा खेल रहे हैं, but slightly fresher legs अगर आ जाएं तो we can maybe impact the game again. थोड़ा सा वो size set pieces वगैरह में I think वो आपने जिस तरह बात की कि Jackson is not even trying to pressure the center backs. तो वो थोड़ा सा I think we can do better there. Do you see Nkunku coming in anytime soon? एंकुंको, हाँ वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, क्योंकि एक और एप्लॉय हो सकता है बिकॉज पामर इज क्लियरली बीइंग मार्क्ड और फिजिकलिटी दिखा रहे वो लोग. आई थिंक मडवेके, एंड यहाँ पर जो चैट बोल रही है, प्रभाव बोल रहे हैं, मडवेके हैज नॉट हैड अ गुड गेम, लेट्स एडमिट दैट, ठीक है. तो अगर एक चीज कर सकते हो आप, नेटो को ला सकते हो राइट साइड में, लेकिन व्हाई फिक्स इट व्हेन इट ब्रोक. तो नेटो चल रहा है लेफ्ट साइड में, व्हाई डोंट वी ट्राई एंड गेट पामर ऑन द राइट हैंड साइड एंड गेट इन Gusto/James on the right hand side to kind of be on the overlap, or you could have an Nkunku at cam. That is a good ploy, क्योंकि I think physicality के मामले में Nkunku over Palmer any day, probably just about. तो I think it kind of makes sense in tight spaces for Nkunku. Felix तो मैं नहीं देखता, क्योंकि Felix मेरे ख्याल से वो चुई मुई है, गिर जाएगा बार बार भाई, और फ्री किक्स में हम बेकार है अगेंस्ट न्यूकासल. तो I would rather I think Felix physicality तो नहीं लेके आता, लेकिन he does have that eye for the pass and the goal, let's say. तो कोई नहीं, we can bring him on late in the game. Maybe there's something he can add. But ये interesting आपने किया है कि अगर Madueke को let's say उतार लिया जाए और Palmer को out wide भेज दिया जाए right wing पे, then Nkunku can slot in the 10 role, and maybe that gives us slightly different dimension. But I think वो Madueke has been good when he has gotten the ball. He has put in a cross. I think वो failure Jackson का है more than him to actually find the cross and put pressure on the center backs. नहीं वो तो है, but what I'm saying is still predictable. जो सैंचो हो रहा था लास्ट गेम इन द लेफ्ट साइड, ऐसे नहीं था कि बहुत ही बेकार था सैंचो. हाँ ये है definitely. So maybe switching it up might help. Let's see. I think Palmer had an okay game. It's like you were saying. He had brilliant moments. Sometimes he's not part of the game, but that's not for his. He's dropping in very deep to support Lavia and Caicedo. So वो ठीक है. Sometimes the ball isn't in his area, and but जब उसके बाद ball आया, I think he has been able to play it out and play it out well. And same for Reece James. Reece James has played, and I think shout out to Jackson as well. कि वो hold up play अच्छा कर रहा है कि when he's when Reece James looks for him, he holds up the ball, gets it out wide, and then we're back in their box. So वो एक अच्छा access बन रहा है. Just saying कि वो the question mark था on the Reece James experiment at left wing. So while defensively, yes, it is kind of leaving us a little bit open, I guess is the word. But on the ball, I think Reece James is making some good passes from there. It's giving us something to play out from. अब आप अगर Reece James को right side पे ले जाएंगे for an overlap, I think that still works with Palmer. But then you have to bring on Cucurella for sure. तो बेसिकली व्हाट हम ये कंक्लूजन पाए, चैट और पैनल भाई, चैट ओपी हो जाए इन द हाउस एज वेल एज मिकाइल ओपी गाइस. आई एम calling it Lavia comes off, Enzo Fernandez comes in, and that is where you need the legs of Cucurella even defensively in midfield. So I understand and agree with you. So Cucurella comes in 100% for a Gusto. Malo Gusto comes off, and Reece James, maybe it's the first game जहाँ पर 90 minutes खेले. Let's hope for the best. लेकिन is it risky? I don't know, considering it's a busy couple of months coming up. Let's see how it is. I would be happy अगर उसको उतार लिया जाए. He had a good run today. I think it's time for Cucurella to come on. Gusto is playing okay, लेकिन थोड़ा we have to have a bit more presence, I guess, in the midfield portion of the play. वैसे तो I trust Gusto to do the job, get the job done. लेकिन ठीक है, वो physically he's not a big presence. So can he be a big presence just in the energy itself? That's what remains to be seen. It must be said कि गोल गुस्टो की साइड से ही आया. जब एंड में गोल आया तो गुस्टो की साइड से आया. तो could he have done more? Should Neto have broken up the play? Should Lavia have मरेस्का को ब्लेम करूंगा ना, क्योंकि नॉट मरेस्का को ब्लेम करूंगा, लेकिन मरेस्का बॉल को, because Gusto was not, मतलब was he supposed to be there? Again, technically yes, you would argue, but
It's kind of harsh on Gusto, I thought. मुझे लगता है even before that Lavia का challenge, and then one can almost argue that Colville did not mark. नहीं, Lavia का challenge was kind of soft. He kind of pulled out almost of the challenge, did not want to get a foul call. But then Neto had made a good run to track the play, but then Neto also did not challenge. So like that was another opportunity. Neto also shied away. कि यहाँ पे I don't want to give a foul away. I agree with that. So that's where you need your pivot to actually break up the play more than a winger. Okay, you have to get the ball away without giving the foul away, right? So the tackle has to be timed well. The tackle has to be precise. And that's the role of a pivot, right? कि आपने वो danger areas में ball भी break up करना है and you don't give away the fouls. So Neto, I think, shied away because last game I think we made some mistakes like that in the Premier League where we did give away fouls in dangerous areas and we paid. We scared to get yellows, yes, but somehow we always get a yellow. ये भी सही है. Good comment. Yeah. तो भाई मैं तो conclusion पर आ गया हूँ. I will right now make 3 changes. Yes, it's crazy to sound panicking at 1-1 at Stamford Bridge against Newcastle है, इसलिए मैं तो नहीं करना चाहूंगा very late change क्योंकि मुझे लग रहा है draw आने वाला है. In that case, I would bring in Nkunku, Kukurea and Enzo Fernandez right away. मैं लाने वाला हूँ off Madueke, off यहाँ पर Lavia as well as Gusto. I would take the risk of actually playing Reece James actually at right back. Because again, he has a goal plus on set pieces. I think Reece James is the best corner taker along with Cole Palmer. That's the reality. I don't think Enzo Fernandez I'm sold on. I know Gaurav बोल रहे थे even about what do you think? You're talking about Gaurav was saying about Mudryk. Mudryk probably is an option. वो probably वही है क्योंकि Neto is doing well on the left wing. I thought Livramento versus Neto has probably won that battle, but Madueke versus Hall, arguably Hall has won that battle. So I think that's why मैं वहाँ left side नहीं change करूँगा, right side में करूँगा. But 50-50 जा रहा है, लेकिन but I can understand what you're saying. Okay, let's try something different. And in the team spirit, it's not a mark against Madueke if he comes off. It's just that the team needs something different. So let's try something different. Performance Exactly. 50-50 थी. No issues with the performance today. And remember, जब Neto signed for Chelsea और जो first few games खेला था ना, he just played 45 minutes and all. And वो एक reason था because we were building up his fitness and all, right? लेकिन there were games जहाँ पर just tactically we took him off, and that doesn't mean that the person is bad or something. Madueke ऐसा नहीं बोलूँगा बुरा है, but I think Lewis Hall, we have to admit that I think I still believe he really grew into the game. और वहां पर क्या चाहिए, someone who kind of can go both ways, and Neto is that probably. So shifting on the right hand side at some point makes sense. But even Palmer could do that. Palmer again, जैसे हमने शुरुआत में बात किया था, मैं क्या last game में बात किया था, one ploy could be that Palmer going on the left hand side क्योंकि Palmer is clearly being marked physically. और again, good point. हमारे एक सेकंड में देख रहा हूँ वार्म अप कर रहे पीपल यहाँ पर. आई डोंट सी अ न्यू फेस देयर. ओके, सडन से मिकाइल किधर चले गए? I'm right Did I remove you? I don't know what I did. Anyway, so अंकित भाई मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा कॉफी ब्रेक ले लूं. हाँ, please. Before the whistle. Thank you. Sure. चलो guys, सब लोग in the chat, do not forget to hit that like button. Big up to Abhishek, Harsha, Shubhrank, Atharva, Frozen, Prabhav, Drew, जो भी लोग देख रहे हैं, Shanaya, of course, Rishabh, Supreme Shrestha, Gaurav, SS. Let's get in, guys. Let's like and subscribe and retweet if possible. Pudan in the house and Rohan, Evolution Gaming, Lux, Vijay bhi dikh rahe, mujhe Aman as well. I hope I've not missed any names, but we'll be there till the end and hopefully we get a win. Ho jaye. Chelsea. Come on, Chelsea. Oh, when the Blues go streaming in. I wanna be in that number. Oh, when the Blues go streaming in. Carefree. Wherever we may be. Kick off ho gaya, guys. We are the famous CFC. Predictions in the chat ho jaye, bhai. Predictions in the chat ho jaye. Bhai, sab log jo opinion मांग रहे हैं when the kickoff has happened. We are here to the watch along. We'll be giving opinion when there's break of play. We do pre-match, we do post-match, we do half-time analysis. Please join us. Then hit that bell icon if people who nahi mil raha hai notifications. Hit that like button again. Lekin predictions in the house, guys. Predictions kya bol rahe ho? I'm going to stick to my prediction where I have a bad feeling. I don't know why. I feel that it's a bad feeling wala game. That means dropping points as a draw at best. Lekin I hope and pray I'm wrong.
I hope I'm totally wrong. क्या बात है? People dropping? कोई नहीं. We'll be here. यहाँ पर मडवेके ट्राइंग टू बीट हॉल बट नो नहीं कर पाया. तो भाई जैसे ही मिकाइल अपना स्विच ऑफ कर रहे कैमरा में नोटिस किया वो 30 लोग ड्रॉप हो गए. वाई? तो आप लोगों को मेरा चेहरा पसंद नहीं है? इज दैट व्हाट इट मींस? Obviously, we all love Mikhail, and he's coming back in 2 minutes. But everyone has a coffee break, guys. Hit that like, subscribe, and share the stream. Retweet. लेकिन 38 में हमें वापस से टाइम स्टैम्प करना है. यहाँ पर पामर ने बॉल जीता है. पामर शॉट लेगा क्या? पामर शॉट लेगा भाई. ले लिया. पामर इज Cole Palmer wives, guys. What a goal भाई. Brilliant ball one, and it is Cole Palmer in the house with a shot early in the second half. हमने लीड ले लिया है. Chelsea. What a shot. Arguably Pope could have done better, but we are happy. नहीं क्या? Carefree wherever we may be. We are the famous CFC. Get in, man. Get in again. Nicely ball one. Was it Colwell and Lavia जो ball जीते थे? I believe so. And then it was Cole Palmer in the near post. Definitely beating. Yes, Colin Lavia doing well. And Pope beaten. And I must say, Shar has had a bad game defensively. Probably backed off a bit too much. But what a shot, bro. Cole Palmer, man. It's Cole Palmer. Get in, man. Get in, man. इतना जल्दी गोल हो गया. I did not anticipate it, लेकिन of course I would love it. And can I change the prediction, guys? Can I change the prediction? लेकिन hopefully हम अभी concede नहीं करें. In fact, third goal मारे because we know what we are. We know what we are. You know that absolutely. नहीं क्या? चलो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ people in the chat क्या बोल रहे जनता. तो मरेस्का ओपी हो जाए. The fact that we are definitely a team जो patient है and trusting our members. और second half में yet again a brilliant start. It is not a coincidence yet again भाई. ये चेंज हमने देखा वापस से. मडवेके on the ball. मडवेके beating his man twice. Caicedo should have taken the shot. He missed it. I don't know why. Hesitant था. और यहाँ पर क्लियरेंस आया है न्यूकासल द्वारा. While I've just retweeted the link, guys, for people on Twitter can retweet, that will be brilliant. लेकिन it's Cole Palmer times, guys. मिकाइल जुड़ गए. मिकाइल अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? 2-1 लग रही है. Oh, Mikhail missed the goal. अरे मैं दोबारा जाता हूँ. Mikhail missed the goal, Should I go again? guys. I'll go again. I'll be right back. Colwell injured लग रहा है भाई. Meanwhile, Colwell गिर गया है ईजा के चैलेंज पर. और I'm just coming to it. मैं टाइम स्टैम्प फिक्स कर देता हूँ guys in the chat. लेकिन Isaac, was it a red card moment? No, probably not. लेकिन it was kind of naughty है भाई. Isaac बोलना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर टाइम कैसे हुआ? गोल बता दो भाई. मुझे कोई नहीं बताएगा. मिकाइल का भाई. मिकाइल कोई नहीं बताएगा. तो basically what happened is they had put a ball in midfield और Caicedo उसके पीछे था. लेकिन I thought they lost the ball. In fact, won by Colwell. Colwell पीछे से एक पैर डाला साइड से. Won the ball. Lavia with the second ball gave it to Palmer. Palmer basically free space. I don't know how he got it. लेकिन free space. Shar backed off. लेकिन near post में he beat Nick Pope. So it was big nice brilliant finish by Cole Palmer. अरे यार what a यार off the post. भाई नेटो आप फिर से 2 सेकंड आगे हो मिकाइल. लेकिन नेटो with the post, man. Is it the point जहां पर हम रिग्रेट करेंगे? Hopefully not. Thank you everyone. Again, big ups to each and everyone. Do not forget to hit that like button also and share the stream. Yeah, that should have been a goal, man. Oof, inches. Yeah. Good header. I don't think excellent cross. Direction issue था, but ठीक है. First time cross था. I'm liking what Madueke is doing today in terms of service. He's providing a lot of service, and that's what you want from whoever's playing in that position. और यहाँ पर मरेस्का को भी मिलना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर आज क्लियरली लग रहा है विंगर्स ना डायरेक्ट है आज ज्यादा. Yes, far more direct. This is well said, and we must give a props to the coach. कोई नहीं. नेटो भाई clearly the man of the match as of now. Hopefully Neto has such games again and again for us, man. Again Neto का वही लगता है थोड़ी injury. This playoff, come on Palmer. Referee ने pass foul भी नहीं दिया. भाई free kick है यार. दे दिया. Cole Palmer भाई, seriously man, what a guy.
Guys, भाई 175 likes is what we are aiming on the stream. आ जाइए सब लोग in the chat. आपको पता ही है what's the drill. अरे भाई कॉलवेल नहीं बच गए। नहीं, this is called Mosiji suicide. Suicide. This is what यार Colville कर सैंचेज रहा करे तो ठीक है, कॉलवेल क्यों कर रहा है यार? है। सैंचेज का क्लियरेंस देखा, तंग आ गया कॉलविल। हाउ डेयर यू ब्रो, किक द बॉल लाइक हाउ आई किक्ड, और डायरेक्ट बाहर फेंक दिया। सैंचेज मैन इज अ कॉमेडी, मैन इज अ कॉमेडी ब्रो, फुल। भाई क्या करें I मैं? swear. अरे भाई जान, what a tackle by Lavia, we win the ball, Jackson coming away, That was a come proper challenge, on ना? Two ways. yeah, जैक्सन मडवेके को देगा, मडवे के पीछे दे दिया थोड़ा सा, yeah, लेकिन कोई नहीं, come on, मडवेके just all gave the serious ball bro. back. नटमेग मडवेके, नॉटी बॉय, नाइस, लेकिन कोई नहीं। We should have done more with it. I think he had the shot, अमन, ही उसका बनता था शॉट। अच्छा यहाँ पे जब वो आप यू स्टैंड विद द बॉल ना, उसके बाद वो नेटो में है बर्स्ट ऑफ पेस टू अगेन गो पुट द बॉल इन बिहाइंड एंड रन इन बिहाइंड, वो मेडवेके में वो एनर्जी नजर नहीं आ रही आज। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हैव गुस्तो ओवरलैप, अंडरलैप के जगह हैव हिम ओवरलैप, आई थिंक इज नीडेड, आई जेन्युइनली बिलीव इट। अरे भाई, वी वन द बॉल बैक। Lavia just decided not to do anything with it. मैं देखो लाविया इज बैक टू प्रॉपर वीक इन वीक आउट वाला मैच अभी, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि लाविया और काइसेडो चलो फिर भी खेलता है दोस यू नो एम्बिशियस पासेस। लाविया हैज दैट एबिलिटी लाइक एनीथिंग, समवन नीड्स टू जस्ट कम्युनिकेट टू हिम। नहीं वो अभी आई थिंक ही जस्ट नीड्स टाइम, अंकित भाई, ही विल ग्रो इनटू हिज रोल। वो अभी ब्रिलियंट पास, गुस्तो क्या करेगा? अरे भाई व्हाट अ नहीं पास यार, रीच जेम्स रहना चाहिए था वहां भाई। अरे यार नहीं यार, यार, गुस्तो की शूटिंग वैसे काफी कहते हैं ना हॉरिबल है। आई मीन आई से इट विद लव, लेकिन काफी फजूल शूटिंग करता है। हॉरिबल मैन, व्हाट अ शॉट वाज दैट। एक सेकंड ना, मैं यहाँ पर मैं बिस्किट रखा था भाई, मैं जोश में गोल हो गया तो बिस्किट नीचे गिर गया। अंकित भाई अगर ऑफ कैमरा चले गए तो समझ लेना बिस्किट की शामत आ गई है। Alright, मैं यहाँ पर हाफ टाइम मेरा भी, मैं बोला स्नैक टाइम कर लेते थोड़ा सा हाफ टाइम में। नहीं जरूर, नो वरीज, यू कैन टेक अ मैच ब्रेक शुरू इफ होते यू ही नीड। गोल हो गया ना हाफ टाइम के बाद में ना, मैं भाई अरे भाई नेटो विद अ बर्स्ट ऑफ पेस इन बिहाइंड, फाउल एट द कॉर्नर ऑफ द बॉक्स, नहीं दिया रेफरी ने, साला रेफरी। I guess he got the ball, yeah, but Neto did pretty much everything he needed to, but except win the foul. कोई नहीं, आएगा भाई, एक और आएगा, एक और करना है भाई। वी नीड टू स्कोर वन मोर, आई डोंट थिंक इट्स इनफ, वी नीड टू स्कोर वन मोर फॉर श्योर। अब मेरे को जाके ढूंढने पड़नी है हाइलाइट्स, कहाँ से जाके मैं गोल देखूं। हाँ बेसिकली कुछ नहीं यार, किक ऑफ हुआ था जस्ट, एंड सिमिलर टू ऑलमोस्ट कौन से मैच में हुआ था, 2 मैच पहले भी एग्जैक्टली वही हुआ था ना। मैं हाफ टाइम के से पहले बोल के गया था कि वी नीड टू हैव सम बर्स्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर हाफ टाइम, तो लकीली वो हुआ। I love it. Not going to complain. This is amazing. This is what Maresca has brought to this team. Arguably, for the first time ever, a Chelsea team that comes out of the second half and consistently finds Jackson goals. OP. Jackson and Caicedo kept the ball. Lavia yellow by the way. Lavia yellow किस चीज का? I missed that aspect actually, but अरे जी फोफाना Lavia खुद भी बोल रहा है कि टाइमिंग हो गया है, सब्स्टिट्यूशन। Okay, Reece James on the ball. Let's see what happens. अच्छा कुकुरेला भी नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं किए हमने। अब आएंगे चेंजेस मेरे ख्याल में इन द नेक्स्ट 5, 7, 10 मिनट्स। अरे भाई सैंचेज बॉल दे दे भाई, तू ना कर। Maresca needs to see this, that defenders and midfielders are not getting goals. This is a concern for me. सही नहीं है लेकिन है। सेट पीसेस से एंड अरे भाई ये क्या कर रहा है फुफाना? कम ऑन, somebody come in to help him. Fofana did well, I thought. क्या बॉल दे दिया? वो did well. वो nobody, everybody was ball watching. Somebody should have come in on a 2-on-1 to help him out. वो सारे देख रहे हैं खड़े होकर। लेकिन I thought वो अकेले ना। नहीं, he did well to hold it off. लेकिन वो 10 seconds everybody just ball watched. Nobody came in to help him. I think येलो कार्ड मिलने के बाद तो लाविया येलो कार्ड
सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए अब तो, और भी 55 मिनट्स हो गए. हाँ, मेरे ख्याल में रेफरी डिसाइडेड कि भाई बहुत हो गया, अब तू जा. Lavia won the ball, guys. Madueke gets it on the right wing. Madueke, run in. Why are you slowing down? Trying a through pass for Gusto. चलो. Lavia is good, but issue think- है Lavia under the shell खेल रहा है, in the shell खेल रहा है. That is an issue for me. I still believe that Lavia has 2 gears, not 1 gear. 2 gears और है Lavia के पास. नहीं, मिकाइल भाई. अभी नहीं 100%, बट आई एम इन नो रश. अंकित भाई, गिव हिम टाइम. अभी वो लॉन्ग टर्म इंजरी से आ रहा है. गिव हिम टाइम. अभी ये सीजन शुरू हुआ है, 7th 8th गेम है सीजन की. गिव हिम टाइम, ही विल बी बैक टू हिज लेवल. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि the whole Enzo को reason ले of आओ. Lavia being there, I thought was the physicality and the calmness that he brings, and वहीं से I think we kind of lost the goal. Physicality नहीं, I think Lavia is not a physical player. Lavia is a press resistant. Compared to Enzo, press resistant player है. So I feel better with him in midfield on the ball than Enzo. Yeah. I don't want to say better than Enzo, but Enzo is a different type of player. Let's just put it that way. So Lavia is a more traditional pivot player, I think, than Enzo probably is probably what one wants to say. बाकी ये है कि Enzo is more kind of like a hybrid 6'8". भाई थ्रू बॉल आया लेफ्ट साइड में. गोल आ रहा है भाई, गोल आ रहा है, गोल आ रहा है. गोल लाइन क्लियरेंस. रीस जेम्स ओपी भाई, अपना कप्तान ओपी हो जाए. रीस जेम्स ओपी मैन. बॉल अभी भी क्लियर नहीं किया. बॉल अभी भी क्लियर नहीं किया हमने. द डेंजर इज स्टिल ऑन. Malo Gusto fouled clearly. Good by Malo Gusto. He kept his feet. Interesting, nice to see. Pranav not bad. Could be better. That was a big save. That was a Thiago Silva type save on the line. बिल्कुल. Goal line clearance by Reece James. Big player mentality. अब वो ये ना वन एंड यू नो एंजो मेरेस्का knows of course more than us, much more in fact. लेकिन यही पॉइंट में अगर गुस्तो होता, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर, you could have questioned, right? Defensively, Gusto, I still think he has one more, level to go in terms of the surety about his position. लेकिन वो ये कुकुरिया भाई अभी तक मुझे पता नहीं, 58 मिनट्स हो रहे हैं. कुकुरिया और एंजो फर्नांडिस, आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट विद जस्ट अबाउट हाफ एन आवर टू गो, दे आर स्टिल नॉट देयर और thereabouts. आई थिंक दोनों रात को वो मेरे ख्याल में बंक मारते हुए पकड़े गए. पार्टी कर रहे थे. कुछ तो हुआ है भाई 100%. आई आल्सो नाउ आई एम थिंकिंग, क्योंकि स्पेशली लाविया येलो कार्ड पर है और हमें एक और गोल चाहिए टू काइंड ऑफ गेट दैट 2 goal cushion. और रीस जेम्स इज अ नो ब्रेनर ऑन राइट हैंड साइड. लाविया व्हाट अ बॉल ब्रो, व्हाट अ बॉल. लाविया का नाम लिया, सुन लिया मेरे को और बोल रहा है भाई मैं सुनाता हूं इसको, सुन मेरा डिस्ट्रीब्यूशन देख तू. मेडवेके की फूक निकल गई है. आई थिंक ही नीड्स टू कम ऑफ. नेटो क्रॉस, नाइस गोल आना चाहिए. ग्लांस हेडर फ्रॉम गुस्तो भाई. यार ऑलमोस्ट ओपन हेडर. कम ऑन गुस्टो, कुछ कर दे यार. Defended. But I like that. Gusto getting the box, Mikhail, with the header, would have anticipated. Okay, so that's what's going on. पता क्या हो रहा है? Gusto is playing the underlap, and that's why Madueke is holding the position. When he comes on the ball, he doesn't drive because Gusto is making the underlap. कह लो. अरे भाई बॉल वापस गोली को दे दिया. मैं टेंस हो जाता हूँ जब हमारे गोली के बाद बॉल आता है. गौरव तो बोल रहे ब्रिंग मुड्रिक ओवर द टॉप पास है यहाँ पर पामर के लिए. पामर फर्स्ट टाइम टच भाई. या बैड टच. लाविया काइंड ऑफ हैड द बॉल बैक. मडवेके भाई सेम और चीज मत कर दे भाई. नहीं यार, यू आर राइट. मडवेके इज नॉट. मडवेके हैज टू कम ऑफ. आई थिंक वो ही इज ऑफ द बॉल. मन नहीं कर रहा बोल रहे मडवेके. अब he is just cycling the ball back every time he gets the ball. I think Luis Hall psychologically has had a win over Madueke. It's so surprising. Lavia surprisingly येलो कार्ड के बाद में बेटर खेल रहा है मिकाइल. पॉच वाला सीन हो गया तो. हाँ, थोड़ा सा वो वाली वाइब आ रही है कि सारे येलोस को खिला रहा है वो जबरदस्ती. कॉलवेल ट्राइंग अ हाई बॉल, लेकिन लिवरमेंटो देयर. बैड पास. यस हर्षा, आई एग्री विद यू 100%. मडवेके बी लाइक देखो भाई खड़ा हूँ किस्मत के भरोसे. पुदिन बोल रहे चैट में. नहीं, this is not good. We are now taking our foot off the pedal. We are letting them come back into the game. I can see the same. Mark my word. Mark my word. क्या है तू इतना चुई मुई है क्या? Come on bro,
Should have won it easily. Madueke the ball. Not good. We're just inviting them to come into the game for no reason. No reason. Loss of concentration. This is where the manager needs to make the changes now. Chelsea. अमन बोल रहे लाविया has outshined Caicedo in many games. आज मैं नहीं बोलूंगा. आज second half yes, the first half not really, if I'm honest. First half Caicedo had a better game, but हाँ, दोनों midfielders could have had a better game generally. Keep the ball, guys. Keep the ball. Neto needs someone to overlap sometimes as well. Keep the ball. We are missing Kukurea, bhai. We are missing Kukurea. Keep the ball. कोई मसला नहीं है. Keep the ball. Madueke looks like Rafa Leao playing like Anthony today. Harsh bhai, lekin I see the pun intended. Second half में in the last 10 minutes he's looking a little bit tired. By the way, I don't know how many of you all saw that interview of Balde. Yeah, Balde ने बोला Madueke is one of the what a ball भाई Reece James वाला. लेकिन Balde ने बोला Madueke in my youth days he was the most difficult player I played against. While Madueke was a PSG. Interesting. नहीं, so again there's a theme कि वो consistently वो जो pass दी है उसने James ने, तो Gusto was trying to meet it. I mean it's a joke, लेकिन चलो Gusto was trying to meet it. So there is some instruction from the manager to Madueke कि तूने नहीं run मारनी into the box. Gusto will make the run. But that is the whole point, Mikhail. Should we Gusto among the 11 players is the last player I would want there. 100%. मैं भी वही कह रहा हूँ कि like it's comedy कि जनाब Gusto is expected to meet the header into the box. Gusto कहाँ पे होता है? Hotstar क्या हो गया भाई? All of a sudden. कोई नहीं, they're just passing the ball back across the. नहीं यार, Hotstar वाले घंटों we are facing technical issue आ गया है. आप commentary दो Mikhail meanwhile while it comes back. नहीं है. They are just back passing, trying to play out from the back. We have won the ball, but we have lost the ball in midfield. And Newcastle on a breakaway. और shot आएगा. बच गया. Shot आ गया और चलो कुछ bodies. Oh यार, this is a yellow. This is a yellow. This should be a yellow. Who lost the ball in midfield? Was it? यार ये I couldn't tell honestly. Could have been. Fofana. भाई Fofana क्या कर रहा था इतना आप? Could have been Fofana. Fofana था या Neto था? One of them that lost. It was Fofana. I was surprised. ये थोड़ा सा modern football में ना ये problem है कि we try to keep the ball in play instead of Gordon को दिखा रहे हैं अभी screen पर. Can anyone hear and tell me what is it that they're talking commentators, because I'm not hearing commentary. Gordon, why is he not there? I'm wondering why. Because Gordon को दिखा रहे कुछ तो मैं भी वही कोई पूछता हूँ if anyone is hearing that. Cole Palmer ने freeze कर दिया Hotstar का server. पुदिन बोल रहे हैं nice one. टोनाली को येलो मिला है भाई किसी बात पे. Tonali was trying to stop Colville from taking the quick free kick. Fair point. Fair to give referee a thumbs up for a change. He saw that. Nice closing from Madueke, only for Newcastle to get a throw in though. You're right actually. Madueke का देखो जब byline पर आती है then he kind of wakes up ball. Otherwise he's not bothered because he's been asked to kind of focus on the byline. Maybe. हाँ कई दफा ये होता है कि the coaches give players jobs to do, right? तो वो as fans we get frustrated, but maybe they're just following instructions. Don't know. I'm not going to be harsh right now because we have been leading the game. We just have to score one more goal now. And abhi Newcastle is again coming in. Gusto isolated. Oh boy, this is free kick. Madueke yellow card. भाई बुरे पोजीशन में फ्री किक दे दिया, हॉल को गिरा दिया है. I can again vouch for Hall, bro. Hall is doing well in my opinion. Referee कह रहा है कि इसमें shoot है. Guys, 3 changes हो जाए भाई सब लोग. Are you agreeing with me? Lavia as well as he's been good. He's on yellow, so risky है मामला. Newcastle गंदी टीम है in terms of that midfield tackles and shithousery. I would like Enzo to come on. I would like Nkuku to come on and Kukurea, bro. ये तीनों लाओ भाई, मैं तो बोलता हूँ. I think Madueke needs to come off with दिमाग भी उसका. I think he's got the brain fog. Referee के बिल्कुल सामने he did the shirt pull. बिल्कुल referee के सामने.
The closest person to the two of them was the referee, and he just pulled the guy down in front of the referee. So that means he's done. टोनाली लेगा फ्री किक और ये मारता भी इस पोजीशन से. By the way, Shar could also take it for all we know. Right footer है ना. Hall, I'll be surprised if Hall takes it. लेकिन knowing that Chelsea are bad in headers, maybe they are going for the second ball. Sanchez क्या anticipate कर रहा देखते हैं. Mudryk could come on, but I thought Nkunku probably makes more sense in my opinion. क्योंकि I still want an extra goal scorer on the pitch. 2-1 is very too close to call वाला मामला है. डेंजरस है भाई, डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. नहीं यार, सैंचेज की पोजीशनिंग डर लग रहा है. ओह, जस्ट अबव द बार मैन. गोल किक है भाई. चलो, शार टुक इट. शार हैज नॉट हैड अ गुड गेम टू बी फेयर टू or to be just real. Shar ना, to be honest, I rate him. I really rate him. आज अच्छा नहीं है किया है. Misha is on, bro. It is Madueke going off. Mudryk is on against Newcastle, and especially after the midweek game that he had. The Mudryk, of course, Newcastle, I think it's a good ploy also. Fair point. Because Newcastle are 1 goal behind, so they will definitely go for it. Or space in behind milega. So Neto and Mudryk. Tasty, So bro. Mikhail, that sounds tasty. Tasty. Is Neto going to come on the right? Yes. That looks very tasty, man. If you're attacking. Yeah. I like it. This is proper attack winger में. I like the wing play, bro. I like the wing play of Maresca. जो tactic अपना रहा है ना. लेकिन surprisingly, Lavia is still there on yellow and he's still there. Enzo Fernandez, कुकुरिया कुछ गलती की है क्या? I'm just wondering what's wrong. I really wonder. I know second game against Newcastle in the cup. वो लोग 3 changes किए by the way. Almiron, Tonali and Barnes, all 3 coming off. Murphy, Longstaff and Willock coming on, guys. देखते Eddie Howe, does he have a plan up his sleeve? Eddie Howe in pressure, yeah, one can argue they are not in the top 10. Remember, I think West Ham and Newcastle, considering the fan bases they have, they expect better from their club, especially Newcastle after investing. Palmer heavy ball, bro. इतना heavy ball क्या? Mudryk को क्या समझा है? Palmer से Mudryk आ गया भाई, वो तो पहुंच जाएगा. That was a shithouse pass. That was a pass like go get it. I swear Palmer wouldn't have made इतना strong pass if it was not Mudryk. I know that. नहीं, उसने उसको कहा जा भाग पकड़ ले. ऐसे तो मुश्किल से पास. You know what? एक तो बहुत कम पास करता है Palmer Mudryk को. Whenever they both have played together, I've noticed that. नहीं, वो DM करे मुझे. shithouse की लगी थी उस पास में. That was not meant to be reached. अरे भाई जो भी लोग चैट में है ना, आप देखिए ये जो क्वेश्चन पूछना है एवोल्यूशन गेमिंग लक्स, हम काफी सारा चीज बात करते हैं ना मेंबर्स ग्रुप ब्रो. There's a membership which is again Mikhail is a member. Sanchez gave the ball away once again. Sanchez gives the ball away. We discuss a lot of things, guys. So these are things which will be answered then in the groups. So you know what to do. DM करें, हम ऐड कर देंगे members who are not there in the group on Instagram और Twitter. Bottom line description है हमारा लिंक. सैंचेज को सब करते हैं बोल रहे अमन. एंजो फर्नांडिस आने वाला है, बात कर रहा है. एंजो टॉकिंग टू एंजो गाइस. इट्स हैपनिंग अगेन. को दिखा रहा है, कह रहा है कि that's the football pitch. You want to be on there? Like he should have already been there. I don't know why he's still sitting in the bench. We wasted a change there. Basically, we should have put him on. This counts as a separate change. अभी 2 मिनट के फासले पे you're doing another से क्रॉस आएगा, नो गोल आएगा उनका. बचा लिया. रीस जेम्स ओपी हो जाए भाई. द चैट रीस जेम्स ओपी हो जाए. अगेन ऑलमोस्ट अ गोल लाइन क्लियरेंस. रीस जेम्स बचा लिया. सुपर पोजीशनिंग बाय अपना कप्तान रीस जेम्स, द गाय हु वाज सपोजिटली फिनिश्ड. 2 बार ऑलमोस्ट गोल लाइन क्लियरेंस किया भाई. Brilliant stuff and very bad defending. Gusto is not good defensively, bro. I have to say, allowing crosses yet time and again. Gusto is not good defensively. He has to improve big time. Someone needs to tell him not to allow crosses. Ball के थक गए. Isaac with a decent header, heading it down.
लेकिन how did they get so easily into the box is a bigger question for me. Crunch save, clutch Stamp save. scores, by the way. Somerville scoring against Manchester United. Hope it stays that way. But you know, Manchester United, I still feel that they will score an equalizer. Let's see. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. भाई ये पता नहीं मुझे गंदी वाली फीलिंग ड्रॉ वाली फीलिंग आ रही है. We have to kind of go on the front foot now. Why is Newcastle having more of the ball? Come on. Control करो. Don't just clear it. You don't need to clear that ball. भाई कौन था? कॉलविल था कि फफाना था? You could have easily touched and had a pass going इस बार. Control करो भाई. Don't panic. Panic कर रहे भाई कैल अभी. Yeah, I agree with everything you're saying, Uncle bhai. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. Seriously. अभी देखो बॉल बाहर गई है. मिसमैनेजमेंट है पिछले 5-7 मिनट की. The change that was made should have included Enzo. We should have switched tactics completely. अब we are going to make a second change. I don't know why we had to break up the changes in like 2 minutes, 3 minutes के फासले पे. Like they should have just, like there was no reason to break it up like that. I don't get it. Like because you can only make 3 changes, 3 substitution breaks. 5 changes होते हैं लेकिन 3 breaks में करने होते हैं. तो आपने 2 breaks यूज अप कर ली टू मेक अ चेंज जो कि हमें पता था पिछले बार में भी होना चाहिए था. So anyways, he's on. Fernandes is on. Lavia is off. चलो भाई, hopefully Enzo Fernandez is the ball or two wing. भाई Enzo Fernandez distributing with Mudryk and Neto on the wings. Wow. Oh, that sounds too good to be true. That sounds too good to be true. But we have to be careful defensively for sure. Now that Lavia has gone. Sanchez को बोल सकते चोमू. Sanchez उर्फ चोमू. अमन, if that's the doubt you have. कोई नहीं, अपना ही बंदा है. Nice pressing by Enzo. Nice. I like it. I like it. I like what I see. Neto as well. लेकिन throw in जीता है हॉल ने. Zola in the house, guys. Zola at Stamford Bridge. The legend, the player of the century before obviously the recent legends took over. For people who do not know. मतलब Hazard के पहले I think we can safely say Zola was the best Chelsea player, even arguably even now ever. Palmer, Hazard. Palmer will get in the conversation after a few years, but अभी के लिए Hazard is probably the best. हर era का होता है ना, तो वो before the Roman era, he was the player. Yeah, as in what a player, man. What a player. Ref did not give the foul, of course. बार-बार कैसे ओपन कर रहे हैं वो लोग भाई अपने राइट हैंड साइड से. काइसेडो भी हेल्प कर रहा है अभी. They are opening us up like anything on our right hand side. तो कोच देख रहा है. But anyway, nice. Gusto keeps the ball. Enzo Fernandez के हाथ में लगा है कुछ. Is he injured or something, or is it just Tushan? Good question. Maybe that's why he didn't start. I hope so, क्योंकि I was very surprised. 20 minutes for Enzo Fernandez against Newcastle United at home. Wow. I was expecting at least 35 minutes, but ठीक है. So that's the injury that we did not know about. Yep. Probably Sanchez with the ball. अरे भाई वो चिल्ला रहा है प्लेयर पर. कैन यू बिलीव इट? बॉल को बाहर फेंक दिया बंदे ने. कह रहा है कि तू होगा क्यों नहीं. और why weren't you 6.5, 7 feet tall? मैंने जब पास शुरू किया था तो you should have started growing. I can't take it, bro. The Sanchez एक कैरेक्टर है भाई. अरे भाई सीढ़ी लगाओ इसके लिए भाई. ये सीढ़ी लगाओ इसके लिए. अरे भाई we have lost the ball. अरे भाई गड़बड़ हो गई भाई. गोला कॉलवेल बचा लिया. काइसेडो ने बचा लिया भाई. कोई कॉलवेल और काइसेडो. What was that भाई? Reece James with a mistake and Levi Colwill saved our ass. Sanchez totally beaten. Sanchez in no man's land and भाई जान. And Colwill saved us. Fofana की गलती थी, not Reece James. Reece James wasn't Panic even there. station. Panic station. Yeah, it was Fofana actually. You're right. But panic stations, obviously, goalie in no man's land and wow, बच गए भाई. अब ये कॉर्नर आ रहा है. Let's see. Let's play. Hey, someone pushed our player on the box, bro. Referee अंधा है क्या? Was it Neto कि Mudryk? Neto.
फाउल था क्या वो फोफाना पर? पता नहीं, आई थॉट फोफाना probably should have not shown him his side. फोफाना, आप देखो मिकाइल, हर एक गेम में एक मेजर मिस्टेक है फोफाना में. Yeah, no, I have to agree, but yeah, the गोली की भी कोई उसमें वो नहीं थी, लेकिन he was just kind of, I don't know what he was doing. Isak, bro, what a player, man. I'm still surprised. How is Newcastle, with all due respect to them, keeping hold of Isak? What a player, man. आपको याद है यूरोज, पिछले यूरोज में, not this यूरोज, पिछले यूरोज में you had marked out Isaac as a Yeah, I remember as a Isak prospect. scouting और for उस Chelsea. वक्त हमने किया था conversation proper ये थी Isak. कि is it too early? Is he going to be actually a good player? But I think he has shown कि he is definitely a decent player. I think अरे उसी समय हम भाई चौमिनी की बात काइसेडो करने की करते बॉल दे दिया, गुस्टो कम ऑन, कुछ कर Nice. सकते हैं भाई. नहीं जैक्सन नहीं थैंक यू. नहीं, अरे हमको भाई फिर क्लोज दे आउट दिया वापस, चाहिए. क्या कर रहे हो? गेट बैक इन पोजीशन. Mudrik, यार, come on. This is what frustrates me for Mudrik. Awareness कम है. Luckily by Fofana इस बार अच्छा हेडर मारा, and clearly Joelinton fouling Gusto. Come on Chelsea, come on Chelsea, 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 Chelsea. Time to substitute, take off Gusto, bring on Reece James on right hand side, bring on Kukurea, bring on Nkunku. Nkunku किसके लिए आएगा? नेटो के लिए आ रहा है. नेटो doesn't finish 90 minutes. थोड़ा सा मिस हो गया भाई. वी शुड हैव यूटिलाइज नेटो और मुड्रिक का विंग प्ले ज्यादा विद एंजो बीइंग देयर, बट ठीक है. लेकिन कुकुरिया कमिंग ऑन, वी आर यूजिंग अ स्क्वाड प्रॉपर इस गेम में. प्रॉपर स्क्वाड मैनेजमेंट कर रहा है भाई मरिस्का. आई मस्ट से, ऑल्दो लिटिल बिट लेट सब्स्टिट्यूशंस, दैट आई एग्री. यार like 10 minutes की विंडो में 3 substitution breaks की हैं. Like he could have just made all these changes in one break. I don't know why we're breaking them नहीं, up. मेरे ख्याल से जानबूझ के कर रहा है. रिमेंबर हिज इंटरव्यूज ही मेंशन्ड, बाय द वे, रीस जेम्स इज कमिंग ऑफ and well as, I mean, Reece James is not coming off. Gusto is coming off. Jackson is off. 1 second. Jackson is off. Like for like है. इंटरेस्टिंग. तो भाई हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद है तो बोला था वी नीड टू लर्न टू हाउ टू मैनेज द गेम. तो आई थिंक गेम्स मैनेजमेंट वाला सीन कर रहा है थोड़ा. आई थिंक इज हैप्पी टू टेक इट 2-1, बट इज इट रिस्की? Probably is. The changes we knew we had to make with the first string of changes, he's taken 3 substitutions to make. You can argue कि ठीक है, we are a goal ahead, we are trying to kill the clock. लेकिन I don't know. I think उस लिहाज से देखा जाए तो maybe he should have saved 1 or 2 changes for the final 10 minutes. अभी तो 78 minutes हुए हैं. So we are already made all our changes. We cannot make any more changes. We cannot get any more breaks. Let's see where Isaac goes, विशाल. लेकिन गाइस, तो बेसिकली क्या हुआ है, कुकुरे आ गया लेफ्ट साइड में. Reece James is on the right hand side now. Reece James just about plays the ball to Kukurea यहाँ पर, and we keep a centre back partnership. Obviously Enzo Fernandez had already come on to him, along with Caicedo is in midfield. Palmer Keep the just ball in now. front. Keep the ball. Keep the ball. Keep the ball. Mudrik on Don't the give it left. away. Don't give it Mudrik on the away. left. और Keep the ball. Keep the ball. Calm down. Yes, calm down. That's better. Just don't panic and give the ball away for no reason. तो Neto is still there on the right hand side, और Nkunku up front. Neto and Reece James on the right flank now. Yeah, that'll be interesting combo. Let's see how it goes. Yes, one more change can be made for sure, because Mudrik, Enzo, Mark Kukurea और Christopher Nkunku come on. नहीं, मगर आपने 3 changes कर लिए हैं. You don't have any more changes. 3 stoppages कर लिए हैं for changes. अच्छा, right. Actually, you're right. Yeah, so we don't have. This is why I'm complaining since then. कि he didn't need to do this. एक बच सकती थी कम से कम, if not 2. But again, मतलब, I don't know, Felix might feel unlucky about it. लेकिन the changes might be right, लेकिन the timing is a little off. मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि आपको इस तरह के टाइम वेस्टिंग चेंजेस जो हैं फाइनल 10 मिनट्स में करने होते हैं. इन्होंने पहले कर दिए. Now we have to actually play out with this, whatever the new formation is, so which is fine too. But I would say we should be pushing for a goal now then. Enzo on the ball, doesn't do anything, gives the ball away. Gives the ball away, gives the ball away, gives the ball away, gives the ball away for no reason. Cucurella has to do a recovery now. गंदी वाली फीलिंग आ रही है मिकाइल. बस देख वही मैं आपको कभी कह रहा था कि ये
गड़बड़ लग रही है मुझे थोड़ी सी. Panic stations. We are hitting panic stations and making. Back to panic stations. Newcastle on the ball and we are panic stations. Come on, man. We need blue balloons in Stamford Bridge. And Nkunku on the break, Marley goal. Mudryk has had a bad performance abhi tak, if I'm being very honest. Mudryk has lost the ball far too many times or on his heels raha hai. Game awareness is what I would say. But यहाँ पर again could have done better. Colwill won the ball but then lost the ball. Colwill is following the ball proper press करने की कोशिश कर रहा है but no Newcastle resistance अच्छा लग रहा है. Only for us to get it. Palmer releases. I believe so. Yes. Nkunku Yes, would come on. hopefully Now put Palmer break away. back. Break away. Palmer Come को on, बुलाया है. Nkunku. Come on, Palmer. Nkunku शॉट मार यार. फर्स्ट टाइम शॉट मारना था यार. कम ऑन. लेकिन यहाँ पर मुड्रिक कम ऑन. नहीं यार सेव कर लिया यार पोप ने नियर पोस्ट में. दैट शुड हैव बीन अ गोल बट ठीक है. वी डिड प्रोबब्ली द राइट थिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड हैव बीन डन इवेंचुअली. मे बी एंकुंकू कुड हैव टेकन अ फर्स्ट टाइम शॉट एज वेल बोल सकते हैं. और मुड्रिक शुड हैव गॉन अक्रॉस द गोलकीपर मे बी. रीस जेम्स कॉमेडी था ये काफी सीन. रीस जेम्स ट्राइंग टू पुल डाउन गेट अ फाउल. उसने उसको झटका देके साइड पे कर दिया. चल भाई. Yeah, Mudryk probably could have gone across the goalkeeper. नहीं, it was a good hard shot. It was on target. It's okay. Yeah, it's good. I'll take Well, to be honest, Palmer scored similarly, ना मतलब in that same point. ठीक है मतलब we cannot be. ठीक है, वो हमें पता है. हम used to है. हमारे players waste these chances. तो वो अगर कोई हो जाए तो that's the exception rather than the rule. एंजो और ब्रूनो का आज भाई अच्छा फाइट होता है. I love it bro. I love it. ब्रूनो भाई दिखा दो भाई ब्रूनो गुमारेश को क्या हुआ. एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना ब्राजील. I don't agree is Palmer assist dropped. I don't agree. He did the absolutely right thing. Seeing the replay, Mudryk did absolutely the right thing. That is the only place he could have hit. Slightly to the left of Pope, which is not his natural side. Because there was I think Shar on his right hand side, Mudryk ke, or left side में anyway there was a post. He was kind of leaning back, so he had to get a shot off. So ठीक है, it was off balance almost you can say. ठीक है, हो गया. He on target था. Nice clearance, but क्या हुआ ये? रेफरी ने फाउल दे दिया. ओके गुड. हमको मिला टेंशन नहीं है. जेम्स को बड़ी जोर से मारा है इसने. People are very reactionary with Mudryk. I totally get it. I don't see. हम भी बुलाते हैं Mudryk को. I'm telling Mudryk has had a bad performance for the first 5 minutes when he came on. लेकिन to say that Mudryk की गलती थी, I will not buy that as well. Thank you Budin for backing that. In fact, one can argue Nkunku could have taken a first time shot rather than putting the guy in. Yellow card, time wasting. What? Literally 10 सेकंड नहीं हुए भाई. इतना तो नॉर्मल है. साला सैंचेज और 10 सेकंड लेगा. साला येलो कार्ड दूसरा नहीं मिल जाए. किक कर दे अब. कर दिया किक. चलो वी हैव लॉस्ट द बॉल. सैंचेज किक करता तो हाँ प्लेयर रिटेन नहीं करता. अगली सिफारिश है सैंचेज की. पता नहीं, पनौती तो नहीं बोलूंगा लेकिन लकी खराब है. पीछे बैड लक ही खराब है. बैड लक ही खराब है. पता नहीं यार. वी हैव टू सफर बीइंग चेल्सी. We still need a goal, bhai. I'm pretty sure उनकी 2-3 और chances बढ़ेंगे. We need to kill the game right now, and if we don't, it will cost us. So we need to kill the game. Kukurea, OP man, I like that challenge from Kukurea, bhai. I like it. At least he's made his presence felt. I like that from Kukurea. That we missed in the game actually. सच में बोलो तो. Palmer सोया हुआ है. Come on, wake up. Nice, Reece James OP, nice header. Of course, उनको throw in मिला Newcastle को, but important header. Joelinton was in behind. They are missing Gordon, to be fair. Joelinton and Reece James का काफी physical जा रहा है duel. Yes. 2 lost cousins. अरे यार फिर दे दिया बॉल. फफाना वापस से गिर गया यार. क्या हो रहा है फफाना के साथ? फफाना गिरता है ना, it's like you really think because आप देखो his knee is strapped and everything, bro. The guy is not normal. We know it. Penalty to West Ham meanwhile, for people who are interested. Right now, the last 5 minutes of this game, honestly, I'm only interested in Chelsea getting 3 points
5 तो नहीं है ना अभी, मैं 5-7 मिनट है, इंजरी टाइम देगा वो. We have long way to go still. नाइस काइसेडो, मोजेस काइसेडो, नेटो क्या करेगा नेटो? वो हेवी टच यार, थर्ड टच पेनल्टी ले. अरे यार, should have shot bro, should have shot. ओए कुकुरेया ज्यादा प्रेस मत कर इतना भी. You need your position. Livramento against Colville, interesting to Cobham boys. कुकुरेया come back to position. हाँ वही रहना अब. We need ETH man. Yes, ETH in. By Man United goal होना चाहिए equalizer. Please ETH in bro. ETH for life bro. Come on. Ten Hag for life man. We need Ten Hag to be the Manchester United manager. At least till the end of the season. Go Ten Hag, go. Ten Hag for life. Yes, this is the slogan. हर Blues fan के मुंह पे एक ही नारा है. बट सीरियसली बंदा इंस्पिरेशनल भी है, मतलब कॉन्फिडेंस अगर कोई लैक कर रहा है ना, जस्ट पर्सनालिटी, इतना करिश्मा, ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट ब्रो. टेन हाग इज ऊपर से he brings football heritage with him. Oh yes, he's won so many trophies after all, right? Yep. यार बॉल हमने फिर दे दिया उनको. Oh नाइस एंजो फर्नांडिस ब्रो. एनकुंकू शॉट ले यार कोई, यार शॉट क्यों नहीं लेते हो यार पहले. नाइस, लेकिन गिव द बॉल अवे इजी फॉर पोप. व्हाई इजंट एनकुंकू टेकिंग शॉट्स? ही इज द ओनली गाय हु टेक्स नेचुरली शॉट्स ब्रो. हो क्या रहा है, बीमारी लग गई है उसको भी. शुड ही हैव पास्ड और टेकन अ शॉट, वन ऑफ द टू. दोनों नहीं किया. आई एग्री पुदन. यहाँ पर येलो कार्ड मिला है नेटो को. नेटो अगर तो फाउल करें तो येलो कार्ड, अगले फाउल करें तो कोई येलो कार्ड नहीं. पता नहीं, was it selfish for Nkunku? Will you say it's selfish? यार वो जब आप the minute you start overthinking ना, तो वो selfish तो पता नहीं, लेकिन the moment he was indecisive. Exactly. I thought he was indecisive. वो moment passed and then he didn't know what to do. तो उस वक्त he should have passed the ball to somebody else, and वो भी नहीं किया. बॉल को शॉट भी ली और फिर जाया की. Hit the first man. Lewis Hall with a dangerous ball into the top of the box. Newcastle. Oh my God, Reece James just about seized out. West Ham scores again. Fofana. चलो भाई 2-1 हो गया. पेनल्टी स्कोर्ड इन द 98th मिनट. और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ETH इज लूजिंग एज थिंग्स स्टैंड. फर्गी टाइम की जरूरत इट सीम्स वहां पर, लेकिन यहाँ पर ला रहे लास्ट कपल ऑफ चेंजेस न्यूकासल के लिए भी आ रहे. अभी मर्फी आ रहा है, बिलीव एक बंदा, पता नहीं कौन है, लंबा है बस, मुझे इतना नजर आ रहा है. Murphy has done well against us in the past, by the way. He's actually scored a couple of goals, I'm pretty sure. टिंटन का फोटोकॉपी आ रहा है एक और. Tintin, yes, correct. Tintin याद आ गया. Should keep the ball on, so time wasting. कोई नहीं. Blues, we need a goal. We need a goal. यहाँ पे we need a goal. अर्षद भाई कहाँ से आएगा गोल? Hall came off, surprising, huh? Hall एक set piece taker है. I'm very surprised by that. Hall is a very good set piece taker. It was a good game by Hall today. You have to say. Wow, through pass में Palmer brilliant. Nkunku कुछ करना है इस बार. Nkunku cutback या penalty होना चाहिए. Come on, penalty होना चाहिए भाई. Yes. Chelsea. Come on, Chelsea. Surely penalty है. येलो कार्ड भी दे दिया Longstaff को for complaining. Ankit bhai called it first. Nice. Palmer bro, again he's not had the best game, but he's had some wow moments. Look at that world class touch by Palmer through ball. Wow, what a touch. Burn. Nkunku knows how to win a penalty. कहीं ना कहीं अपना इस सीजन का रहीम स्टर्लिंग है. He dived bro, I have to be very honest. He sold it. But well sold. He dived, man. मैं बोला directly dive है. We are lucky, huh? I'll be honest. Well लेकिन will he overturn? He can overturn. Penalty शायद overturn होगा. कुछ ज्यादा ही dive है भाई. Nkunku dive bro. Can he overturn? Touch तो हुआ है तो can he overturn? Contact, there was contact. Exactly. But the question is, are they going to freeze frame it and show it to the referee in the screen? Because it's Chelsea. Exactly. Because it's Chelsea. But I think
Originally shouldn't have been a penalty if I'm being very honest. लेकिन letter of law it should be a penalty because on field referee ने दिया है और अच्छा जी, वो contact रेफरी को वो वीआर को दिखा रहे हैं इन द थिंग, दे आर सेइंग कि नहीं देंगे हम ये, वी विल नॉट गिव दिस, वो ही इज शेकिंग हिज हेड. come on bro, come on यार. You know the Surely script. You know the script. चेल्सी भाई, चेल्सी, वो वीआर, रेफरी एसोसिएशन, प्रीमियर ओवरटर्न लीग. होगा. देखो, टू बी फेयर टू फुटबॉल जनरली इट इज नॉट अ पेनल्टी, लेकिन ये चीज ये भी पता, अगर विद ऑल डू रिस्पेक्ट एंड आई डोंट टेक नेम्स, वी नो XYZ क्लब्स के लिए होता तो ओवरटर्न शायद जी नहीं होता. जी, ये अगर ये दूसरी न्यूकासल कर रही होती, दे वुड हैव गॉटन द पेनल्टी, फॉरगेट अबाउट अदर क्लब्स. Yeah. Surely there was a check, bro. There was a check. Dan Burn definitely checked on Nkunku. Checked him, and the thing is that was the last man type of moment, and I think it's a penalty. ठीक है, you can say it's a soft penalty, but it's a penalty. No penalty. भाई ये प्रश्न बोल रहे प्रेडिक्ट करने के लिए, who can predict, man, let me know. Big ups to them, लेकिन चलो no penalty है. Thank you Prasan even for saying that, but ठीक है, हमें you come and support us. We're not claiming to be the best predictors, but definitely you can always support us by various means. Thank you. And all the best for the game. Palmer is not happy. उन लोगों को स्क्रीन में स्टैमफोर्ड ब्रिज में है ना अपनी स्क्रीन दिखती होगी ना, they would have seen it. Maybe. फ्लैग के पास एक है, they have kept a screen, I remember. मगर वो they pick and choose what they're gonna show. सब कुछ नहीं दिखाते. प्रणव, by the way, स्पॉइलर नहीं देना मेरे भाई, नो स्पॉइलर. नो स्पॉइलर, नो स्पॉयलर्स. हमारे भी अभी 4 मिनट और ऐड करेगा रेफरी, नाउ दैट 2 मिनट चले गए इन द पेनल्टी सिचुएशन, तो 8 मिनट्स होंगे यहाँ पर भी. 98 99 मिनट्स में जाएगी गेम. अभी क्या स्कोर है मेरे भाई? प्रश्न ने बोला अभी क्या स्कोर है. टू बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग द 2 EPL मैचेस हियर अलोंग विद फॉलोइंग द चैट. यहाँ पर फ्री किक अपने को मिला है ना? मिला तो अपने को ही है, लेकिन गोल चाहिए भाई, गोल मांगता है, सुकून चाहिए थोड़ा सा. आई वांट us to kill the game. Neto gives the ball away. लो जी, Neto gives the ball away. We win the ball back and give it away right away. यार क्या मतलब? What nonsense was this? 1-1 है. अच्छा, अभी वहां पर उतना वही रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम, and then probably we win it on penalties, is what I'm saying. What is that? A free kick? Come on bro, come on. Nkunku के अगेंस्ट फ्री किक दिया गया. होपफुली पेनल्टीज पे जीतेंगे प्रसन्न अपन, लेकिन Enzo Maresca has lost it. Enzo Maresca has lost it, and I can agree why he's doing that. एजेंडा नजर आ रहा है ना उसको, समझ आ रही है अब कि this is how refereeing is done against Chelsea. क्या ही बोले यार, क्या ही बोले. वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे कमबैक न्यूकासल. They're trying their best, they're trying their best. Yep. पता नहीं आपने मेरी पोस्ट देखी थी, वो मैन सिटी वाला पोस्ट तो हर एक गेम के बाद दे रहे. 35 गेम जीते हैं वो, अपने से कंपेयर करे 85 गेम्स वाला रिकॉर्ड. प्रीमियर लीग मैन, इफ आई स्पीक आई हैव बीन ट्रबल, बट दैट्स अ फैक्ट मैन. इट्स बिट टू मच ब्रो. मरेस्का गेट्स अ येलो कार्ड. अब जाहिर भी नहीं करे जो लगता है कुछ भी, मतलब नाइसली डन यहाँ पर काइसेडो द्वारा, बट दे गेट अ थ्रो इन. न्यूकासल luckily Neto did not allow a early throw in. Good awareness by Neto. यार रेसलिंग कर रहा है वहां पे वो उसके साथ, Nkunku के साथ, and वो the referee is not giving anything. Well, nice. Nkunku definitely wins the ball. Nkunku गोल आना चाहिए. Come on Nkunku, come on, do a Batshuayi against Manchester United moment. नहीं, ज्यादा हेवी हो गया. पास टू Enzo Fernandez on the right hand side. ऑफसाइड था क्या हो गया? ऑफसाइड. Come on man, लास्ट मिनट है, बट प्रीटी श्योर 2 और मिनट ऐड करेगा रेफरी एटलीस्ट.
Referee, man. Oof, frustration. Difficult watch, bro. This is a difficult watch being a Chelsea fan, but this is something that we have been seeing for so many years now. Foul दिया गया वापस से. Wow, I can't believe it. But ठीक है. They are winning headers, man. Every header they are winning, man. चलो nicely done. यहाँ पर finally Mudryk was it winning the header. अब यहाँ पर ना Mudryk एक बंदे को फ्री रहना चाहिए. I think Mudryk should be a free guy, not Nkunku. I don't know if you agree, guys. Mudryk को we have left Nkunku up top. I think right now Mudryk should be the guy up top. क्योंकि Nkunku has physicality defensively और Mudryk basically has that pace to hit on the counter. मैं ये करता in on such situations, but ठीक है. हो गया क्या गेम? नहीं साला फुल टाइम कर दो यार विसल. पुदिन बोल रहे रेफरी ट्राइंग फॉर न्यूकासल. 97 मिनट चल रहा है भाई, और कितना दोगे? रीस जेम्स थ्रो नहीं. कम ऑन, व्हाई आर वी गिविंग अवे बॉल्स लाइक दैट? श्योरली बैन नेटो शुड हैव डन बेटर. बहुत ही नर्वस मोमेंट्स. एक और चांस आ रहा है न्यूकासल का डेफिनेटली. प्रीटी श्योर 1.5 मिनट और बाकी है. हैंडबॉल हुआ, रेफरी दिया नहीं. हैंडबॉल है भाई. मिडफील्ड में था. हैंडबॉल यार, रेफरी इडियट, ब्लडी एसोल. गाली निकलेगी रेफरी के लिए अभी साले. पामर ने क्लियर कर दिया है. कहता नहीं दूंगा. स्क्रिप्ट में नहीं है. हैंडबॉल, व्हाट रबिश वाज दैट ब्रो? कहता स्क्रिप्ट में नहीं लिखा. अब ये देखो ना, बैड हेडर बाय फुफाना. ओ गुड क्लियरेंस बाय गुस्टो था. जेम्स था प्रॉब्लम. काइसेडो था. अच्छा जी. पामर हैज सीन द बॉल आउट, लेकिन थ्रो इन मिला है न्यूकासल को डेंजरस एरिया में. पिच के 98 मिनट चलने वाला है और रेफरी को भूल गया कि टाइमर भी है भाई, गेम खत्म करनी होती है. और भाई गोल आया. बच गए. रीस जेम्स ओपी हो जा भाई, तीसरी बार. रीस जेम्स is finished, right? The third fucking time, man, he has bloody saved our ass. What an interception, what a header from Reece James, and what again we were beaten on the right hand side. I don't know what's happening. बहुत क्रिटिकल कॉर्नर आया भाई, बहुत क्रिटिकल मैच एंडिंग कॉर्नर आई है. Pope is up. Not even Pope is up. That's the situation. Oh my god. Mudryk against Longstaff. I think it's a mismatch. It's a mismatch, bro. What is happening? पता नहीं, गंदी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर. Again near post. It was Nkunku. Reece James with a follow. Come on! It is 3 points, man. Come on, man. Get in. We are there, man. हम मरे नहीं है. We are there. Chelsea. 3 points. Newcastle वालों, referee. 3 points. भाई बोलती बंद कर रेफरी, man. Trying his bloody best, but Chelsea we are back at 3 points. Chelsea has defeated Newcastle, the referee, the assistant referee, the VAR, the Premier League. Wow, that was basically a difficult win, and I think kahin na kahin we need to applaud the efforts of the players, man. Definitely, I think it was big result. Very important. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टर से ज्यादा आई थिंक इट्स अ क्लियर केस ऑफ अगर यहाँ लूज करते ना, मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन आई वुड हैव सेड कि यार दीस काइंड ऑफ गेम्स इफ यू आर नॉट विनिंग वी आर नॉट गेटिंग दैट फोर्थ पोजीशन. बट आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर आर सो कॉल्ड कंपीटिटर्स ड्रॉपिंग पॉइंट्स एज थिंग्स स्टैंड. एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है, लास्ट मिनट चल रहा है. वेस्ट हैम यूनाइटेड इज 2-1. वेस्ट हैम इज विनिंग दैट गेम गाइज. आई बिलीव पैलेस बीट कर लिया टॉटनहम को. Of course, already Aston Villa dropped kiye points as well as Brighton. Imagine if Arsenal versus Liverpool becomes a draw. Mikhail, sapne mein dikhai ki you think it can be even better than fourth. I'm just saying it can be better than fourth. I'm just saying because agar aaj kuch hota hai na, wow. We can almost say I want a draw between Liverpool and Arsenal. I was saying that Arsenal हारती है, it is not too bad for us either. लेकिन now I want a draw क्योंकि against Liverpool ऐसे नहीं था कि we were outplayed last week. So you just never know. You just never know. I don't know. Am I speaking too much? We did what we needed to do. That's the most important part. Let's see how the rest of the results go this weekend. But big win.
traditionally Newcastle can be a hard team to get points against. Like, and I think in the recent matchups, we have started to restore the balance in our favor by starting to get results against Newcastle. Big 3 points at the bridge. That's also an important storyline. Ke bridge where we have started to win points again. We have been kind of playing under pressure in the previous few seasons and at the bridge. So it's a good game. I would have wanted to see at least one more goal and us kill the game. End तक finger biting, nail biting game थी. But overall, I think we saw lots of good performances. भाई मेरी तरफ से तो hats off to Reece James. What a strong and critical performance today. Critical performance. भाई and we kind of had a I remember in I think pre-match में भी हमने बात किया था मैकाल और मैंने I think chat में भी कुछ लोग थे जब we were discussing at half time that between Gusto and James probably who's the guy that we should probably take a risk and keep on, and the fact that we opted to kind of keep James on the pitch I think was a big call. It was definitely a big call. And it paid off because he was huge, and talking about leadership at the back, that's leadership at the back. I mean, he was everywhere at moments. They were like goal line clearances. I think he had multiple goal line clearances this game. So that just tells you what kind of back line and what kind of organization we had. Where ek mein to, I think even he was not involved, but Sanchez repeatedly was out of position, caught in no man's land for a Fofana mistake. Blushes were saved by I think it was Colville and combination and Caicedo combination. Otherwise, open goal tha. So Isaac could have had just rolled the ball into the back of the net, but somehow he kind of overthunk it. I think on the ball with 2 minute ke liye, he just kind of stayed. That was enough for us to get bodies in behind. But generally speaking, I think defensively, Reece James both on the left and right flank had impact. So for defensive player of the game for me is Reece James today, no questions. I think everybody else also kind of did what they needed to do. For Fana, big shout out to him. With the injury early on in the game, he powered through the game and finished the game. But Ankit bhai, who is your player of the match today? Pedro Neto, standout. मतलब आज तो कोई डाउट भी नहीं है. While Palmer had some brilliant moments, typical Cole Palmer moments, and Reece James जैसे आपने बोला बहुत अच्छे से that he hardly kind of has played full matches. In fact, कब last 90 minutes खेला था मुझे याद दिला तो मुझे याद भी नहीं है. But you have to give it to, of course, and the way that he blocked. But I think Neto was by far the standout. Pretty sure सब लोग agree करेंगे more or less. 100% मैं बोलूँगा Neto. वो अलग बात है कि one has to थोड़ा बहुत feel for Jackson, क्योंकि Jackson I think in the last half an hour जब तो pitch में था I think was kind of isolated, क्योंकि I remember the offside goal of Palmer. वो कहीं ना कहीं वो जो through pass डाला था बहुत ही अच्छा था. जैक्सन के टर्न्स एंड ऑफ कोर्स हिज मोमेंट जहां पर उसने स्कोर किया है again, but Neto provided it. I have to give it to Neto for sure. But one can argue that Reece James probably is very, very close in my opinion, because I think defensively we were shit for major parts, but when it mattered, he stood up for sure. I think yes, 100%. Sorry. I think offensively, Neto set the tone of the game, and I think defensively, you could say, especially towards the second half and end of the game, Reece James was setting the tone of the game. No nonsense defending हो रही थी, and he was running up into the midfield as well. And मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई. अच्छा ये कुछ और बता रहे हैं. But huge performances by even Palmer, even though he was not necessarily over involved in the game and didn't really have a best game, but he had some critical touches in the game, critical moments mein, and you could argue maybe a little bit unlucky today not to get more from the game personally for himself. But I think as from a team perspective, in the moments that he was on the ball where it mattered, I think he was able to do the right things and create the right chances for the rest of the guys around him. So huge. अभी तक मैंने second goal नहीं देखा, so I don't know कि उसका जो winning goal था basically वो, I think that's his winning goal. We cannot take that away. He was the difference maker despite not having a great game.
By the way, Colwell could be shouted as a good point because when Palmer scored that goal, kahin na kahin, you can say that Colwell probably had an important part in winning that ball. Lavia also, yes, Lavia का hot and cold game था, if I'm being very honest. He was very good. Ironically, yellow card लेने के बाद में, but again, जैसे मिकाइल ने पहले भी बोला था, I think it's too early to kind of judge Lavia really because back-to-back games बहुत कम खेला है, so I think we'll give him that. Again, Enzo Fernandez, maybe he was on the bench and came on because maybe he had a hand injury for all we know. लग रहा था ऐसे. Mudryk, I must say he could be better after coming on क्योंकि Mudryk का as an impact player मैं ज़्यादा देखता हूँ उसका in the Premier League. आज नहीं लगा वो impact if I'm being very honest. But defensively, there were moments जहाँ पर in the end I think it was important. Nkunku again, one can argue he should have had a penalty, but come on, like I think in the end probably इतना भी regret नहीं करो, ठीक है, मतलब referee probably made the right call in terms of football. Enzo Maresca, I beg you, please don't ask players to stop scoring the second half. To be honest, second half में Enzo Maresca needs a lot of credit because again, us scoring in the second half early is a clear indication that there has been something been told जहाँ their chips are high, and that doesn't happen every day. That used to not happen hardly last season में. तो ये देना पड़ेगा Enzo Maresca का for sure. लेकिन meanwhile, West Ham have beaten Manchester United, and obviously all the Janta have gone there to watch Manchester United channels because they like people crying out when they lose. I've been there, so tension नहीं लेने का. लेकिन West Ham against Manchester United, पता नहीं, मैंने बॉल मैच नहीं देखा है. I will be watching it highlights and trying to break it down in the review video in the morning along with Arsenal Liverpool guys. लेकिन यहाँ पर देखो वेस्ट हैम का XG भी ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हु हैड मोर पोजीशन. Casemiro being the man of the match abhi at this age right now, with all due respect to him, is a clear indication that Manchester United do not have enough creativity in their team. और एरिक टेन हाग बॉल समझ नहीं रहे, जो खुद ही समझ रहा है, बाकी कोई नहीं समझ रहा. बट एरिक टेन हाग इन गाइस, कम ऑन. ऐसा नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आउट ऑफ टेन हाग फॉर लाइफ. यस यस भाई, टॉप 15 में है भाई, टॉप 15 में है तो doesn't get a sack. क्या बोलते हैं? All time top 15. Maresca should realize that Sanchez to be honest entertainment नहीं देता ना Sanchez, तो आज ना स्ट्रेस में अलग ही लेवल पे चल जाते हैं आप लोग. तो sometimes that entertainment factor is important for the balance. We can only say that कहीं ना कहीं वो laughter therapy का चीज कर रहा हूँ मैं अभी, if you know what I mean. एक और चीज है जैक्सन सब ऑलवेज. आई थिंक एंकुंकू, ये भी पूछ सकते हैं ना गौरव, व्हाई डू वी नॉट स्टार्ट एंकुंकू ऑलवेज? एंकुंकू, टू बी फेयर टू हिम, आई थिंक इट्स अनफेयर प्लेइंग ओनली 20 मिनट्स ऑफ एवरी गेम ऑफ एंकुंकू इन द प्रीमियर लीग. लेकिन ऑन द अदर हैंड वी नीड टू एडमिट कि इफ जैक्सन इज गोइंग टू बी अ नंबर 1 स्ट्राइकर एंड वी आर प्लेइंग मिडवीक्स में जहां पर हम न्यूकासल के साथ वापस से खेलने वाले इन द कप, रिमेंबर, तो वी नीड टू हैव देम फ्रेश इफ वी नो दैट क्लियरली ही इज अ स्टार्टर. अगर क्लियर नहीं तो आई एग्री योर पॉइंट. But otherwise, I think it's a no-brainer that Madueke, Jackson, थके हुए लग रहे थे Mikhail in the second half, or was it I don't know, just tactical? You think? I think Jackson, I think a bit both. I think it was a physical game against the Newcastle midfield and defense. I think changes वैसे due थे tactically. So I think वो जिस तरह किए वो थोड़ी सी डिबेट कर रहा था मैं भी उस वक्त कि is this the best way to do the changes, but it worked out in the end. I think that everybody knew कि it's not that we're playing bad, it's just कि bring on some fresh legs and change up the formation, maybe bring Reece James to the right and let's see what happens. Maybe we can get another goal out of it. So वो goal जब आया तो वो it came from a very innocuous kind of turnover in possession in midfield, and Palmer did what Palmer does. Turns some nothing into something, or half chance into something. But other than that, ये था कि generally I think the changes were merited. The changes needed to be made in the sense that we have the bench to make those changes. You could argue that some players will be upset or not happy that they did not get a chance. Lekin I think based on how the game was going, the changes that we thought should have been made were made. So I think overall game management was okay. I'm not going to say that it was perfect, lekin it was okay. It was good. Fair point. Again, Tahir Bhai, OP in the at the bridge है, तो big ups to Tahir Bhai from Almighty Blues. लेकिन guys, I believe so. अभी के लिए इतना ही है. I'll probably take some rest and sit back and watch
what is happening at I don't know, Old Trafford में मैच नहीं था, लेकिन Old Trafford में कुछ कांड होगा in the weekend. Let's see. But even Arsenal Liverpool भी है. I believe we've had a long day as well. लेकिन in the morning, obviously, we will try and release एक review video based on whatever happens on the next match और जो हुआ है इस match and parallelly West Ham Manchester United का. I'll try and break it down. सब लोग in the chat जो भी है, big up to each and everyone. यहाँ देख रहा हूँ शुभ्रांक in the house, Gaurav, Yonko, Evolution Gaming Lux, of course, Pranav, B234567. I like your name, by the way. Prabhav, Devesh, bhai, congratulations for Manchester United. Devesh, nice of you to come here. Even then, you might be in a bad mood right now. Amman in the house as well. Who else is there? Bhai, जो भी लोग है, Sushant, सब लोग, जो भी लोग है, do not forget to hit that like and subscribe if you're new to the channel. Mikhail, hope you in the chat हो जाए. लेकिन we'll be there no matter what. Up the Chelsea, no matter what. Carefree wherever you be. We are the famous CFC. Newcastle bring it on again in the cup, but big games and league coming up, guys. Peace.